Recording in progress. Very good afternoon to one and all. We'll be beginning shortly. Hello. Very good morning, all of you. Thank you for being over here. Good afternoon, everybody. I request all of you to please switch off your mobile phones as this conference will be recorded. It will be a hindrance if any mobile phone rings. Thank you.
Faculty members at the back, I request you to come forward, please. Thank you. Good afternoon, everybody. I request all of you to please switch off your mobile phones as this conference will be recorded. It will be a hindrance if any mobile phone rings. Thank you.
Yeah. Honorable Dr. Gajanan Dangiji, Convener National Conference, Dr. Bhagwati Prakash Sharma, our keynote speaker, Dr. Vinay Sahasrabuddhe, our chief guest who will be joining us online, Dr. Nagesh Bhandari and Dr. Ritu Bhandari, Presidential Secretariat, Indus University, Dr. Sandeep Chakravarti, Executive President, Indus University, Dr. Ritendra Sharma, Director, Center of Indic Studies, eminent speakers from all over India, distinguished guests from academics and industry, esteemed faculty members and staff of Indus University, and media representatives. Namaste and a warm welcome. It is my great pleasure to welcome you all to the National Conference, Acharanam, Indic Wisdom for Sustainable Lifestyle, spread over 2 days on the most revered ecological concept of India, Acharanam, organized by Indus University in collaboration with LIFE, a working group of C20, Civil Society 20, dedicated to the exploration of lifestyle practices for environment. C20 India 2023 is one of the official engagement groups of G20 that provides a platform for civil society organizations, CSO, around the world to voice the people's aspirations to the world leaders in G20. Acharanam is the cultivation of daily practices that emanates from profound wisdom that has shaped the Indian minds towards nature and ecology. Indians always revere and have the highest regard for those who are the embodiment of these profound values and address them as Acharya, one who embodies and manifests sublime teachings. This conference, spread over 2 days, 27th and 28th May, will witness 5 sessions where eminent speakers from all across India will be presenting their views and insights on how Indian society has incorporated various sublime teachings from scriptures in their daily lives. We now move on to the next part of the program, which is lighting of the lamp. We pray today that light may dispel darkness of ignorance from our lives and lead us to right thoughts and right actions. I call upon our dignitaries, Dr. Gajanan Dangiji, Dr. Bhagwati Prakash Sharma, Dr. Nagesh Bhandari, Dr. Ritu Bhandari, Dr. Sandeep Chakravarti, and Dr. Ritendra Sharma for lighting the lamp. We shall also have the Saraswati Vandana, a prayer for Goddess Saraswati, who is an embodiment of wisdom, learning, and knowledge. I request all to please rise.
Thank you. Please take your seat. We have with us our chief guest, Dr. Vinay Sahasrabudhe. He has graciously accepted our invitation at a very short notice, and we are very much thankful to him. He'll be delivering the welcome address online, and a brief introduction of him. Dr. Vinay Sahasrabudhe is the President, Indian Council for Cultural Relations, ICCR, and Chairman, Parliamentary Standing Committee on Education, Women, Children, and Youth and Sports. He is a nationalist social worker at heart, a researcher come student of political science, and a trainer in democracy by profession, and a parliamentarian too. Dr. Sahasrabudhe is a postgraduate in English literature and a PhD in political science, both from University of Mumbai. Since January 2018, Dr. Sahasrabudhe has been the president of Indian Council for Cultural Relations. As a member of Parliament, Rajya Sabha, Dr. Sahasrabudhe represents the state of Maharashtra since July 2016. During 2014 to 2020, Dr. Sahasrabudhe was the National Vice President of Bharatiya Janata Party, India's principal ruling party. Besides, Dr. Sahasrabudhe is the founding Director General and Vice President of Rambhau Malghi Prabodhini, RMP, a unique institution for honing leadership skills through training and orientation. In the past, Dr. Sahasrabudhe has worked on the Management Council of the University of Mumbai. Between 2012 and 15, he was also the Vice President of Asiatic Society of Mumbai. Dr. Sahasrabudhe has authored and edited over half a dozen books in Marathi and English, a couple of which have received distinguished awards. I request him to address the gathering. Sir. Some technical glitch? Okay. Oh. Okay. Sir would be joining us shortly. We move on to the next program. Indus University extends a warm welcome to all the dignitaries and all the speakers of this conference. As a symbol of our respect, we would like to welcome our speakers with Tulsi Mala. To do the honors, I call upon Dr. Kaushal Jani, CSE IITE, to offer Tulsi Mala to the following dignitaries, please. Dr. Gajanan Dangeji. Dr. Bhagwati Prakash Sharma ji.
Dr. Kattesh V. Kattiji. Thank you, Kaushal sir. Now I call upon Dr. Rashmi Sharma to welcome Ms. Dipali Patwatkarji, and Dr. Sunita Pandey. Thank you, Rashmi ma'am. Now I call upon Professor Rohit Kumar from IDS to welcome Dr. P. Kanaga Sabhapatiji, Professor Satish Diodhar, Shri Ashutosh Jani, and Shri Lakshman Singh Ji. Thank you, Rohit sir. I call upon Professor Sanjay Kumar Ji to do the honors for the following dignitaries. Shri Prithvi Singh Ji, Shri Rahul Deshpande Ji, Gopal Bhai sir is not there. Okay, yeah, we'll wait. Dr. Hitesh Jani sir is also not there. Okay, thank you. I invite Dr. Richa Varma from IIMS to welcome Dr. Deepa Durai Swami with the Tulsi Mala. Thank you, Richa ma'am. I invite Professor Parimal Trivedi ji from IICT to welcome Dr. T.S. Shanmukh Sivacharya ji. Professor Rajneesh Kumar Mishra ji. Dr. R. Rangan ji. Shri Aravindan Neelakandan ji. And Professor Chaitanya Giri ji. Thank you, Parimal sir, and thank you to all the speakers and dignitaries. Sir, should we wait? We'll wait. I think Vinay Sahasrabuddhe sir will be joining us online. Vinay sir, namaste, good afternoon. Namaskar. Namaskar, sir. Sir, we welcome you to this national conference and we would like you to address our gathering, please. Should I be speaking in English or in Hindi? Sir, koi bhi bhasha chalegi. So thank you very much. Basically, people who are associated with the Center for Indic Studies and the C20, which is the important engagement group under the G20, and all those who have taken pains in making this particular event a success. My pranams to all of you. Basically, as we are here just about few days away from the International Environment Day,
I believe it is very pertinent to discuss about how do we take ahead the theme of lifestyle for environment, mooted very emphatically by a person no less than our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji. And therefore, the subject of this particular session, which is Acharanam, Indic wisdom for sustainable lifestyle, is of great importance, very timely, and I believe if we really are able to churn out ideas, then we can certainly come out with some kind of a code of day-to-day conduct insofar as taking care of our environment is concerned. As it happens in our country, or for that matter, under any democratic setup, things about which there is near total agreement are considered as almost done. But unfortunately, things about which there is near total agreement do not get implemented, and it remains just at the level of a lip service. And therefore, Acharanam, as the title suggests, all our concerns about environment and ecology require to be reflected in our day-to-day conduct of our individual, our family, and our social life. Because if we do not do that, not only will we be considered as hypocrites, but we will be doing a very serious harm to the cause of environment and ecology. Because as they say, every generation shoulders the responsibility of passing on a better earth in the hands of the new generation. I am afraid the current generation perhaps is likely to fail in this. And therefore, every individual requires to go back to what was told to us by our scriptures and by philosophical and political leaders as well, like, for example, Mahatma Gandhi. Gandhi ji has given us several ideas about how we can really translate our concern about degradation of environment into reality. It starts with re-looking at the surroundings in which we are and taking care of not only flora, fauna, but also birds and animals and everybody who is a living creature on this earth. In fact, that is what our scriptures, our traditions have also told us. In our country, I come from Maharashtra, and in many Marathi villages, even today there is a system where people, especially the head of the family, before taking his afternoon food, he goes out of his home and looks for people or birds or animals who might be hungry, keep a portion of his food right outside the door of his home, and then comes back and then consumes his food. So this has been a part of our lifestyle. We have been always very concerned and conscious about this onerous responsibility, and our not only our scriptures, but as I said, our day-to-day protocols also have been hinting at that this is our responsibility and we cannot just shirk this responsibility. I would urge that this Acharanam brainstorming kind of should come out at the end of the day, some kind of a set of guidelines for our personal conduct, our family conduct, and our societal conduct as well. Now, when we discuss such things, very bright and brilliant ideas come to the fore, and we get tempted by them, and we try to incorporate them in such a list of do's and don'ts. But it is very difficult to, truly speaking, observe them, basically because of our ideas of status and our idea of being respected in the society. Unfortunately, most of us have become comfort loving and status conscious, as what they say. And
although Mahatma Gandhi told us about Shrama Pratishtha and dignity of labor, and he also told us about simple living and high thinking, unfortunately, exactly the reverse is happening. We are into high level of living and simple level of thinking. And therefore, let us come out of this out of this particular allurement that all these status and comfort related things provide, and ask us to kind of get entrapped into them. If we do that, and if we keep all these things in mind, then the first thing what perhaps every individual can certainly look into is whether I do need what I believe I need. Limiting the needs, although it goes against, as many people argue, and rightly so, against the market economy. But we are not living here only for the sake of market. Atalji had once very famously said that we look at the entire globe as, entire world as our family, Vasudhaiva Kutumbaka. Post-globalization, there was a discussion, and people even now refer to the fact that the entire world has become one market, which is true. But we are not just consumers, sellers, and commodities that have been given birth by the market transactions. We are human beings, and relationship is extremely critical over here. And when we talk about relationship, it is not just between two human beings, but between humans and other living creatures on this earth. And therefore, keeping this in mind, I believe it is very, very required that we search the turn the searchlight inward, try to introspect, and try to adopt those very practicable kind of things which we really can implement. Nowadays, for example, as it happens, use of our cell phones, it's something which has become a part of our day-to-day conduct of life. We just cannot imagine life without a cell phone, granted. But how much time should we be giving for visiting the social media sites, or scanning through whatever that comes to us through the cell phone, whether it is email or SMS or any WhatsApp entry kind of? This is something which is for all of us to decide. We should be consuming social media. There is nothing wrong about it. But like any other consumption, here also, I think our vivek, our balanced approach comes into the play. We cannot reject anything in its entirety, but it doesn't mean that we have to embrace it in totality, and we have to, and we should be allowing that particular thing, instead of we consuming it, that thing consuming us. This is the very ironical situation in which we find ourselves. And therefore, my humble suggestion would be that the deliberation should come out with very practicable kind of set of do's and don'ts, which will be very easy for everybody to implement, to practice, and people will not be unnecessarily becoming or taking a Hippocratic kind of approach, saying all the lofty things and implementing precious little. I believe if we are successful even in allowing the emergence, even in facilitating the emergence of such code of conduct, that would be a great service not only to the cause of environment and ecology, but to the entire humanity. We have to rekindle the confidence that we can do this, we can limit our needs, limit our wants, and truly live a sustainable life for the entire benefit of humanity. Thank you very much. Thank you, Dr. Sahasrabuddhe sir, for joining us and for your insights on this, on Acharanam. Thank you very much, sir. Thank you. Dhanyavad. Namaskar. Dhanyavad, sir. Namaskar. Now I request Dr. Gajanan Dangeji, Dr. Bhagwati Prakash Sharma ji, Dr. Nagesh Bhandari, Dr. Ritu Bhandari, Dr. Sandeep Chakravarti, and Dr. Ritendra Sharma to join us on the dais, please. Recording stop.
Thank you very much. We have with us on the dais Dr. Gajanan Dangeji, President, Yojuk Center for Research and Strategic Planning for Sustainable Development, India Coordinator, Life Working Group C20 India. We welcome you, sir. We also have with us Dr. Bhagwati Prakash Sharma ji, who is the Chairman of UNESCO MGIEP and a member of the High-Powered Committee of Ministry of Education. Thank you for joining us, sir. We also have Dr. Nagesh Bhandari, Presidential Secretariat of Indus University, who is a famous orthopedic surgeon having spine surgery fellowship from Germany. Dr. Bhandari has also contributed to the field of research at national and international levels. Thank you, sir. We have with us Dr. Ritu Bhandari, who holds a prominent position as an esteemed member of the Presidential Secretariat at Indus University. She is our mentor and guide. We welcome you, ma'am. We also have with us Dr. Sandeep Chakravarti, Executive President, Indus University, who is a PhD in Power System, ME Software Engineering from Birla Institute of Technology, and gold medalist in BE Electrical and Electronics Engineering. Thank you, sir. We have with us Dr. Ritendra Sharma. He is the director. He is the director at Center of Indic Studies in Indus University, where he has set up various channels for the dissemination of Indic ideas. He has designed and taught courses on Indian knowledge systems, Indian language systems, and Indian philosophy. Dr. Sharma has a doctorate in the field of linguistics and has worked on language semantics. He is also a double postgraduate in management and literature. Since 2004, Dr. Sharma has been engaged in working with various facets of Indic issues and studies. He is also the curator of Dharma versus Religion project. Apart from this, he is a member of UGC IKS Committee on Teachers Training and a member of UGC IKS NET Committee. I invite Dr. Ritendra Sharma to share a few words on the theme of this conference. Sir, please. A very humble pranam to all dignitaries on the stage and off the stage. Honorable keynote speaker, Professor Bhagwati Prakash Sharma, Dr. Gajanan Dangeji, President Yojuk Center for Research, Presidential Secretariat, Dr. Nagesh Bhandari ji and Dr. Ritu Bhandari ji, Executive President, Dr. Sandeep Chakravarti ji, Executive Vice President, Professor Vedvyas ji, all esteemed experts, dignitaries, and dear faculty members. Let me first express my sincerest gratitude to all experts who have accepted our invitation, sometimes on very short notice, to grace this occasion and ready to share their insights and recommendations on this very important theme of Acharanam, Indic wisdom for sustainable lifestyle. In fact, Center for Indic Studies at Indus University has been blessed with continuous guidance and support of scholars from the country, across the country since its inception. And we really feel blessed that even when it not came into existence, great scholars, great gurus have been guiding us regarding how to revive Indic knowledge system in this country. The center was established with the stated goal of restoring dharmic narrative of India, aiming to educate Indic seekers on various cultural, spiritual, political, social, and most important, all interdisciplinary civilizational issues of India. Our modus operandi was very simple: to explore, understand, and connect the works of great gurus to Indic seekers across India or outside India through various online initiatives that we begin with, such as Indic Talks, Indic Courses, Indic Varta, along with systematic integration of IKS modules into mainstream academia. Coming to today's event,
The theme of this two-day event is part of the ongoing series of conference planned by one of the esteemed working groups of C20 named Lifestyle for Environment, Life, headed by Dr. Gajanan Dangeji, who has been instrumental in taking indigenous voices to global platform through various initiatives of UJAC. The theme of the event is Acharanam. It is the art and science of translating profound wisdom of Indic thinkers into day-to-day practices. It is the most revered concept in Indian philosophy, one who reflects and embodies wisdom of simple living is the most respected person in Indian society. He could be a great thinker or uneducated layman, or it could be a simple woman engaged in daily activities, or perhaps entrepreneur who is making way for sustainable livelihood. Acharanam ensured that such simple and ordinary human efforts contribute or can contribute into extraordinary transformation of society. And this has been sustainable practices of India at the foundation. In this conference, we would like to collectively explore how profound wisdoms translates into actual practices. Because in modern times we are struggling that we all have and we all hear great ideas, sometimes very profound philosophies. But when it comes to implementation, translating that into day-to-day behavior, there is a wide gap, there is a separation. So how this gap between theory and practice can be bridged? As we stated in our concept note also, that Indic community for millennia, various wisdom sutra have been translated into actual practices, and we see that all around us. Simple saying of Rig Veda of not eating food alone has such a deep impact in our society that wherever you travel across in India, as Sahasrabuddheji was also referring to, that it was taken care that surrounding beings have translated into other household practices, and other surrounding beings are fed, whether it's birds, insects, cows, and other animals before taking one's own meal. It is recommended to wait for any unexpected guest before feeding oneself. Now, this was not only philosophy, this was practice across India for thousands of years. These daily practices eventually helped in maintaining ecological balances of community. One also finds practices at the community level where certain areas are left untouched, are called sacred zones or sacred groves. Not for human consumptions, helped in ecological restoration, and they also culminated in preserving the biodiversity of various places in India. So such kind of practices was not part and parcel of only teachings and abstract philosophy in India, but I think sometime opposite happened. These practices were there and they were encoded in our Shastras and classical wisdom also. And with the help of finest minds of India, this 2 days conference will delve deeper into the knowledge fabric of India that shaped innumerable wise practices among individuals, institutions and communities for the ecological well-being of the planet. Now the various sessions, you see that there are 5 sessions we have planned, designed to cover a wide range of topics that could do justice to such a complex topic. When we talk about sustainability issues, I think hardly anything is left when we talk in terms of civilizational perspective. It could be about individual initiatives, family, community, government. We'll talk about biodiversity. So, few themes that we have selected, I would just like to point out. On one hand, we would like to understand the fundamental ideas as taught in our Shastras. So that's what the first session is all about. Ecological consciousness, understanding through Shastric foundation. And we have wide range of such Shastric foundation for this ecological consciousness, beginning from Nadi Sukta or Prithvi Sukta of Vedas, to Arthashastra brilliant and pragmatic recommendations on animal welfare, to continuous emphasis on the concept of Dan, as mentioned in our Dharma Shastra, Itihas and Puran. Now this is important because we are drawing our wisdom either from capitalist society or communist society. And we are trying to understand what are Indic ways of producing wealth as well as redistributing wealth. On the other hand, we would like to explore what modern sciences can contribute
in deepening our understanding of sustainable practices. As ecology is deeply connected with the practices of economy, or how our regular practices oriented towards earth and calm would shape sustainable society. The concept of sacred and various practices that evolved around temple ecosystems is an important area to explore for sustainability. That's why one session is kept on that. In India, there is no division between classical and folk practices. And I think that's what distinguishes and differentiates us from the Western, larger Western framework. Classic and folk, these are very permeable categories and boundaries and deeply influence each other. Therefore, folk tradition or indigenous knowledge or tribal wisdom or rural practices are considered as equally important ways of knowing as the classical tradition. Sacred groves, preserving ethnic knowledge system, and creating sustainable water bodies. These are the finest examples of such folk tradition in India. And we get connected with such full of wise practices, and we see that these recommendations are now made by those who are working at the frontiers of ecology. Let me quote 3 examples. One is coming from Edward Wilson. He has written an influential book, Half Earth, because he has been working for many decades on preserving biodiversity. He is known for his work on sociobiology as well as a biodiversity protection. He says that our planet's fight for life process is an achievable plan if we consider or if we devote half the surface of the earth to nature. That is the only way now in 21st century to preserve biodiversity. And this comes closer to our concept of sacred groves that has been practiced in India, I think in every villages. And now scientists are exploring that how this practices survived of conserving and preserving some sacred species without touching them for any personal or community consumptions. Then second important concept that now experts are talking in this area is cultural ecology. For hundreds of years, we have been hearing about only ecology, but not taking human dimension into ecology as well. Wade Davis has very beautifully articulated this, that if we need to protect biosphere, we also have to protect ethnosphere. Ethnosphere means the indigenous people. On one hand, if we keep destroying indigenous knowledge system, it would be very difficult in the long run to preserve biodiversity. And this has been practiced in India for thousands of years. And third reference that I see is coming again from India, and that is by Anupam Mishra ji, Aaj Bhi Khare Hain Talab. Because sustainable bodies, water bodies across India is amazing phenomena, and lot of work is now going on to understand, and of course we have Lakshman Singh ji here also to talk about this issue. So the thing is, all these traditional insights are now talked about people who are working at the frontiers. So 2 sessions are planned for understanding these aspects of Indian wisdom. It gives me immense pleasure to share with you that this conference is important for multiple reasons. First, it's a G20 conference, and it is a proud moment for every Indian to host G20 this year. It is a sign of growing influence of India in 21st century. It is a real honor for Indus University to play a very small or maybe minuscule role on such esteemed global platform. But we see ourselves as, the Gilhari of Ram Setu, trying to contribute our own modest and humble way to understand this phenomena. Second important reason is the C20 group is headed by Amma, Mata Amritanandmayi Devi. She is embodiment of compassion, seva, divine energy, divinity herself. She is incarnate of Shakti Swarupa. And she is leading this C20 conference, and her life and work is an inspiration for, I think, innumerable seekers in India to understand how we can contribute at our level. Then third important reason is our collaborator Yojak, because we now get opportunity to interact with them and learn whatever they have been implementing in terms of sustainable practices, as well as taking indigenous voices on the global platform. And lastly,
raising awareness about Indian knowledge system on global platform. And that's why we have kept the title Indic Wisdom for Sustainable Lifestyle. So for all this reason, this 2 days conference has become very important for us. I again welcome all experts, dignitaries, our chief guest to Indus University, and thanks them again and again for giving us this wonderful opportunity. Thank you. Thank you, Dr. Ritendra Sharma, for beautifully throwing light on the theme of this conference. Thank you very much. I take pride in introducing Dr. Gajanan Dangiji, President, Yojak Center for Research and Strategic Planning for Sustainable Development, India Coordinator, Life Working Group, C20 India. A veterinary doctor by education, Sir has dedicated his life for development of rural and Janjati tribal areas. He is founder president of Yojak, which promotes Bharatiya Vikas Chintan. Sir is currently designated as India Coordinator Life, Working Group of C20 and Engagement Group of C20, of G20. He was also invitee panel speaker at BRICS Civil Forum 2021, New Delhi, on the role of civil society partnership. He was also invited as panel speaker at BRICS Civil Forum 2022, China, on revisiting the Indian philosophy of development. Sir was also the invitee panel speaker at Delhi Process 6, a conference on exploring new development paradigms and growth strategies, partnerships in times of transitions and contestations, which was held towards the Indian G20 presidency on 27th and 28th August 2022, organized by Research and Information System for Developing Countries. Sir, I request you to deliver the inaugural address, please. धन्यवाद। मंच पर विराजमान आदरणीय भगवती जी, इस पूरे कार्यक्रम के लिए जिन्होंने अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान दिया और इस इंडस यूनिवर्सिटी में इस चर्चा सत्र का आयोजन किया, वो डॉक्टर नागेश जी, भंडारी मैडम, चक्रवर्ती सर और शर्मा जी, यहाँ पर उपस्थित सभी विद्वज्जन और इस सभागार में उपस्थित इस यूनिवर्सिटी के सारे फैकल्टीज और ऑनलाइन जुड़े हुए सारे भारत के विभिन्न स्थानों से जुड़े हुए मान्यवर। एक आनंद का क्षण है कि विश्व आज जिस परिस्थिति से गुजर रहा है, विकास के संबंधित जिन चुनौतियों का सामना समूचा विश्व कर रहा है, ऐसे में जो विश्व का एक सबसे ताकतवर प्लेटफॉर्म है G20, उसकी अध्यक्षता का लाभ भारत को प्राप्त होना और इस सारी चर्चा में जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस है, उनके द्वारा कुछ विशेष विषयों का मंथन करना, यह बहुत एक आनंद का समय है। हम सब लोग इस मान्यता को जानते हैं, वादे वादे जायते तत्वबोधः। हम लोग चर्चा करते रहेंगे और चर्चा से जो नवनीत निकलेगा वो केवल हमारे लिए ही नहीं, समूचे विश्व के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। इस परंपरा का अवगाहन करते हुए ये जो सिविल सोसाइटी प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर विभिन्न प्रकार की चर्चाएं चल रही है। यह बहुत समयानुकूल है कि जब पर्यावरण सम्मत जीवन शैली, यह विषय पहली बार C20 के प्लेटफॉर्म के ऊपर चर्चा के लिए आया है और यह भारत की अध्यक्षता के समय में आना, इसका एक विशेष
महत्व भी है। हम लोगों ने इस पर्यावरण सम्मत जीवन शैली के वर्किंग ग्रुप के अंतर्गत विभिन्न विषयों की चर्चा पूरे देश में और देश के बाहर भी ऐसे समूह जो प्रकृति के साथ जीवन यापन करना चाहते हैं और उसके आधार पर कुछ जीवन शैली को निर्धारित करना चाहते हैं, ऐसे सभी लोगों के साथ चर्चा का एक विशेष दौर चलाया है। ऐसे विषयों की चर्चा प्रारंभ की है जो दैनंदिन जीवन के लिए बहुत उपयुक्त है। उसमें महत्वपूर्ण है ग्रास रूट इनोवेशंस एंड लाइफस्टाइल, क्योंकि आज जो कुछ विकास के जो मूलभूत तत्व है, उस तत्व का एक हिस्सा है केंद्रीकरण, और यह केंद्रीकरण की बहुत कीमत पूरा विश्व चुका रहा है। ऐसे समय में जब पर्यावरण की चर्चा चल रही है तो हम लोगों ने कुछ मूल्यों की भी चर्चा करनी चाहिए और मूल्यों के आधार पर जीवन शैली की चर्चा भी करनी चाहिए। तो हम लोगों ने कुछ मूल्य चयन किए जो भारत की परंपरा के अभिन्न अंग हैं, जिसमें है विकेंद्रीकरण, जिसमें है विविधता का सम्मान, जिसमें है समन्वय, जिसमें है केवल अधिकारों की नहीं जिम्मेदारी की चर्चा, कर्तव्यों की चर्चा। इन मूल्यों के आधार पर हम लोगों ने विषयों का चयन किया। उसमें से एक प्रमुख है ग्रास रूट इनोवेशंस एंड लाइफस्टाइल। एक विषय है फूड एंड लाइफस्टाइल, फैशन एंड लाइफस्टाइल, वेस्ट, वाटर, सर्कुलरिटी, एजुकेशन, नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस, ऐसे विभिन्न विषयों पर भारत में चर्चा चल रही है। और इन सारी चर्चा का केंद्र बिंदु भारतीय विचार चिंतन है। ये इसकी विशेषता है। इस चर्चा की अपेक्षा यह है कि हम सब लोग जानते हैं कि ये G20 की प्रक्रिया में एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट तैयार करने की प्रक्रिया चलती है, और इसमें एक रिकमेंडेशंस का पद्धति है जिसके आधार पर ये पॉलिसीज एक पॉलिसी टेक पैक में परिवर्तित होगी। और ये जो G20 का पॉलिसी पैक है, इसकी चर्चा G20 के मुख्य समिट में की जाएगी। हम लोग ये चाह रहे हैं कि ये जीवन शैली की चर्चा विश्व के सभी पटलों पर हो, और केवल अधिकारों की नहीं तो कर्तव्य की चर्चा पूरे विश्व में प्रारंभ हो। इसके लिए हमने इस वर्किंग ग्रुप के जो टैगलाइन है वो लाइफ इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके द्वारा ही प्रारंभ किया है। हम लोग आशा करते हैं कि यह जो इंडिक विजडम, इसके ऊपर 2 दिन की चर्चा इस यूनिवर्सिटी में रखी है। यहाँ ऐसे विद्वज्जनों को बुलाया है, वो केवल अध्ययन ही नहीं अपने दैनंदिन जीवन में उस विषय को जी रहे हैं। ऐसे ही महानुभावों को यहाँ पर निमंत्रित किया गया है जिनके जीवन से, जिनके आचरण से ऐसे कुछ सूत्र उभर कर आएंगे जिसकी पूरे विश्व को आज भारत से आशा है। मैं सबका बहुत बहुत मनपूर्वक स्वागत करता हूं। धन्यवाद। Thank you, Dr. Gajanan Dangeji, for this simplistic and inspirational inaugural address. We have with us Professor Bhagwati Prakash Sharma, keynote speaker. A brief introduction of his before inviting him. Dr. Bhagwati Prakash Sharma is the chairman of UNESCO MGIEP, the only Category 1 institute for Asia Pacific nations focused on education for peace and sustainable development. He is a member of the high-powered committee of the Ministry of Education on Indian Knowledge System and serves as the group president of the Pacific Group of Universities. He is also a member of Haryana Higher Education Council.
Professor Sharma has held positions as Vice Chancellor of Gautam Buddha University 2018 to 2021 and President Designate Vice Chancellor and Pro-President at Peher University 2013 to 2018. He has actively participated in WTO ministerial meetings and received the Mahamana Madan Mohan Malviya Award in 2016. With 44 years of teaching experience, Professor Sharma has supervised 15 doctoral researches, authored 14 books, 30 monographs, and edited 10 books. His contributions extend to more than 350 articles and research papers. With this, may I please invite Dr. Bhagwati Prakash Sharma for his address. Please, sir. Honorable Chief Guest and architect of this event, Gajanan ji Dange, respected Nagesh ji Bhandari, respected Ritu ji Bhandari, Chakravarti ji, Sandeep ji, Sharma ji, and esteemed galaxy of luminaries on ecology and environment. What do we feel that today this planet Earth and our entire atmosphere is most formidably threatened? मुझे लगता है कि हमारी सभ्यता के इतिहास में वर्तमान में पर्यावरण को जो चुनौती है, इतनी बड़ी चुनौती शायद कभी नहीं रही. And we can find solution only in the Indic wisdom. If we just recollect the writings of Mark Twain, he visited India in 1897, and he has said that Indic wisdom has all that knowledge which is yet to be discovered and invented. Whatever the science would invent in the times to come, it is already there in the Indic wisdom. And therefore, if we search solution for sustainable lifestyle in the Indic wisdom, it would be the right approach. And at the outset, I also compliment the Indus University for having started a section on Indic wisdom. When we talk of Indic wisdom on sustainable lifestyle, I am reminded of a shloka of Mad Bhagavat Purana. In the 7th section, 14th chapter and 8th stanza, it says, Yavat Vriyet Jataram Tavat Svatvam Hi Dehinam Adhikam Yo Abhimanyet Sa Stena Dandam Arhati. जितने से व्यक्ति की उदर पूर्ति हो जाए या जितने से उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए, उतने पर ही व्यक्ति का अधिकार है. उससे अधिक संग्रह करने वाला स्तेन, चोर है, दंड का भागी है. And it reveals or it sets the premises that everyone should elevate from his own or her own greed, and whatever is necessary for our survival, we should take only that much from the nature. Today, in generating electricity, we have to burn almost 100 crore tons of coal in the thermal power plants. It means we are depleting the crust of the earth by that quantum. धरती की गोद को 100 करोड़ टन हर साल हम निकाल देंगे, और उतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, उतना ही दूसरे पोल्यूटेंट्स हम एटमॉस्फेयर में छोड़ रहे हैं. और हम देखते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद जो हमारा टेम्परेचर एनवायरनमेंट का 1.2 डिग्री बढ़ चुका है, और उससे ओशंस का लेवल हमारा 6 से 8 इंच बढ़ गया है. और जिस स्पीड से ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन बढ़ रहा है, उससे ऐसा लगता है कि आने वाले 100 साल में यह जो है ओशंस का लेवल 3 फीट बढ़ जाएगा. नाउ कैन वी सस्टेन एंड सर्वाइव? और हर व्यक्ति सोचता है कि मेरा एसी चल रहा है 1 घंटा, तो क्या फर्क पड़ता है, आई कैन पे फॉर दैट. बट जहाँ
कोल बर्निंग हो रही है, उससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उससे ओशन लेवल एलिवेट हो रहा है, क्या शैल वी बी एबल टू अफोर्ड दैट कॉस्ट? तो सस्टेनेबल लाइफस्टाइल में मुझे लगता है कि हमें अपने उपभोग, और इसीलिए हम कहते हैं सस्टेनेबल कंजम्पशन, जब तक हमारा कंजम्पशन सस्टेनेबल नहीं होगा तब तक। मैं तो आजकल कई बार एक स्टेपल की पिन लगाने में 3 बार सोचता हूं कि इतने आयरन और उसको गैल्वेनाइज करने के लिए जिंक अर्थ में से निकालने का, हाउ मच ऑफ द क्रस्ट ऑफ द अर्थ हैज बीन डिप्लीटेड। तो मैं अगर जिस पेपर को फेंकना है तो उसमें यू क्लिप लगा के उसको वापस यूज करता हूँ इंस्टेड ऑफ पुटिंग ए स्टेपल। वी वेरी इजीली पुट द स्टेपल पिन्स। हाउ मच क्रस्ट ऑन एन एवरेज इट इज एस्टिमेटेड that a middle class family buys fans, mixers, refrigerator, etc. 2 to 3 tons of crust of the earth has to be depleted for producing that much of iron, zinc, copper, etc. for producing all those gadgets. तो हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे घर की मिक्सी अगर 200 रुपये 500 रुपये में ठीक हो सकती है, उसकी बजाय हम अगर नई खरीद के ला रहे हैं तो हम निश्चित रूप से वो 2.5 टन अर्थ की क्रस्ट को डिप्लीट कर रहे हैं। एंड देयरफॉर we have to think before consuming. It should be the first dictum which I do feel. Since we have been talking of the nature, and in Indic wisdom अष्टधा प्रकृति कही है, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, जल, वायु और उसके साथ ही मन, बुद्धि, अहंकार, ये 8 जो है एलिमेंट्स, और इसी से होल ऑफ द कॉस्मोस इज मेड। और हमें थोड़ा सा अपने शब्दों पे जाना पड़ेगा। जल के लिए शब्द है आपह। आपह मीन्स विच इज नित्य। बिग बैंग थ्योरी में जो कहा है कि जब ये पूरा ब्रह्मांड बना बिग बैंग के समय, तो जो वाटर वाज प्रेजेंट एट दैट टाइम आल्सो, जो कॉस्मिक डस्ट थी उसमें भी वाटर था, इसीलिए इट। नाउ अगेन वी हैव, व्हेन वी थिंक ऑफ इंडिक विजडम, सो वाटर इज नेसेसरी फॉर लाइफ, और इसीलिए पंच महाभूतों में जल को एक आधार माना है, और जल पर्जन्य का आधार है। पर्जन्य यानी कि वर्षा, रेन्स। और हमारे यहाँ कहा है कि यह जो रेन्स कैसे होती हैं, तो अभी 2012 में इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज का कहना था कि धरती पे जो वर्षा होती है उसके लिए जो रेन प्रेसिपिटेटिंग ह्यूमिडिटी चाहिए, उसमें से 40% रेन प्रेसिपिटेटिंग ह्यूमिडिटी फॉरेस्ट कंट्रीब्यूट करते हैं, और 60% रेन प्रेसिपिटेटिंग ह्यूमिडिटी ओशंस कंट्रीब्यूट करते हैं। यानी कि वर्षा के लिए 40% जो रेन प्रेसिपिटेटिंग ह्यूमिडिटी है वो फॉरेस्ट कंट्रीब्यूट करते हैं। अब हम कई बार कह देते हैं वन शब्द शायद इससे बनाए बेतरतीब फैले हुए पेड़ पौधे, ऐसा नहीं, आप लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट हैं। वन शब्द की यास्क ने 4000 साल पहले जो उत्पत्ति बताई निरुक्त, वन्यते याचते वृष्टि प्रदायते इति वनाः, प्रकृति से वृष्टि की मांग करने वाले को वन कहते हैं। जिस बात को 2012 के इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज ने कहा कि ये रेन प्रेसिपिटेटिंग ह्यूमिडिटी फॉरेस्ट से आती है, उसी बात को 4000 साल पहले यास्क मुनि ने कहा था, वन्यते याचते वृष्टि प्रदायते इति वनाः। And therefore, to analyze the Indic wisdom and to understand and interpret the Indic wisdom in right perspective, we have to go to the terminology, how these words have been evolved and how these words have been created, that has to be understood. Now, coming to another dimension, we have considered the ecology here. Now, Vraksha Ayurved, Krishi Parashar, they all talk of microorganisms and biodiversity in detail. I'll not be able to go into that much detail. लेकिन उसमें जीवो जीवस्य जीवनम और उसको एक्सप्लेन किया है कि how various plants and animals and insects are interdependent. We have 3 lakh angiosperms flowering plants, 1.5 lakh various insects which have symbiotic relationship. Now, almost 18 to 20% of our crop yield is by virtue of the insect pollinators. मधुमक्खियाँ, तितलियाँ, भौरे, इनके कारण, because they pollinate the crops. 50% of the yield of the fruits and vegetables is by virtue of that insect pollination. Almond,
बादाम तो ऐसा पौधा है जो बिना इंसेक्ट पॉलिनेशन के हो ही नहीं सकता. एंड a honeybee cannot travel even up to half a kilometer. Sometimes we do monoculture in plantation. नीम लगाएंगे तो नीम के पेड़ लगा दिए 50 किलोमीटर तक, अशोक लगाए तो अशोक लगा दिए, और हमने अमलतास लगाया अमलतास लगा दिया. अब नीम के फूल तो 20-25 दिन के लिए उन मधुमक्खियों, तितलियों, भौरों को मिलेंगे, उसके बाद वह 5 किलोमीटर से आगे नहीं जा सकता और इसलिए वो मर जाती है. मेनी ऑफ द स्पीशीज ऑफ द हनी बीज आर टर्निंग एक्सटिंक्ट. जो हमारी क्रॉप यील्ड का 18% जिनसे आता है, दे आर टर्निंग एक्सटिंक्ट बिकॉज ऑफ मोनोकल्चर. हम बहुत पवित्र भाव से पौधारोपण करते हैं, लेकिन मोनोकल्चर के कारण वो सारे जो हमारे इंसेक्ट पॉलिनेटर्स है वो सारे के सारे समाप्त होते जा रहे हैं. और यूरोप में तो बड़ा क्राइसिस हो गया, कॉलोनी कोलैप्स सिंड्रोम पे उन्होंने 2013 से बड़ा इसके ऊपर काम कर रहे हैं. हमारे यहाँ भी हम देखते हैं जितने मधुमक्खियों के छत्ते दिखाई देते थे आजकल नहीं दिखाई देते हैं. तो यह जो हमारा जितनी वैरायटी ऑफ प्लांट्स और हैं उन सबको विद इन हाफ ए किलोमीटर जितनी वैरायटी हम प्लांट कर सकते हैं उतनी करनी चाहिए. मैं उदयपुर से आता हूँ, वहाँ एक सज्जनिवास बाग 1881 में बनाया, तो उसके बैकग्राउंड पेपर में उन्होंने ये मेंशन किया कि वहाँ 1000 varieties of plants and these herbs, shrubs, etc. were planted just to keep this symbiotic relationship among the insects and plants and our survival. Another important thing which I would like to mention, because economic sustainability has also been mentioned, so I'll be now switching on to economic sustainability. Economically, अभी गजानन जी भी बात कर रहे थे जो इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी की, और इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी की दृष्टि से अगर हम देखें तो आज के समय में वी आर पैनिक्ड ऑफ जॉबलेस ग्रोथ, की रोजगार रहित वृद्धि हो रही है. और आपने डिसेंट्रलाइजेशन की भी बात की, विकेंद्रीकरण की. मुझे लगता है मैं केवल कैपिटल की डेफिनेशन में अगर डिस्टिंग्विश करना चाहूँगा, मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ कैपिटल सेज कैपिटल इज द प्रोड्यूस्ड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन. उत्पादन का उत्पादित साधन है. ऋग्वेद सेज परिवार की उत्पादकीय संपत्ति पूंजी है. इट मीन्स एवरी फैमिली शुड हैव प्रोडक्टिव कैपिटल, और इसलिए परिवार आधारित उत्पादन की बात ऋग्वेद में उस समय में की है. और उसके साथ ही साथ हमने जो जॉबलेस ग्रोथ नहीं हो, तो राजा दशरथ के अर्थशास्त्री थे उपाध्याय सुधन्वा, उन्हीं के अर्थशास्त्र के आधार पर चाणक्य ने अपना कौटिल्य अर्थशास्त्र काफी कुछ संकलित किया है. और चाणक्य कहते हैं मनुष्याणाम वृत्तिर अर्थ मनुष्यवती भूमि रित्यर्थ तस्य पृथिव्याय लाभ पालनोपाय शास्त्रम अर्थशास्त्रम इति. अर्थात लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना अर्थशास्त्र है, और ऐसे मनुष्यों से आवासे संपूर्ण भूमंडल के लोगों का लाभपूर्वक लालन पालन करके और उनका योगक्षेम यानी जो उनको प्राप्त नहीं हुआ है वह प्राप्त हो, और जो प्राप्त हो गया वह सुरक्षित रहे. और उपाध्याय सुधन्वा ने भी यही कहा है कि प्रत्येक कार्यक्षम व्यक्ति को कार्य मिले, उस कार्य से उसको आय प्राप्त हो, उस आय का विवर्धन हो, और उस आय का समाज में यथोचित वितरण हो. इस बात पर उपाध्याय सुधन्वा ने रामायण काल में कहा है. तो सस्टेनेबिलिटी और सस्टेनेबल लाइफस्टाइल में चाहे हम आज परिवार आधारित यानी विकेंद्रीकृत उत्पादन की बात करें, चाहे हर कार्यक्षम व्यक्ति को वर्किंग एज, भारत के पास आज 90 करोड़ लोग 15 से 64 वर्ष की आयु में वर्किंग एज पॉपुलेशन में है, और ये संख्या 2030 के आते आते 100 करोड़ हो जाएगी. ये वर्ल्ड का 24.3% वर्किंग एज पॉपुलेशन होगा. CII का भी एस्टीमेट है कि भारत में अगर वर्किंग एज पॉपुलेशन का हर व्यक्ति को काम मिल जाए, इंडिया कैन बिकम ए $40 ट्रिलियन इकोनॉमी. आज हम $3 ट्रिलियन इकोनॉमी है, अमेरिकी अर्थव्यवस्था भी $20 ट्रिलियन की है. हम $40 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हो सकते हैं. सस्टेनेबल इकोनॉमिक्स की बात जो हमारे यहाँ कौटिल्य अर्थशास्त्र या उपाध्याय सुधन्वा ने की, वह हमारा इंडिक विजडम से हमें निकालकर उसको ठीक से इंटरप्रेट करने की आवश्यकता है और उसे ठीक से समझने की आवश्यकता है. इसके साथ ही आज हमारे यहाँ जैसा मैंने कहा अष्टधा प्रकृति, अष्टधा प्रकृति में मन, बुद्धि और अहंकार कहा है. अब मन का कोई शब्द अंग्रेजी में मिलता ही नहीं है, क्योंकि
मन को ब्रेन नहीं कह सकते, उसको मन को इंटेलेक्ट भी नहीं कह सकते। हमारे प्राचीन शास्त्रों में जो मन के लिए कहा है, मन का स्थान चित्त कहा है या चित्त का स्थान हृदय कहा है। अभी तक मॉडर्न साइंस भी नहीं मानती थी कि हार्ट का भी कोई थॉट प्रोसेस हो सकता है। आजकल पीपल टॉक ऑफ कॉर्टिकल मेमोरी एंड कार्डियक मेमोरी, मस्तिष्कगत स्मृति और हृदयगत स्मृति, एंड इवन नाउ पीपल आर टॉकिंग ऑफ एनालिसिस बाय। तो हमें अब कैसे ये हृदय और कैसे हमारा पूरा जो हम कहते हैं कि हम जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, हमारे डिक्टम में कहा गया, उसके अभी मैं गहराई में नहीं जा पाऊंगा। हमारे यहाँ आयुर्वेद के निघंटु शास्त्रों में किस वस्तु के खाने से व्यक्ति का मन कैसा बनता है। मैं आज की अभी 2015 की कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की एक स्टडी को रेफर कर रहा हूँ, जिसमें उन्होंने कहा कि सोयाबीन ऑयल, ये इंडस्ट्रियल ऑयल्स हम नहीं खाते थे, हम तिल्ली, मूंगफली, सरसों खाते थे, और तिल शब्द ही तिल से तेल बना है तो वो खाते थे। अब ये इंडस्ट्रियल ऑयल्स जो आ गए, तो कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की स्टडी कहती है कि सोयाबीन ऑयल कैन ऑब्स्ट्रक्ट 100 जीन्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। उसमें एक ऑक्सीटोसिन हार्मोन प्रोड्यूसिंग जीन भी है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन को लव हार्मोन कहा जाता है। पेरेंट और चिल्ड्रन के बीच जो स्नेह का संबंध है वह भी ऑक्सीटोसिन हार्मोन से डिटरमाइन होता है, और सोशल गैदरिंग में लोगों से इंटरेक्ट करने का करेज भी ऑक्सीटोसिन हार्मोन से आता है। और वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन को उत्पन्न करने वाले वंशाणु यानी जीन को अवरुद्ध कर देता है, इस प्रकार का अभी आया है। अच्छा, सोयाबीन का सोया मील या सोया मिल्क या उसका केक, उसमें ये नहीं है, ऑयल में है ये। अब आजकल हम देखते हैं माता पिता और बच्चों के बीच जो स्नेह जितना प्रगाढ़ था आज से 50 साल 40 साल पहले थी, आज नहीं है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि इसके कारण है, लेकिन नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ आयुर्वेदिक निघंटु प्रीचिंग्स कि किस प्रकार से आयुर्वेद में विभिन्न प्रकार के आहार से किस प्रकार की, और आजकल ऐसी ही साइंसेस डेवलप हो रही है, न्यूट्री जीनोमिक्स और न्यूट्री जेनेटिक्स। आयुर्वेद में भी प्रकृति परीक्षण के आधार पर किस व्यक्ति को कौन सा आहार उचित रहेगा, इस बात का विस्तृत विवरण है। और आजकल डीएनए वाइज टेस्ट करके ये पता लगाया जा सकता है किस व्यक्ति को तो नमक उसका ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा, किसको नहीं बढ़ाएगा। आयुर्वेद में भी ये बात की जाती थी कि प्रकृति परीक्षण से किस व्यक्ति को किस प्रकार का आहार लेना चाहिए। नाउ डीएनए वाइज टेस्ट से भी इस प्रकार का पता लगाया जा सकता है। जैसे मैं योग की बात हम करते हैं, योग के बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जा पाऊंगा, लेकिन एक छोटी सी बात, जैसे हमारे यहाँ अष्टांग योग में और प्राणायाम भी की भी बात की है, और उसमें डीप ब्रीदिंग दीर्घ श्वसन की भी बात की है। मैं कैसे आज की मॉडर्न साइंस हमारे उस प्राचीन सिद्धांत को सुस्थापित कर रही है। एलिजाबेथ ब्लैकबर्न को नोबेल प्राइज मिला था। स्ट्रेस इंड्यूस्ड एजिंग क्यों होता है? तनाव के कारण कुछ लोगों में वृद्धावस्था समय से पहले आ जाती है, और कुछ लोगों में कितना भी तनाव रहे वृद्धावस्था समय से पहले नहीं आती है। तो उन्होंने उसी पे नोबेल प्राइज मिला था। उन्होंने कहा कि जो क्रोमोसोम्स के कैप लाइक टेलोमियर्स होते हैं, टेलोमियर्स अगर लंबे होंगे तो स्ट्रेस इंड्यूस्ड एजिंग नहीं होगा, और टेलोमियर्स अगर छोटे होंगे तो स्ट्रेस इंड्यूस्ड एजिंग होगा। उसके 1.5 साल बाद उन्होंने कहीं पढ़ लिया, योग में लिखा है कि डीप ब्रीदिंग करने से लॉन्गेविटी बढ़ती है। तो उन्होंने एक ग्रुप ऑफ पर्सन 100 लोगों का ग्रुप लिया, उनके टेलोमर्स मेजर कर लिए। टेलोमर्स का मेजरमेंट सलाइवा से हो जाता है, ब्लड सैंपल की भी जरूरत नहीं पड़ती है। टेलोमर्स मेजर किया और फिर उसको 2 ग्रुप में बांट दिया। एक में फॉर 12 मिनट्स, जो इंडिक टाइम इपोक है वो है 1 घटी, 2.5 घटी का 1 घंटा होता है, तो उन्होंने आधी घटी का, हमारे यहाँ योग शास्त्र में आधी घटी डीप ब्रीदिंग करने का, 12 मिनट्स फॉर 90 डेज। उन्होंने एक ग्रुप को 90 दिन तक 12 मिनट गहरा श्वसन कराया, दूसरे ग्रुप को वैसा ही 90 दिन 12 मिनट एरोबिक एक्सरसाइज कराई। तो पाया कि जिन लोगों ने डीप ब्रीदिंग की उनका टेलोमरेज 21% इंप्रूव हो गया। रिपोर्टेड डेटा है क्लिनिकल ट्रायल्स में। तो कहने का मतलब यह है कि इंडिक विजडम से सस्टेनेबल लाइफस्टाइल के लिए हमें जहां एक तरफ तो इंडिक विजडम के सारे सूत्र हैं वो निकालने होंगे,
जैसे मैंने कहा वन्यते याचते वृष्टि प्रदायते इति वनाहा, तो इसी प्रकार से हर एक शब्द में यह जो हमारा पूरा गहन छिपा। जैसे सबसे पहली चीज तो इंडिक विजडम को समझने के लिए हमें शब्दों की व्युत्पत्ति उसमें और उसमें जो अक्षर हैं वर्ण मात्रकाएं उनके रहस्य को भी समझना पड़ेगा। जैसे शब्दों की व्युत्पत्ति में हम कहते हैं हार्ट, तो हार्ट तो ऐसे ही, लेकिन हृदय जब हम कहते हैं इसमें 4 अक्षर हैं ह र द य। 5000 साल पुराना शतपथ ब्राह्मण और 4000 साल पुराना यास्क का निरुक्त है। उन्होंने कहा ये ह र द य 4 अक्षरों को बहुत योजना पूर्वक उसमें मिलाया। हरते ददाते रयते यमम हृदय शब्द। हरते यानी बॉडी से ब्लड को लेता है, ददाते यानी बॉडी को ब्लड देता है, रहते यानी शरीर में रक्त को घुमाता है, यमम यानी धड़कनों का नियमन करता है। मॉडर्न साइंस भी 20वीं सदी के पहले ये नहीं जानती थी कि हार्ट बीट का रेगुलेशन जो है नेचुरल पेसमेकर हार्ट में है वही करता है, ब्रेन का कोई रोल नहीं है हार्ट बीट को रेगुलेट करने में। लेकिन हमारे यहाँ भेल संहिता का लोगों ने नाम भी भुला दिया। चरक के समकालीन भेल संहिता रही है। भेल संहिता में लिखा है हृदय की धड़कनों का नियमन हृदय स्वयं करता है। और यहाँ हृदय शब्द की उत्पत्ति में भी हरते ददाते रहते यमम हृदय शब्द, यमम में मतलब धड़कनों का नियमन। और जो आज हमारे यहाँ किसी का नेचुरल पेसमेकर खराब हो जाता है तो आर्टिफिशियल पेसमेकर लगाते हैं। वो सिल्वर आयन बैटरी से एक इलेक्ट्रोड हार्ट के वेंट्रिकल में एंटीरियर पोर्शन में इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस की सप्लाई देते हैं। हमारे यहाँ यजुर्वेद में एक मंत्र है अग्नि घुंग हृदय नाशनी घुंग हृदयाग्रहण पशुपति कृष्ण, जिसका अर्थ है कि हृदय के अग्रभाग में विद्युत को धारण करो। अशनि का एक पर्याय विद्युत होता है और वहां पर इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के रोल को हमने आइडेंटिफाई किया। अब मैं अंतिम बात पे आना चाहता हूं कि जैसे हमने कहा कि मन, तो चित्त का स्थान हृदय है। आजकल हार्ट ट्रांसप्लांटेशंस बहुत हो रहे हैं। एक लेडी जिसने कभी लिकर जीवन में सोचा ही नहीं पीने का, एक बियर एडिक्ट का हार्ट एक्सीडेंटल डेथ के बाद एक उस लेडी में ट्रांसप्लांट किया तो उसमें बियर का एक क्रेज आ गया। अफ्रीका में एक फाउंड्री वर्कर था जिसने कभी पियानो नहीं बजाया, एक पियानिस्ट गर्ल का हार्ट उसमें जब ट्रांसप्लांट किया तो उसने पियानो बजाने का टेस्ट उसका हो गया। इन वन अनदर केस एक लड़की का मर्डर हुआ था और उसका हार्ट बायोलॉजिकली डेड होने के पहले एक दूसरी हार्ट पेशेंट लड़की में ट्रांसप्लांट किया तो उसे हमेशा डर लगता था मुझे कोई मेरी हत्या करने वाला है। तो फिर साइकेट्रिस्ट से मिले। साइकेट्रिस्ट ने कहा कि भाई डोनर का मर्डर हुआ है तो आप जिन पुलिस ऑफिसर्स ने उस डोनर के मर्डर का इन्वेस्टिगेशन किया उनसे भी मिलिए। आप उनसे मिले तो उसने उस हत्यारे को पकड़वा दिया उसके कपड़े हुलिया आदि बता के। तो जो हम कहते हैं कि मन का स्थान चित्त जो है हृदय में चित्त का स्थान है, तो मुझे लगता है कि हमारी लाइफ स्टाइल जो चित्त वृत्तियां हैं, मेरा पाप की, दुराचार की, झूठ बोलने की, ये सारी वृत्तियां हमें उसमें खोजनी होगी। और इसीलिए प्रोफेसर आईसी स्टीवेंसन, अभी कुछ साल पहले उनकी डेथ हो गई, पेनिनसिल्वानिया यूनिवर्सिटी में वो पैरासाइकोलॉजी के प्रोफेसर थे। उन्होंने ये कहा कि भाई कोई व्यक्ति अपने मन में कोई किसी के प्रति दुर्भावना रखता है, मैं किसी के बारे में सोचूं अरे इसका लड़का तो फेल हो जाए तो अच्छा है, अरे इसका एक्सीडेंट हो जाए तो अच्छा है, मैं मन में झूठ बोलता हूं, तो ये बाहर किसी को पता नहीं चलता है। केवल मेरे ब्रेन के जो न्यूरॉन्स हैं उनमें इस तरह के इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस वो पैदा होते हैं और वो इम्पल्सेस दे क्रिएट ट्रिगर thousands of chemical reactions in my nervous system and though they get recorded in my nervous system। और उन्होंने इस पर इन्वेस्टिगेट किया, दे डू रीप्ले आफ्टर सम इंटरवल, यानी कि मैं अपने मन में मेरी चित्त वृत्तियों में मैं किसी के प्रति दुर्भावना लाता हूं जिसको बाहर किसी ने नहीं देखा, वो मेरे नर्वस सिस्टम के ऑटोनोमस सिस्टम से उसका ऑटोनोमस रिकॉर्डिंग हो जाता है एंड दे डू रीप्ले इन द फॉर्म ऑफ वेरियस डिजीजेस। हमारे यहाँ पुराणों में कहा है कि व्यक्ति के अच्छे बुरे हर कर्म का हिसाब चित्रगुप्त जी रखते हैं। मुझे लगता है इस चित्रगुप्त शब्द को प्रोफेसर आईसी स्टीवेंसन के उस इन्वेस्टिगेशन के साथ रिलेट करना पड़ेगा। अंदर गुप्त रह के मेरे समस्त कार्यों का जो चित्र बनाता है। तो मुझे लगता है कि इंडिक विजडम से अगर हम अपनी लाइफ स्टाइल को रेगुलेट करें तो हम सारी अपने दुर्गुण, दुष्प्रवृत्तियां, जो हमारी खराब वृत्तियां हैं, उन सबको हम ऑटोमेटिकली करेक्ट कर लेंगे। जब मैं झूठ बोलने की इच्छा होगी तो मुझे लगेगा मेरे ब्रेन के न्यूरॉन्स
इस तरह की रिएक्शंस ट्रिगर करेंगे जो आगे पीछे मेरे लिए बीमारियों का कारण बनेगा, तो निश्चित रूप से मैं झूठ बोलने से रुकूंगा, किसी के प्रति दुर्भावना लाने से रुकूंगा। तो मुझे लगता है कि हमारी लाइफस्टाइल में हमें कंप्लीट जो इंडिक विजडम के जो रूल्स हैं उनको ठीक से इनग्रेन करने की आवश्यकता है आज के समय में। तो अधिक चूंकि विस्तार से मैं नहीं जा पाऊंगा, समय जैसा मुझे संकेत हुआ है, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि इंडिक विजडम में वह सब कुछ है जो मार्क ट्वेन ने कहा, हमें उसे ठीक से उसको देखना होगा। और अगर हमने इंडिक विजडम में जो चाहे लाइफ साइंसेज है, चाहे कॉस्मिक है, कॉस्मिक का ही मतलब हमारे इंडिक विजडम में पूरे कॉस्मोस। अंतिम एक बात, एक आधा मिनट और ले लूंगा, लेकिन आप देखिए कि कितना जो मार्क ट्वेन की बात मुझे 1998 के बाद कॉस्मोलॉजिस्ट ने कहना शुरू किया कि जो आसमान में जो डिटेक्टेबल यूनिवर्स है उसमें करीब 20 खरब से ज्यादा आकाशगंगाएं हैं। एक आकाशगंगा में 400 से 500 अरब तारे, ग्रह, नक्षत्र आदि हैं। और ये आकाशगंगाओं के बीच का खाली स्थान है, वो खाली नहीं है, वो खाली दिखाई देता, बट उसमें एक डार्क एनर्जी है। उस डार्क एनर्जी के कारण इन आकाशगंगाओं के बीच दूरियां बढ़ रही है। सन 2000 के बाद का रिविलेशन है कि आकाशगंगाओं के बीच दूरियां बढ़ रही है, और वो उस डार्क एनर्जी के कारण है। और डार्क एनर्जी 3/4 है, और उसी डार्क एनर्जी के 1/4 से ये पूरा सारी आकाश गंगाएं, आप, हम, सारा ये ब्रह्मांड बना है। हमारे यहाँ यजुर्वेद में 2-3 मंत्र हैं, एतावानस महिमा तो जायांश पुरुष, त्रिपादुर्त उदेत पुरुष, पूरे मंत्र नहीं बोल रहा हूँ, जिसका अर्थ है उस विराट ब्रह्म के एक पाद में यह संपूर्ण दृश्य जगत बना हुआ है। उस विराट ब्रह्म के मतलब विराट ब्रह्म के एक पाद यानी 1/4 में यह संपूर्ण दृश्य जगत बना हुआ है। उस विराट ब्रह्म का 3/4, 3 पाद इस अनंत अंतरिक्ष में अदृश्य होकर विलीन है। तो जो डार्क एनर्जी 3/4 एंड विजिबल वर्ल्ड 1/4 में जो बने हुए की बात हम सन 2000 के बाद कह रहे हैं, उस बात को हमारे यहाँ यजुर्वेद में हजारों वर्ष पहले उसको कहा गया। तो कहने का मतलब यह है कि एक एक शब्द का ठीक से निर्वचन करके और उसको अगर हम अर्थ ठीक से समझेंगे तो हम इंडिक विजडम को अपने जीवन में ठीक से अपना पाएंगे। इतना कहकर मैं अपनी बात को यहीं पूरा करता हूँ। Thank you so much, sir, for your insightful guidance. Now, I would like to take an opportunity to introduce Dr. Ritu Bhandari, President, Indic University. Dr. Ritu Bhandari holds a prominent position as an esteemed member of the Presidential Secretariat at Indic University. Throughout her academic journey, she devoted significant time and effort to the study and training in the field of management, culminating in a wealth of knowledge and expertise. Additionally, she possesses a profound fascination with human psychology, recognizing its importance in understanding and effectively engaging with individuals. Dr. Bhandari firmly upholds the belief that the standard of education plays a pivotal role in shaping the future of our nation. Recognizing the correlation between quality education and overall cultural development, she actively advocates for maintaining high educational standards. By encouraging academic excellence and discipline, Dr. Bhandari envisions a society that thrives on knowledge, innovation, and cultural enrichment. It is a pleasure to have you, ma'am, as our mentor. With this, I would like to invite Dr. Ritu Bhandari for her address. Thank you. Please, ma'am. Namaste to all. I cordially welcome Dr. Gananatji Dangeji, Professor Bhagwati Prakash Sharma ji, and all the eminent speakers present here. We are truly honored to have you amongst us. We have come together
for a 2-day conference with the goal of exploring how Indian society has transformed profound wisdom and deeper ecological perceptions into routine practices. Now, before I go on to discuss the sustainable practices at Indus University, I would like to share with you a fundamental question, the question Dr. Nagesh Bhandari and I asked ourselves when we decided to do something for ecology. And the question is, who are we? If we are consumed by the ego, we will start revealing our names or the other identifiers. But if not, we must have acknowledged that we are human beings, one of the thousands of species that exist on Earth or in the ecosystem, one of them. We, the humans, cannot endure isolation for long. This holds true for others, species too, because we are built with a desire to connect. When we take a closer look at the ecosystem and how it works, we see that interdependence is the guiding principle for keeping things in balance. We come to the realization that we constantly shift between helping, preserving, and destroying. Everything is connected to one another and yet separate. I would like to quote a passage from Srimad Bhagavatam, which says, ether, air, water, earth, planets, all creatures, directions, trees and planets, river and seas, they are all organs of God's body. Remembering this, a devotee respects all species. The idea of oneness is beautifully conveyed in this passage. Despite having various physical forms, we are the same. Honoring the idea of sacred unity, I and my husband, Dr. Nagesh Bhandari, have made and will continue to make conscious efforts to advance environmental consciousness and protect the ecology. The contribution begins at home. Our quest to protect and sustain ecology started at home, as I watched my grandfather, parents, grandmother tend to the needs of the soil, water, and plants. I found myself developing the conviction that nature's need should be respected. I started implementing these practices at home after marriage to make sure that the practices which I would refer to as tradition would continue. The practices include turning tree leaves into manure, making manure from cow dung, planting grass, chemical-free at a farmhouse for the cows, spending time with domesticated animals and plants. These practices ensured well-being of theirs as well as ours. It is true that these practices take place solely within our house and may not have a broad impact. However, the realization that putting these practices into practice regularly have a positive impact on us, our environment inspired by us to expand it. Since that day, the concept of ecological enrichment has spread beyond our house. We made the decision to take specific actions to transform Indus University into a space where ecology will be consciously preserved and enhanced. The steps taken at Indus University. Ayurveda Garden. At a university, majority of the plants are local breeds.
They have been specially chosen with an intent to protect a local ecology. In addition to this, we have grown over 50 plants that are considered to be Ayurvedic plants. Giloy, Ashwagandha, Amla, Satavari, Mulethi, Palash are a few of them. A beautiful addition to this list is Tulsi, the medicinal plant. We give the Tulsi plant as a memento to a guest to promote environmental consciousness. This act of ours is a humble try to connect tradition and environment together, to connect our students to the Ayurvedic heritage of India. Collection of fruits and flowers. Aware of the mutual relationship between the flora and fauna and animals and birds, we preserve the fruits of the trees for the birds and animals. The act is purely done to maintain the beautiful relationship between the ecology and living creatures like animals and birds. According to Indus University's policy regarding the use of fruits and flowers in this garden, the commercial use of these plants and fruits is strictly prohibited. They can only be used to feed the animals and birds, ensuring that their eating needs are met naturally. A temple of Lord Shiva. We have built a Lord Shiva temple on the university campus, where students and faculty members are welcome to perform Jal Abhishek. We believe that by participating in puja, students can remain connected to our traditions, which teaches us about oneness. This is a modest effort to involve students in a quest for ecological enrichment. Coming on to the technical practices we have built in Indus University. Water recharging wells. This system provides water during drought, helping reduce flooding in the low-lying areas, enabling groundwater level to be maintained and reducing dependency on wells. Due to the arrangement of multiple water recharging wells at Indus University, we are able to conserve a lot of underground water. Simultaneously, through this system, we ensure that water remains within the university and does not invade the rural space during heavy rainfalls. Sustainable energy. We have chosen to implement renewable energy in one of the buildings at Indus University to ensure a clean energy source. Given the high level of sunlight in the campus region, we have opted for photovoltaic solar panels to fulfill a portion of our energy needs. The solar PV power plant has been designed to operate autonomously, requiring no supervision. Since 2014, the system has been functioning smoothly. Vegetarian campus. Being aware of the role meat and its consumption plays in global warming, we try to promote vegetarianism among students. According to the report by IME, the meat producing industry is not only a big source of chlorofluorocarbons, but it also consumes a lot of water. About 4,000 to 20,000 liters of water is required to produce 1 kilogram of meat, while about 500 to 4,000 liters is required to produce 1 kilogram of wheat. Thus, vegetarianism is actively promoted in Indus University. We only serve vegetarian food in a campus. Electric vehicle recharge system. The invention of the electric vehicle is a marvel of humankind. Electric vehicles appears to be a blessing at the moment when we are dealing with pollution issues.
They are the best option when it comes to the reduction of the emission of greenhouse gases. The Government of India, recognizing the urgency to look at sustainable mobility solutions to reduce dependency on imported energy sources, to reduce greenhouse gas emission, to reduce the adverse impacts of transportation and global warming, has taken various steps, including the preparation of electric vehicles. To support the initiative, charging station has been installed at Indus University. Students being aware that the campus has a charging station, many students now bring EV vehicles. It is crucial to create an environment where students naturally join in celebrating and protecting the environment. Therefore, for the time being, our plan is to let them be. We ask them to park vehicles in non-green areas to protect the grass and plants. Sewage system. A sewage treatment plant, STP, is installed at Indus University. STPs are made to collect and handle waste from residential, business, agriculture, and industrial sources. It is employed at Indus to eliminate substances or contaminants that lower the quality of the water. When enzymes are added to sewage water, the waste in the sewage water can be digested and a fluid waste that is safe for the environment is created. The plants are watered with the filtered water, saving huge quantities of fresh water. LED lights. At Indus University, LED lights have been installed to save electricity. LED lights emit the same amount of light while using less watts of power. Using LED has allowed us to reduce our daily electricity costs by up to 4 or 5 times at university. Our vision: to introduce credit-based courses to students to make them aware about ecology through the demonstration of practices, Indian arts, agriculture, indigenous water harvesting system, and eco-consciousness. To explore themes like water harvesting system in Gujarat arid zone, agricultural engineering using and architectural engineering using the principles of Vastu Shastra, psychology, and education with an intent to form a database and encourage student involvement, publication, and exhibition to bring awareness among students and the general public. To preserve the ethnosphere and biosphere through the involvement of faculty members and students, further documenting community-based practices related to water harvesting system like stebbles of Gujarat and Varda, water management practice by the Maldhari community of Kutch. To create a public platform to document the best indigenous ecological practices throughout India, highlighting spiritual, environment-related folk tales and songs, understanding the relationship between animal and human in drought-prone regions like Kutch, Rajasthan, Bundelkhand, Maharashtra, etc. Finally, all I have to say on behalf of Indus University is, ecology is like a big ocean. If there is anything we can do, it would be to add a few water drops to the ocean. We will continue to contribute whatever we can to preserve its existence and maintain its dignity. Thank you.
Thank you so much, ma'am, for shedding light on the idea of interconnectivity or oneness in ecology. With this, we mark the end of our inaugural session and will move towards our next session in next 5 minutes. Thank you. Audience, I request all of you to remain seated. Faculty members, I request you. We are already running 30 minutes late, so just please come back within 2 or 3 minutes if you are leaving. Okay.
Now we request volunteers to please ask everyone to be here with us. We are going to start our session very soon. We are already running late, so please request them all. Faculty members whose names are registered for the parallel session, please go to the design studio. Thank you. Namaste. Good afternoon, everyone. Welcome to the first session of the Civil 20 Live Conference on Acharanam, Indic Wisdom for Sustainable Lifestyle. The theme of this session is Shastric Foundations of Ecological Consciousness. We all know that ecology is treasured across the length and breadth of this land. Every village in India has a sacred grove.
Every temple is associated with a river, a tree, or a natural space. All Indic scriptures, from the Rig Veda to the Bhagavad Gita, are replete with references to sacred ecology, the importance of the environment, and the management of natural resources. Therefore, there is no doubt that this ancient Indic wisdom has had a profound influence on the Indic worldview and is the basis for the Indic lifestyle, which is in harmony with nature. In view of this background, the session titled Shastric Foundations of Ecological Consciousness will discuss and document the connection between our scriptures and our ecological lifestyle. For example, the insights from Valmiki Ramayana and Shaivagam will be shared by the speakers. It will also explore the design of the temple and how temple microcosm influences universal macrocosm. The aim of this session is to understand how Indic wisdom can provide us with seed ideas to help save our environment at the time of ecological crisis. This session will address the following questions. The first, what makes us respect all forms of life? Second, why do we venerate our forest, trees, rivers, lakes, animals, and mountains? Third, what are the folk traditions that celebrate nature? And the last, how rituals and temple practices transform human consciousness. The key speakers for this session are Dr. T. S. Mukha Shivacharya, Dr. Rajneesh Mishra, and Dr. R. Rangan. I request all the three speakers to please occupy their place on the dais. Welcome to Indus University. Sir, you may occupy your place right there. No need to come over here. You can sit over there. Should we stand? Fine? Okay. Om Vande Gurum Shivam Sambam Dakshina Murtimabhyayam Yadbandanena Mandopi Vinded Guru Samanatam Ya Devi Sarva Bhuteshu Buddhi Rupena Samsthita Namastasyai 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 Namo Namaha Kadalagi Kasindu Kannir Malgi Oduvardamai Nannirikku Uippadam Vedam Nangirum Mei Porullavad Nathannamam Namashivayave Namasabhai Sabhavatibhyascha. My humble pranams to the satsang here. I would like to present the view from Shaiva Agamas, exactly what this universe is, and I would like to present a paper because it's around 12 to 15 minutes. I always thought this would be better. I will just present my paper here. Shiva Nishvasitam Vedaha Vagrupascha Shivagamaha. The vital breath of Lord Shiva are the Vedas. And the agamas are the words. Like when a person is breathing, we will not able to see him directly. Unless and until we see him directly, we will not able to know that he is there. So whatever the Lord Shiva has said, it is coming through his words called the agamas. Shiva Nishvasitam Vedaha Vagrupascha Shivagamaha. And only when we experience, like whatever we perceive, we experience, only by experience. Once we experience Lord Shiva, that the purpose of the birth, Shastra Shaivagama says, and
we have to reach Lord Shiva. Pati, Pashu, Pasha, Tritayam, Tripadarthaha. Pati, Pashu and Pasha. Pati is the Supreme Shiva. He is, Adi Madhyanta Nirmuktaha, Swabhava Vimalav Prabhu, Sarvajnaha Paripurnascha, Shivaha Jnayaha Shivagame. He is absolute. The Parashiva is called Paranada. From the Parashiva, who is always with the Parashakti. It's called Samaveta Shakti, inseparable. Like Ardhanarishwara, they are inseparable. Then comes another Shakti called Parabindu. From the Parabindu, the creation begins. From the Parabindu, next Nada and Bindu called Shiva Tattva and Shakti Tattva, then Sadashiva Tattva, then Ishvara Tattva and Shuddha Vidya Tattva, which are called as Shiva Tattvas. In general, all the 5 Tattvas are called Shiva Tattvas. Then Vidya Tattvas, we have 7. And the first one is the Maya Tattva. And Agamas talks about, Maya, Mahamaya and Maya. Parabindu and Bindu. And from this Maya Tattva, the world we are living begins. And that's why my topic I said from Maya Tattva to Priti Tattva, from the 31st Tattva to the first of the Tattva. So, Pati is Lord Shiva, Pashu is all the individual souls, all the souls. There are 84 lakhs of species. Human being is just one in it. And the prayers that are performed at the temple reaches every beings. And Pasha is whatever other than Pati and Pashu, everything Pasha, this ecology, everything, the environment, everything remains as Pasha. So Pati is the transcendental Shiva. When he acts, he does the 5-fold function of Panchakritya: creation, preservation, dissolution, wheeling and grace. The Pashu are the Atmanaha, those who are the reason for the creation of the world. Vishwa Nimittasya Praptam, for the Lord to create this world, he didn't have any reason for it. He gave this world for these Pashus to exhaust their karmas. Like in the Bhoga Karika, Bhoga is Sukha and Dukha. So the world itself has no use for itself, since it is Achaitanya, nor can the creator have any use for the world, since he is by definition without desire, nor can he do an action without utility. Therefore, by inference, the world must have been created to be of use to some other entity. This other entity is the Kshetrajna or the soul. Pasha is the bond. The difference between the bound soul and the liberated soul is only that of the limitations of the Pasha. One is dependent and the other is eternally conscious. The bonds, also called as Mala, are threefold. The first bond is original covering of the Anu, Anava Mala, exists beginninglessly. It shrinks the soul from being infinite to a finite bound entity. The other two are Karma and Maya that are manifested by the grace of the Pati for the benefit of the Pashu in order to remove the Anava Mala. The eternal power of Karma binds all worlds from Maya to Kala and helps the soul take bodies and various experiences. Maya is the entire manifested world. It gives the space and substrate for the soul to be embodied and to be liberated. Today we will see how the Siddhanta sees the world, what Shaivagamas talks about the Pati, Pashu and Pasha. The insights, this was the introduction. The insights, the way the Siddhanta sees the world is in the form of 36 tattvas from Pati to Prithvi tattva or the earth. As we saw earlier, the Paranada and Parabindu are different. The Shastra says Gandhe, Prithvi, Rase, Jalam, Rupe, Agni, Sparshe, Vayuhu, Shabde, Vyoma, Yetaha, Tanmatraha, Tamasahankare, Shrotra, Tvakri, Chakshu. It talks about, how, it goes back from the Prithvi Tattva to the uppermost Shiva Tattva. And here, Tadapi Akshubdha Rupe. Akshubdha Rupe means, that Maya which is not disturbed. To that Maya, above that Maya Tattva is Lord Parashiva. So Shaivagama talks about this world as the real world. It talks about different tattva, Shuddha Tattva, Visa, Shuddha Tattva. Shuddha and Ashuddha is called Mishra Bhuvana, which has Maya, Kala, Niyati, Kala, Vidya, Raga and Purusha. And Ashuddha Tattvas, which is called Atma Tattvas, Prakriti, Guna, Buddhi, Ahankara, Manas, Jnanendriya, Karmendriya, Tanmatra and Panchabhutas. All
belongs to Atma Tattva. Atma Tattva, Vidya Tattva and Shiva Tattva. There are three Tattvas. So these three Tattvas are there in the Shivalinga also. We do Atma Tattva, Brahma Bhaga, Vidya Tattva, Vishnu Bhaga, Shiva Tattva, Rudra Bhaga. So when we offer the praise to Lord Shiva, like when we water at the root, it reaches each and every part of the tree. As all the eminent speakers they spoke, we are going to the root. We are going to this Indic study because we want a solution by which not only the world we are living should be happy, but all the worlds around the universe should be happy. So this Prapancha, the Agamas talks about 224 bhuvanas also. In Chadadva, there are Bhuvanadva. All the bhuvanas are being worshipped in Lord Shivalinga in the form of Sadashiva Rupa. There are 36 tattvas. And regarding the tattvas, Apralayam Yat Tishtati Sarvesham Bhogadayi Bhutanam Tat Tattvam Iti Proktam. Na Sharira Ghatati Tattwamataha. It is not just whom we see today. We are talking about the nest, the source, the seed is being protected by the prayers performed at the temple. So the Acharya, what is the part of the Acharya? Achinoti, Acharati, Acharya Sthapayati. We have the Acharanam. So what is the part of the Acharya, the Adishaiva? He has to undergo the Diksha. It's called Acharya. It's called Shivacharya. The power of Siddhanta is to make the entire creation accessible to us. One of the powerful processes through which the entire creation is made accessible is Bhuta Shuddhi, that treats the human body as an intersection of the Pati, Pashu and Pasha. The microcosm, which is an instance of the macrocosm. Like this mic helps me to give, give the words in a bigger sound. Likewise, all the Pashus are connected to the Pati through the Acharya. Shuddhi is to cleanse. Bhuta denotes the body made up of 5 bhutas. The Sthula Sharira, Bhuta Shuddhi is the 5 kinds of Shuddhis required before the Adishaiva priest becomes eligible to perform Shiva Puja. They are respectively Atma Shuddhistu Purvam Syat. It starts like Atma Shuddhi, Sthana Shuddhi, Dravya Shuddhi, Mantra Shuddhi and Linga Shuddhi. Shivikaranam, by this process looks simple, but I always say a SIM card looks simple, but each and every design has its own meaning. A seed looks simple, but if you open a seed, it loses its meaning. So these rituals are so meaningful, it has to be practiced as it is. So the Pancha Shuddhis are there. So it talks about Prithvi Tattva. Maybe tomorrow's session we will have in a detail, because it talks about different colors for all the Pancha Bhutas. And we will see the evolutes are envisioned to devolve back into their superior tattva. As we saw the Prithvi Tattva, Gandhe, Prithvi, Rase, Jalam, it goes back to the source. Rase, Jalam goes back to the Gandha, Jala goes back into the Rasa, Agni goes back into the Rupa, likewise. The Sthula Sharira is made up of 5 bhutas. These are cleansed by using them against each other. The Paraspara Virodha Bhava. It's very interesting. The Bhuta Shuddhi, at one point of time, the Acharya forgets himself. Agama says, Chandrarka Nashane Puja. When the sun and the moon are destroyed, it means you are connected into it. It's called, you have to go into the Sushumna Nadi. Chandra and Surya are the Ida and Pingala Nadi. You should totally, Chandrarka Nashane means, you should totally be away from it. And that is Subramanya. Subramanya, Valli Devasena is Ida, Pingala and Sushumna. So once you start traveling in the Sushumna, you are able to reach the Dvadashanta, which is the abode of Lord Shiva. And Nataraja, who is dancing in all of us. What I speak, what you hear, every movement in this world is Lord Natesha's. This has been explained in the Agamas. So it talks about the Sthula Sharira. And Sthula Sharira, as we saw the 5 elements, it talks about, all the 5 elements, the Prithvi, Jala, Agni, Vayu and Akasha. It talks about the mandalas, the color, different colors for these Panchabhutas, and texture, whether it is Katina, whether it's hard, everything has been explained in the Agamas. And, the yantra, the symbol of these Panchabhutas are explained. It's like this, like you have an app, you have to just touch it. You talk about touch phone. You touch it and you're able to open it. So when we worship Lord Shiva in the form of Sadashiva, which comprise, the whole universe is comprised in the form of Sadashiva, Sakala and Nishkala.
So you are able to touch the whole universe. Whatever is offered there, the Nivedana, the Abhisheka, and Madam, she rightly said, even the students are, they're encouraged to do the Jala Abhisheka to Lord Shiva. It means they are doing, to the whole universe, like watering at the root. It talks about the Pancha Bhutas and how it can be balanced. So by performing the Bhuta Shuddhi, by performing the Archana, the 5 elements are being balanced. See, sometimes our software engineer, if he is unable to come to our home, what he does is he can operate from his place. We just have to give him, okay, we have to just accept his request, and he can access our system. Likewise, through the temple worship, the Acharya accesses all the worlds and he makes it happy, balanced. So the natural disasters can be warded off by the proper prayers at the temple. And benefits. The attitude is not just for temporary gain, but a far-sighted vision. Yavat bhavasya samshuddhihi tavat shaucham samachat. Bhavana mata santushtayi namaha parashakti. Bhavana is very important. That is more important in Agamas. It says the 5 elements and all the tattvas are accessed and purified. They are accessed. It can be felt when the Acharya does for the Prithvi Tattva. Om Hlam, he says the Hlam is the bija for the Prithvi Tattva. Lam is the Prithvi bija, and Ham is the bija of the soul. Ham is the bija of the soul. So what happens is Hlam means the Prithvi is being cleansed. Likewise for all the other elements also we have the bijas. So the challenge it also keeps the manifested world in order. That is what we are talking about. Sir was talking about, how much of pollution, how much, so many things are happening. This can be changed by the system if this Indic system is followed. So manifested world order, the right relationships in the right proportions, so that it keeps the world in balance and prevents natural calamities. And even, Mahadev was talking about even the food we intake. Like soya, he said, the soya milk. The soya, soya oil, it makes changes in the system also, with the relationships also. So here, by the prayers performed at the temple in the prescribed way, it can make changes in the whole environment, in the psychic changes also. So the challenge to every tradition is in demonstrating the efficacy of that path. Bhuta Shuddhi demonstrates to the initiate that not only does the Siddhanta give him the map of the universe, but that he can travel back up to the source using the Siddhanta map. Like a GPS, you just have to worship as per the Agamas. It says you have to do every minute details are given in the Agamas. How much water has to be used, how much Nivedana has to be given. Every minute details are given. So we can go to the source, Lord Shiva, in an easier and faster way. So we got into the flight. I didn't do any effort. My effort was nil, but I was able to come to Ahmedabad yesterday. So likewise, we just have to enter into this system by which we are taken to the right source. Every day he tests the truth, and every day he realizes the truth. Just as a student studies the anatomy of a body and sees it in practice, when he cuts open a body, the initiate is able to visualize the microcosmic universe by the prayers. The recommendations. Our Sanatana Dharma tradition is not for one, but for entire creation. It's called Sanatana, it's eternal. One family, one world, one future. Vasudhaiva Kutumbakam. The family is a family of all the souls, not just human beings, all the beings. And world is emanated from the Maya Tattva, as per the Shaivagamas, from the Maya Tattva. It is real. It is not unreal. It is real. What I'm seeing is real. So it says Maya Tattva. The future is both our current future in this mundane world, in this birth, and the ultimate moksha. So the philosophical truths should reach all people around the world for the appreciation and preservation of this ancient tradition. So this should reach our younger generations, because they have so much of questions. And I pray our learned audience that we have the technology also today. So we should reach each and every part of the world through about these great truths. Temples are the core of this tradition. Prayers at the temple should not be disturbed. Like, if the password is wrong, if you enter the password in a wrong password, you cannot enter. The prayers has to be done as it is. There should not be any kind of compromise there. So
should not be disturbed, because you know what is happening to us there back in Tamil Nadu. We cannot change the tradition ad hoc. It is programmed like the dot. I always say it is like .exe file. .exe file. Only the software engineer will know. Other people, the user will not know. But if you delete it, we cannot use the other files. So our shastras are like exe files. So without that, we cannot move away. It's like the source. It's like the tower. When we move away from the tower, we have to say hello, hello, hello. We cannot reach. So our shastras are nothing but our exe files. So like a exe file. It's more than that. Even a small change in that can change the entire nature of things. So we have to be very careful. It cannot be taken for granted. That we cannot fathom or predict. Those who administer the temples on behalf of the society should also know the basis of the tradition. So they are able to better serve the temples and the public without their personal bias. I cannot, delay the utsavas because everything is based on time. Everything is based on space. So everything has to be done as it is. When people are aware of the philosophical background, their journey is richer, faster, and meaningful. Therefore, everyone should aim to get Diksha in their own traditions, because Diksha, Diyate Kshiyate, it gives the Sadbhavana. So it's so important. So all the Pashus, in whichever tradition you are, you should get the Diksha, the traditional Acharya Parampara, to access the continuity of many thousands of years of wisdom, as well as keep themselves focused on the path without getting derailed in materialism. This itself will have a huge impact on both human wellness and as well as ecological wellness. And sixth is, once they understand the tattvas, they will realize that they are a part of everything and everything is part of them. So the oneness, abheda darshanam jnanam, takes place. So when we destroy what is outside, we destroy a part of ourselves as well. However, even when people are not aware of the agama, ensures that they are protected through the Parartha Puja at temples. For example, the Vyadhi Nashana Vidhi and Adbhuta Shanti Vidhi seeks to protect the whole world and prevent Sarvesham. It doesn't say Shaiva, Vaishnava, any particular, it says Sarvesham, for all the beings in the Vyadhi Nashana Vidhi. So we need to protect the practitioners, because they are the Agram Vrikshasya Rajanaham, Moolam Vrikshasya Pujakaha. The root has to be protected. So they have to be protected. They are charged with this for life, for universal benefit. We cannot change this dharma to a job. This is not a job, this is a way of life that has preserved our common human heritage for thousands of years, that should not be destroyed with political notions of appeasement. We need to foster further research on the Agama traditions. This is more important, so we can harness their knowledge treasures. There are several thousands of manuscripts that are yet to see the light. They need to be preserved, transcribed, edited, published, and translated into many languages for the people. The government of India should recognize the priceless value of this ancient integrated social system of temple rituals and philosophy for universal benefit, and take it globally. Like, we say we have this in our country. We have this in our country, come and watch. Like that, we have this tradition in our country, which is praying for the universe. This has to go through the government of India. And this is the right time, offering for the wellness of the whole world. Through embassies and soft power, this treasure should reach the world as India's eternal prayers for the entire universe, irrespective of the religion, nationality, or even whether they are human, plants, animals, or inanimate entities. And at last, there should be highest protection to strengthen and preserve the continuity of this ancient integrated system of universal prayers, as this is closely intertuned with all the nature and the multiverse, with the power to impact and influence it. I thank the audience, the learned scholars here for this opportunity, and thank you very much. Namaskaram. Jai Hind. Vande Mataram. Jai Hind. And I also thank this Punya Bhumi, and especially the Kshatriyas of the northern part of India. See, whatever we are able to come and speak, they say southern part of India, we have this rich in culture and everything, but this has been protected by all of you. We feel that this is the platform for us to give it back to all the Kshatriyas who have given their lives to protect whatever we have in the southern part of India. This has to come back, and this is the right beginning and the right place. Once again, congratulations to all of the organizers for this very big Sankalpa. Jai Hind. Vande Mataram.
when there is a call of Jai Hind from one side of the dais, I think there should be an echo from the other side as well. So as Sir says Jai Hind and Vande Mataram, I request the audience to also respond in the same note. So Jai Hind. That's great. So thank you so much, sir, for your very powerful and spiritual exposition, and for in such a lucid manner you explained to us the profound importance of Shastras. So now moving ahead, before that I would also like to share a brief introduction of Dr. Shanmukh Shivacharya. He's an experienced traditional Adishaiva religious priest and a Shaiv spiritual practitioner. He's also an academic scholar of Vedanta Shiromani. He holds masters and doctorate in Sanskrit with special focus on Shaivism. So thank you so much, sir. Before we move ahead, I have a small piece of information for our expert speakers. So for each speakers, we have a time limit of 15 minutes in accordance with this schedule. So to ensure the program is running on time, we shall have a timer over here. And after 15 minutes, there would be a sound of the bell. So, yeah, of course. So, moving on to our next speaker for today, Dr. Rajneesh Kumar Mishra ji. Thank you, sir. Dr. Rajneesh Kumar Mishra specializes in the theories of meaning and interpretation, both Indian and Western, in order to locate the interface domain of linguistics, literature, and philosophy. A member of the Shastra group at Center of Linguistics and English, JNU, which is producing English translations of select classical Sanskrit texts. He has presented research papers in various international seminars and published articles on Indian grammatical traditions, theories of meaning, and philosophy of language for several volumes. He has recently been awarded the Japanese Okita, I hope that's a Memorial Fellowship by the ICCR for 2 years for his significant research that has bearing on Indo-Japanese cultural contacts relation. And currently he is involved in the research on Kashmiri Shaiva philosophy and literary theory at the Center of Linguistics and English, School of Language, Literature and Culture, JNU, New Delhi. So I request you, sir, to... या सृष्टिः स्रष्टुराद्या वहति विधियुतं या हविर्या च होत्री ये द्वे कालं विधत्तः श्रुतिविषयगुणा या स्थिता व्याप्य विश्वं यामाहुः सर्वबीजप्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिः प्रपन्नस्तनुभिर्वतु वस्ताभिरिष्टाभिरीशः. My pranam to all of you, acharyas on the dais and very learned audience, great scholars. I feel really privileged to be here, not just to share whatever I have been thinking and I'm going to share with you, but it's a great learning opportunity for me also. So in that way, I feel myself very much fortunate that I have been invited in this seminar. This Mangalacharan, a kind of Mangalacharan, is given in the beginning of a very famous play, Abhigyana Shakuntalam by Kalidas. And Shiva is worshipped in these 8 forms. And what are these 8 forms? Jal, या सृष्टि सृष्टुराद्या, सृष्टि की पहली सृष्टि जल है. अभी हम सुन भी रहे थे विद्वान वक्ताओं को. और इसके साथ अग्नि, फिर
यजमान, सूर्य, चंद्रमा, आकाश, पृथ्वी और वायु। इन चीज़ों को आप देखेंगे तो ये भारतीय साहित्य हो, दर्शन हो, अध्यात्म हो, विज्ञान हो, इन सब में एक अद्भुत अन्विति है, तारतम्य है, इंटीग्रिटी है। और इसलिए इस देश ने कभी विज्ञान, धर्म, अध्यात्म को अलग अलग समझा नहीं। ऐसी कोई सी भी बात नहीं होगी जो अवैज्ञानिक हो और धर्म से युक्त हो, या कोई अधार्मिक बात हो और वो विज्ञान द्वारा समर्थित हो। तो एक अद्भुत इंटीग्रिटी इस नॉलेज ट्रेडिशन की रही है। इसलिए दर्शन, अध्यात्म, विज्ञान, तंत्र आदि इन सभी विधाओं में आप एक प्रकार से देखेंगे कि एक कॉमन थ्रेड प्रिवेल करता है इन सब में। जिस विषय पर मैं चर्चा करना चाह रहा हूँ वो थोड़ा मैं एथिकल डायमेंशन लेकर के इस पूरे विषय को प्रस्तुत करना चाहता हूँ। आई थिंक we are living in an age of value reversal. This is the age of value reversal. ये हम पर निर्भर करता है कि वैल्यू किसके साथ हम अटैच करते हैं, किन चीज़ों को हम वैल्यू समझते हैं। कुछ चीज़ों की चर्चा में एक दो व्याख्यान जो यहाँ मैंने इसी यूनिवर्सिटी के लिए रिकॉर्ड किए हैं उसमें मैंने चर्चा की है, तो थोड़ा उसका विषय लेते हुए मैं अपनी बात आगे रखना चाहता हूँ। एक तो देखें कि श्रेय और प्रिय, ये कठोपनिषद का बहुत प्रसिद्ध डिबेट है या एक पक्ष है। यम नचिकेता संवाद में ये बातें आती हैं। तो श्रेय क्या है और प्रिय क्या है? श्रेय वैल्यू है, उसकी जगह पर आज हम क्या कर रहे हैं, प्रिय को वैल्यू समझते हैं, है ना। तो इसके मतलब जो हमें अच्छा लगता है और जो होना चाहिए, इन दोनों में शायद हम ये भेद भूल रहे हैं, या श्रेय के स्थान पर हम प्रिय को स्थापित करने की चेष्टा कर रहे हैं। और हर बार पश्चिम को दोष देना भी ठीक नहीं। हमारी अपनी बुद्धि भी तो होनी चाहिए कि किन चीज़ों पर हम विचार करें कि ना करें। सदैव पश्चिम का अनुसरण करते हुए पश्चिम को ही भला बुरा कहते कहते तो थक गए। अब चीज़ों को ज़रा रिफ्रेश बटन दबाना पड़ेगा, है ना, फिर से विचार करना पड़ेगा। अभी हम जितनी बातें अपने शास्त्रों से कहते हैं, यह अच्छा तो नहीं लगता बोलना, लेकिन शायद सच भी है, इसलिए बोलना चाहिए। अपने लोगों के बीच नहीं बोलेंगे तो कहाँ बोलेंगे, है ना। जितनी बातें भी हम कहते हैं अपने शास्त्रों से, वेद, उपनिषद आदि ऐसे ग्रंथों से, हम उतनी ही बातें सामने लाते हैं जितना पश्चिम एस्टैब्लिश करता है। उसके समर्थन में अपने उद्धरणों को हम प्रस्तुत करते हैं। ये ग्रंथ हमारे हैं, हमें क्यों इतना आत्मविश्वास अपने ऊपर नहीं है कि हम इनकी स्थापनाओं को, इनके सिद्धांतों को लेकर के आगे चलें और अपने लिए अपने तंत्रों को विकसित करें। विकास के जो मॉडल होते हैं वो हम डेवलप करें, जो हम पहले करते आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो समाप्त हो गया हो, वो कड़ी टूट गई हो, लेकिन जिसको आजकल लोगों ने मेन स्ट्रीम समझा हुआ है, उससे उसको बाहर किया हुआ है, उन सारी चीज़ों को। तो चीज़ें हैं, नथिंग इज लॉस्ट। पाणिनि ने एक सूत्र लिखा था, अदर्शनम लोपः। इसका मतलब यह है कि दैट विच इज नॉन विजिबल, वो एक अलग प्रसंग में है, ध्वनि विज्ञान में आप सभी जानते होंगे, लेकिन दैट विच इज नॉन विजिबल इज कॉल्ड लोप. Lope doesn't mean it is no longer existing. It is very much there. Things go in hibernation mode sometimes. So this is our duty, our responsibility to bring them back and associate with the present situations. So श्रेय और प्रिय का ये द्वंद्व हमारे सामने है। और हम जानते हैं शायद जिसको हम धर्म कहते हैं वो प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेंस और डेवलपमेंट दोनों है। धर्म हमारा एक शब्द का अनलिखा संविधान है इस देश का, और हम सभी यह जानते हैं कि क्या धर्म है और अधर्म। प्रकृति ने इतना अन्याय हमारे साथ नहीं किया है, हम करते क्या हैं वो अलग बात है,
लेकिन हमारे भीतर यह चेतना जरूर है कि क्या धर्म होता है, क्या अधर्म होता है। दुर्योधन जैसी स्थिति हो जाती है तो बात अलग है, वो उससे निकल नहीं पा रहा है इस द्वंद्व से, है ना। बट ईच एंड एवरी वन नोज व्हाट इज धर्म एंड व्हाट इज अधर्म, है ना। तो श्रेय क्या है और प्रिय क्या है ये भी हम जानते हैं, लेकिन किस ओर किस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, एंड दे आर टू डिफरेंट मोड्स मूविंग इन टू डिफरेंट अपोजिट डायरेक्शंस। तो ये दोनों एक बार यात्रा दूसरी तरफ शुरू हुई तो आवश्यक नहीं है कभी भी, या बहुत कम संभावना है कि वो लौट करके श्रेय की तरफ आए। इसी तरह से प्रवृत्ति और निवृत्ति की बात आती है, उसमें भी देखिए यही रिवर्सल काम करता है। निवृत्ति से अधिक प्रवृत्ति, त्याग से अधिक संग्रह। त्याग वाज द वैल्यू, एब्स्टिनेंस वाज द वैल्यू, कंजम्पशन नहीं। और जितनी चीजें हम आज चर्चा कर रहे हैं शायद इसी इम्बैलेंस के कारण हैं। बृहदारण्यक उपनिषद में आप जानते हैं एक बड़ी सुंदर कथा आती है कि ये तीनों ही ब्रह्मा के पास जाते हैं, देवता, असुर और मनुष्य, और वहाँ कुछ समय बीतने के बाद जब उनका वहाँ वास पूरा हो जाता है तो ब्रह्मा से उपदेश प्राप्त करते हैं। ब्रह्मा केवल कहते हैं द का उच्चारण करते हैं और फिर पूछते हैं कि समझ गए या नहीं इन तीनों से। देखिए यही अंतर है प्रकृति और संस्कृति का। संस्कृति वैसे ठीक पता नहीं कितना है शब्द, हमने इसको कल्चर का अनुवाद बनाया हुआ है आजकल, लेकिन संस्कृति, जो संस्कृत के विद्वान हैं वो जानते हैं संस्कृत वाङ्मय में बहुप्रयुक्त शब्द नहीं है, बहुत कम जगहों पर इसका प्रयोग है, लेकिन व्याकरण सम्मत शब्द है, साधु शब्द है। तो प्रकृति तो वह है जो प्रदत्त है, संस्कृति हमें कुछ और प्रेरित करती है परिष्कार की, निर्मित करने की, उसमें हमारी चेष्टाएं भी, आवर एफर्ट्स आर ऑल्सो इन्वॉल्व्ड। तो देखिए क्या कह रहे हैं कि एक ही वर्ण का उच्चारण किया ब्रह्मा ने, द का, द सबके लिए, और पूछा कि आप समझ गए? तो देवताओं ने कहा कि पितामह हम समझ गए, क्योंकि हमारी प्रवृत्ति, देवताओं की प्रवृत्ति भोगोन्मुख होती है, इसलिए हमारे लिए ये प्रकृति है, इसलिए हमारे लिए उपदेश है कि हम इस संयम करें, दमन करें, इसका, इस प्रवृत्ति का दमन करें, है ना। उसी तरह से असुरों के ये कहा गया कि असुरों की प्रवृत्ति है हिंसा की, तो वो दया भाव करें, द से दया का अर्थ है। और मनुष्य के लिए क्या है कि मनुष्य संग्रह करता रहता है। अभी चर्चा हुई कि हम अपनी आवश्यकता से ज़्यादा संग्रह करते हैं भगवद गीता में भी, तो एक प्रकार की कुचेष्टा है और दंड के भागी होंगे आदि। तो मनुष्य ने कहा कि हम जीवन भर संग्रह करते हैं, हमारे लिए उपदेश है कि हम दान करें, यही सर्वोत्तम है। दान वैल्यू है हमारे यहाँ, संग्रह नहीं। त्याग वैल्यू है, संग्रह नहीं। और संग्रह भी है तो लोक संग्रह है, लोक के लिए ये वैल्यू है, सोशल वेलफेयर के लिए। और आप जानते हैं कि एक दार्शनिक प्री-सोक्रेटिस या उस टाइम का है वो, जिसको हम कहते हैं प्रोटैगोरस, उसका कहना था कि मैन इज मेजर ऑफ द थिंग्स, मैन इज मेजर ऑफ द थिंग्स। और बाद में जो सेमेटिक सिविलाइजेशंस बढ़ी, उनके मूल में ये बातें देखने को मिलती हैं। मैन सेंटर्ड थिंकिंग या सोसाइटी या सिविलाइजेशन उन्होंने क्रिएट की। इंडिया हैज़ नेवर बीन लाइक दिस। इंडियन विजन इज कॉस्मोलॉजिकल, मनुष्य उसके केंद्र में नहीं है। इसलिए हम ये चर्चा कर सकते हैं कि हम जिसको आजकल इकोलॉजी कह रहे हैं, वो एक दूसरे के साथ अन्वित होकर के जीने का नाम है, न कि एक को केंद्र में रख करके, एक को प्रधान बना करके और शेष को गौण बना देने का नाम। और उस इम्बैलेंस के चलते जो कठिनाइयाँ हुई हैं वो हमें इस तरह की संगोष्ठियों तक ले आई हैं, जिस पर आज हम चर्चा करने के लिए विवश हैं, और हमारा अपना अस्तित्व कहीं संकट में दिखता है। तो ये मैन सेंटर्ड सिविलाइजेशन नहीं है, कल्चर नहीं है। जैसे कि बृहदारण्यक उपनिषद में कहते हैं, एषा आत्मा समः पुलिशिना समो मशकेन समो नागेन सम एभिस्त्रिभिर्लोके समो अनेन सर्वेण, कि यही आत्मा सब में है, एक चींटी में भी है, एक हाथी में भी है,
ऐसा नहीं कि एक हाथी में बड़ा आत्मा तो होता है और चींटी में छोटा, ऐसा नहीं। तो इसके आधार पर इस समत्व का प्रतिपादन किया गया है और सबके लिए यह समान रूप से विद्यमान है। एक चींटी को भी उतना ही अधिकार है जितना कि एक बड़े जीव को, और इस तरह से ये पूरी जीवन दृष्टि हमारी चलती है। इन सबके बीच आप देखेंगे कि एक इकोलॉजी ऑफ थॉट भी है इस कल्चर में। ये पैगन कल्चर है अभी भी। भारत शायद एकमात्र विश्व में ऐसा कल्चर है या ऐसी सभ्यता है जिसको हम पैगन सभ्यता आज भी कह सकते हैं। और उसकी विशेषता ही यही है कि इसमें मल्टीप्लिसिटी, डाइवर्सिटी एक नॉर्म है। आजकल जिस अर्थ में हम डाइवर्सिटी या ये मल्टीप्लिसिटी की चर्चा करते हैं, उसका मतलब है कि हर चीज़ खंड खंड में है, अलग अलग है। दिस इज़ नॉट डाइवर्सिटी। ये डाइवर्सिटी भारत का नहीं है। ये तो हमने एक पॉलिटिकल डिस्कोर्स में ये सब चीज़ें बन गई हमारे यहाँ। डाइवर्सिटी कहने का मतलब है कि जहाँ वन मैनिफेस्ट्स इनटू मेनी एंड मेनी कैन बी हार्मोनाइज्ड इनटू वन, यू नो, ये हमारा अद्वैत चिंतन है, ये हमारी यूनिटी है, इसको कहते हैं डाइवर्सिटी। और इसलिए एक एक अवयव इस प्रकृति का एक दूसरे से अन्वित होने के कारण जीवंत और सप्राण है। नहीं तो अलग अलग खंडित कर देंगे तो ये सारी जितने कंपोनेंट्स हैं दे ऑल विल वैनिश और दैट विल क्रिएट ए ग्रेटर क्राइसिस। तो इसलिए अब प्रश्न ये है कि सिद्धांत तो हमारे यहाँ बहुत है। मैं महर्षि पतंजलि की तरफ ले जाना चाहता हूँ। महाभाष्य में जो कह रहे हैं शायद उसके अनुसार हमें कुछ सोचने का अवसर मिलेगा। कहते हैं कि चतुर्भिश्च प्रकारे विद्यो उपयुक्ता भवति। 4 प्रकार से कोई विद्या उपयुक्त बनती है। कौन कौन से तरीके हैं? आगम कालेन, जब आप आचार्य से सीखते हैं उसको, एक तो वह होता है चरण, उसका स्टेज। स्वाध्याय कालेन, दूसरा है कि जो सीखा है उस पर निरंतर हम रिफ्लेक्ट करें, इंट्रोस्पेक्शन करें, मेडिटेट करें उस पर। स्वाध्याय कालेन। प्रवचन कालेन, जब हम उसको किसी और को भी प्रदान करते हैं, उसको और डिसेमिनेट करते हैं। और सबसे बड़ी बात है व्यवहार कालेन इति, उसका व्यवहार हो हमारे जीवन में भी हो। केवल हम सिद्धांत तक सीमित न रह जाएं, कि हम अपने जीवन में भी उसको व्यवहार में ले आएं। तो शायद इस प्रकार का जो संकट है इकोलॉजी का और प्रकृति का और दूसरी चीज़ों का, वो शायद उस पर निश्चय ही हम कोई उसका निष्कर्ष प्राप्त कर सकेंगे और हम आगे के लिए अपने लिए मार्ग ढूंढ पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। शायद समय समाप्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। Moving ahead, our third speaker for the first session is Dr. R. Rangan. Dr. R. Rangan was awarded Yoga Vidya Varidhi, a doctoral degree in yoga from S. Vyasa University, Bangalore. He is a master of Vedas, Vedic Sanskrit, Upanishads and epics. His main inspiration is Sri Ram, whom he calls as his friend, philosopher and guide. He is an expert in narrating Ramayana in a beautiful way, which enthralls thousands of people. Dr. Rangan's admirers include scientists, sociologists, psychologists, spiritualists, and philanthropists, and all of us at Indus University. Dr. Rangan is the founder or president of Web of Life Makers, which spreads the values of Vedas and usage of Vedic values in everyday life. With these words, I invite you, sir, to let us know your insights on the subject. ज्ञानेन आकाशकल्पेन धर्मान् योगगणोपमान् ज्ञेया भेदेन सम्बुद्धः तं वन्दे द्विपदाम्बरम्। Respected aspirants of nature,
My humble pranams to all of you. Among the various practices and rituals of our Indian culture, the fire ritual, which we call as yajna or we may call as Agnihotra or Agnikarya, is one of the oldest rituals. Rigveda is the oldest available literature of Indian culture and in the world. The Veda starts with this ritual, Agni Mile Purohitam. The whole of the Veda, Rig, Yajus, Sama, all are getting resonated with this fire ritual. So let us explore few things regarding this. Even the Rigveda says this is the prime ritual among all rituals. Shakamayam dhumam arat apashyam vishuvata parayena varena ukshanam prishnim apachanta viraha tani dharmani prathamanyasam. It's a beautiful mantra. First mandala, 164th sukta, 43rd mantra. Shakamayam dhumam means the smoke created from cow dung. I see this everywhere. Arat apashyam. I understand by this effect the cause. This is a seed of Nyaya Shastra. Dhumo jnanam vibhavasoho. Vishuvata parayena varena. So here the effect is smoke and cause is the ritual fire. By this, the great sages are culturing the mother earth. Here Prishni is earth. Prishnim apachanta viraha. They are culturing the mother earth. These are the prime dharmas. Tani dharmani prathamani asanna. Interestingly, that which we find Tani dharmani prathamani asanna in the first mandala of Rigveda is again repeated in the 10th mandala for some other thing. Tani dharmani prathamani asanna is for cosmic creation, which indicates that cosmic creation has something to do with this simple fire ritual. So this fire ritual includes cow dung from a deshi cow, and it's a smoke, and also the fire sticks, and oblation, ghee or clarified butter, so on and so forth. With all these things, they purified the nature. For this, there are hundreds of scientific papers available nowadays. I'm not going into it. What I want to focus is that they knew that purified the nature. It's not just a ritual or worship. It is also a ritual and worship, but it's a technology. Okay, nature purifying technology or rain making technology, you may call it as. There are several mantras in the Vedas which talk about how this Agni Karyam, how this fire ritual purifies the nature. Take for example in Taittiriya Samhita, Krishna Yajurveda, Asita Varnaha Harayaha Suparnaha Miho Vasana Divam Utpatanti Ta'ava Vrutram Sadanani Krutwadit Prithvi Gritair Vyudyate. This is from the 3rd Kanda of Krishna Yajurveda. How the fire smoke gets emanated and pervades in the atmosphere, bringing the clouds together and make the clouds to shower to the world. Ta'ava vrutram sadanani krutva. It creates the water, it creates raining, and how it purifies the what we call now as ozone layer, right? Purifies the ozone layer. Very famous mantra. Bhumim parjanya jinvanti divam jinvanti agnayaha. Parjanyaha bhumim jinvanti. The raining is strengthening the earth, and fire, the ritual fire, is strengthening the sky. This is how the Veda says. Therefore, they all knew, those who were performing this fire rituals, they all knew very well that they are purifying the nature through this. Now let us let us see about some sociological aspects of this ritual.
Even the word yajna has three meanings. I don't want to go into all three meanings. One meaning, sangatikarana, unifying. Unifying the beings, unifying the concepts. Okay. Another meaning, as he said, dana. Yaja dane, yaja sangatikarane, yaja deva pujayam. These are the three meanings. So, bringing together is a very interesting meaning. It includes caring, sharing. This yajna. First, long back, they all did this ritual. They had the attitude of purifying the nature. Then after that, after offering oblation to the ritual fire, the remain, we may call prasada. On those days, it may be, is my guess, barbecue. Okay, from that ritual, they took and they offered it to, first of all, the guests, not to themselves. Somebody said, some scholar said here, in Maharashtra, they come out and see whether atithis are coming. And in fact, this is what we see almost, I think, throughout India. Okay, we come out and see whether atithis are coming, unexpected guests. Somebody translated atithi as unexpected guest. Okay, so they are coming. So that's very interesting. So first to the ritual fire to purify the nature, and then to the guest who is coming to our house. That's very interesting. Then only, as a third thing, we consume. We are not immediately jumping. Here I wish to quote a shloka, a verse from Raghuvamsha. The cow Nandini, she was pleased with King Dilipa due to his service, and then Nandini cow says to Dilipa, "O king, you can have my milk." After a long time of service, she is pleased and she says, "Come on, milk me and have this milk." At that time, Dilipa, a very great emperor, he was not excited. He says to Nandini, only by having that milk or only by giving this milk to his wife, they are going to have a child. That is why they are serving this Nandini. But the king is telling, Vatsasya homartha videscha sesham risheranughyam adigam yamataha audhasya michami tavopabhoktum shashtam samurvyai varakshitayaha. This is second chapter. First, may the calf have the milk. Dilipa's attitude. May the calf have the milk first. Then, remaining, I will take a part of milk for my guru's Agnihotra, Maharshi Vasishtha. After getting permission from Vasishtha, whatever he gives, let me have the remaining milk for us. After telling this, he gives a simile. Shashtamsam urvya iva rakshitayaha. As we take the sixth part of tax from the ruling regions. That's a very interesting thing. All others go to the country or the ruled region. Okay. Shashtamsam urvya iva rakshitaya. That's a very interesting. So the continuity. Some scholars said the Rigvedic statement, Kevalagaha bhavati kevaladi. One should not eat all alone, should share. This Rigvedic statement, we can see the practice of this Rigvedic statement throughout India. It's a pan-Indian practice up to our time. In the same way, it is continuous. First in the Veda, the Vedic ritual, there after offering to the nature, we are seeing whether atithis are coming. Then that comes to this context. While Dilipa wants to take milk from the mother cow, he says that first of all, let Guru take, let calf take. After this, he is comparing this to his own job. Sixth part of tax we consume generally. So these are, here you see a continuation from the ritual fire to consumption of milk and then tax collection. In all these things we see this. It's a very interesting thing. Let us have a glimpse of a psychological interpretation of this ritual fire now.
because every god in the Rig Veda or in the Vedas has at least two meanings, one exoteric, another one esoteric. So the fire in the psychological realm, the fire is the passion, the will. This is what the Veda itself says. Even Shankaracharya is commenting in Ishavasya Upanishad, Krato Smara. There he comments Krato as passion or will. And Agni is described in the first sukta of Rig Veda as Kavikratu. Agnir Hota Kavikratuhu Satyas Chitrasravastamaha. That is how the Veda says. Kavikratu means the passion of the seer. Kavi means seer. Kavi in popular Sanskrit is poet, but in the Veda, Kavi means seer. So, he is Agni Bhagavan is a seer. Sorry, Agni Bhagavan is the passion of seer. What can be the passion of seer? Who is seer? Seer is the one who sees beyond rag or dvesh. Seer is the he is the one who goes beyond strong attachment and strong hatred. So such a kind of seer, for him, what can be his passion? His passion is nothing but the universal welfare, passion of universal welfare, working for universal welfare, vision and mission behind universal welfare, and the ritual fire represents that throughout the Vedic literature. This is what we see. Growing the passion of universal welfare is the internal yajna, and based on this only, 5 Mahayajnas have come. You may be familiar with. Five Mahayajnas, you may be knowing that. That is Deva Yajna, Pitru Yajna, Manushya Yajna, Brahma Yajna, Manushya Yajna, and finally Bhuta Yajna. Deva Yajna means worship of gods, that is ritual fire worship, cleansing the nature, that is Deva Yajna. Pitru Yajna means taking care of our parents, taking care of our children, and worshipping our ancestors as we do in Sraddha and Tarpan. And Brahma Yajna is worshipping our sages. How? By learning their scriptures, by learning their contributions, that is Brahma Yajna. And then Manushya Yajna is social service, or first of all hospitality to the guests. Okay, in this way the ritual fire is spread. The word Yajna is not narrowed. Yajna is taken to all these things. Manushya Yajna. Finally Bhuta Yajna. Bhuta Yajna means all non-human species, taking care of all non-human species. So let me conclude with a very interesting thing, what we find in Tamil Nadu. Hope that it is pan-Indian. While a mother is feeding a child, what she says? She says, in Tamil, she says, Amma koruva, Appa koruva, Tata koruva. That's how she says. It means a portion for God, another portion for our ancestors, another portion for your father, another portion for mother, another portion for friends, another portion for crow, another portion for dog, and another portion for this baby. This is a simple song in Tamil. Okay, this shows the 5 Mahayajnas. Every mother in India is teaching her child Pancha Mahayajnas, 5 Mahayajnas in this way. Not only she is teaching, not just teaching, this child needs it, because the child is not opening his mouth if others are not eating. So in Sanskrit, dharma means nature. Okay, see the nature of the child. The child can eat only with others, and this is what we see. So that this Pancha Mahayajna is taught to the child. And what I feel is, with this Pancha Mahayajna, in Yajna, the whole Sanatana Dharma is inherent. And this Pancha Mahayajna can be the definition for Sanatana Dharma. And mother is teaching this Pancha Mahayajna to the child. This is what we see. Dhanyavada.
I thank all the eminent speakers for enlightening us on the profound importance and deep impact of Shastras. We need to go back to our Shastras to implement most impactful ecological practices in the 21st century. Thank you so much, sir. It was indeed pleasure having you over here. Now, we move on to the next phase of the session, which is the open discussion round, wherein all the experts shall engage in a discussion on the theme of session 1, that is Shastric Foundation of Ecological Consciousness. So these sessions are designed in two parts. First part is 60 minutes. We are going to hear experts. So we have gone through that. And 30 minutes, because this is about policy making, guidelines and deliberation. So we are keeping it open discussion between experts. So we request all experts to ask questions to our panelists over here, and not only asking questions but engaging in whatever discussion regarding this topic they would like to have. Of course, keeping in mind the ultimate objective of recommendation and policy making in mind. Thank you. Or Bhagwati Prakash ji to initiate this conversation. Maybe can we have? So at the outset, I convey my deep respect that you have very meticulously explained Shaivism and epics and Ramayana and all these things. Now, problem is that our scriptures have many connotations. Even say, for example, when we talk of Vaisheshik Darshan, on the one hand, it talks of salvation and all these things. So, like Yato Abhyudaya Nishaya Siddhi Sadharma. These days, the whole of the Vaisheshik Darshan is being interpreted on the basis of quantum mechanics. When we say that Yato Abhyudaya Nishaya Siddhi Dharma, people say this is the principle of minimum energy state, that a substance can go to any energized state. Its ultimate state would be, or the equilibrium state would be, where it consumes minimum energy. So today we have a severe dilemma. How to interpret our scriptures, because they have several connotations. That is one thing. Another thing is just timing of our these scriptures. For example, you mentioned of epic Ramayana. We have to study Ramayana from one point of view, that it talks of a lot of ecological factors. For example, Ramayana talk in two places. Valmiki ji has mentioned 4-tusked mammoths, 4 दांत वाले हाथियों का वर्णन 2 स्थानों पे किया. Modern archaeology says that 4-tusked mammoths have become extinct 1 million years ago. 10 लाख साल पहले वो विलुप्त हो गए. It means this is our connotation that Treta Yuga also we talk that 8,69,000 years ago, because Dwapar has lapsed. So how to reinterpret all these scriptures in light of modern scientific revelations? Problem is most of the people having expertise in scriptures, they are not pursuing the modern scientific researches. And those who are involved in deep researches, they are not aware what is there in our scriptures. So how can we just correlate the two? Namaskaram. So what I understood is, like, based upon the time, it talks about different systems. Like now it is said in this Shastras as this, in this Shastras, this has taken place at this point of time. So which we have to believe.
So what I have been taught, and what I have, like the thought came to me when I was young about these, like they say Ramayana took place at this place, and like this Samhara took place at this point of time. So it may differ, but how we should understand is, this is 28th Kali Yuga. Ashtavimshatitame Kali Yuga, 28th Kali Yuga. So 4,32,000 years, 8,64,000 years, 12,96,000 years, 17,28,000 years. Likewise, the yugas changes. So now we talk about this Kali Yuga, and in the previous Kali Yuga also it could have taken place. Even that could have been recorded, and we could have got that. So that we should go with that belief. My query is that on the one hand we can interpret our Vaisheshik darshan for salvation. On the other hand, people are interpreting on the basis of quantum mechanics. Likewise in Valmiki Ramayana also, when we talk of archaeology and all these things. So actually our scriptures are having multifaceted dimensions, where one has to interpret on the basis of archaeology, on the basis of quantum mechanics, on the basis of artificial intelligence. So today we find that many such interpretations can be drawn. So how can we find a common convergence of various kinds of interpretations, that is scientific interpretations as well as traditional interpretations? How can we correlate the two? It would be difficult to bring a common thing in it, because loko bhinna ruchihi. So you should take into, like you see in this form, I will believe in it. So I see as a philosophical, let me go accordingly, because like we cannot convince, or we cannot make everyone happy, in the sense, because I cannot understand quantum physics. So if other person is expert in quantum physics, he understands in that. For example, Shivalinga, like I say, like Shivalinga, it's just Brahma Bhaga. Brahma Bhaga is square. Then Vishnu Bhaga is Ashtakshari, octagonal. You know, it turns. Then Rudra Bhaga is a circle. You just go around. So I see as, movement of atoms. The movement of atom 4 becomes 8. 8 becomes circular. This is I see. But my guru, how he sees is, he will see Shivalinga as Shivalinga. Shivalinga is Sadashiva. Sadashiva Tattva. Isha Anatat Purusha Aghora Vamadeva Sadhyo Jata. So it is seen like that. So like formless is seen as form. Weightless is carrying of this weight. See, I don't have weight. In the sense, I have the physical weight, but the soul is weightless. I do not have a form. Real form, I'm telling you. I have a form now, but real form is formless. Likewise, Devatas also, even Shastras also, we should interpret in whichever way, as far as it helps you in understanding more, or it helps you in developing your bhakti towards the Lord. That is how I see, sir. Because we cannot bring everyone into a common, it may be difficult, sir. If I have the taste, basically I'm a science student. So when you talk about science and spiritualism, I have the taste. But my guru, he always says, this Agamas has said this, so fine. As far as I'm devoted, as far as I'm doing my prayers to Shivalinga in that form, I would say it would be better, sir. Yeah, this has been one of the very best sessions. I have to admit that I'm a scientist. In other words, I'm the only unseeded player in this entire tournament. You're all seeded players. Okay. With that, I do have some interesting remarks just for the benefit of writing recommendations, if you like. Vedas are so profound. I would be preaching to the choir if I speak more about Vedas. You're all experts. 20th century, 21st century, these are the era, these are the times of evidence-based approach for everything, for energy, for treating diseases, for water conservation, name it. Every scientist, non-scientist is really interested in asking, give me the evidence. Give me the evidence. Yeah, it's all, we live in evidence-based economy. Knowledge-based economy is all about evidence. We can't just say that the economy is very powerful without providing the evidence. Likewise, economy is going down without providing the evidence. So the Vedic science, so what I'm trying to say, in Vedas, there are references to atoms,
but those are embedded in shlokas. To distill all of that knowledge to the general public would mean that the general public, or the entire general public, India, perhaps globally, need an education in Vedas. That is perhaps a tall expectation. So how do we connect this Vedic knowledge through Vedic science and making Vedas more toward evidence-based approach? What I feel is that many young students can be encouraged to learn Sanskrit and Vedic language, Vedic Chandasa, and also in a also can be trained. These students can be trained to think in a scientific way and to publish the papers to show, not to show, publish the papers to present how the scientific insights are found in the Vedas and how the Vedas can be helpful to the future science. Regarding that, if there are many scientific papers which can come, by that this can help Indian knowledge system. This can help how these Vedic ideas, Vedic concepts can be brought into the education syllabus. So fundamentally, we need to publish a lot of scientific papers, encouraging a lot of youngsters regarding this. This is what I feel. Can I have a quick follow-up? May I? Yes. Yeah. One simple follow-up is that I think we need to think outside the box. We as scientists, we collaborate. If I don't know a certain field of work, if I'm working in biology, if I needed some principles of physics, I will go and knock the door of a physicist and start collaborations. I think every scientist, in my opinion, needs to start thinking, let me start collaborating with a Vedic specialist. That's the only way I feel that we can build this bridge. Just as an example, Sushruta has said that they used minerals and herbal cocktail to produce disease-curing medicines during the Vedic times. So in our own small scientific approach, we reverse engineer that. We used very similar minerals, very similar herbs, and then reconnected what Sushruta was telling, that their medical approach was atom-based. So we can show the atoms to the public. So this is just one small example. So by working by physicists, biologists, chemists, regardless of what scientific discipline they work, I think it is important, it is imperative in my opinion, that we establish this collaboration for the near and long term. No, I think sir has already answered those. And whatever you have asked, it relates to the greater issues of epistemology. You know, what are the means involved, how we are going to arrive at a certain kind of conclusion. And this has been widely discussed, not only in one particular philosophical systems, but in almost all. And there is a tendency that, okay, perception, inference, verbal testimony, etc., all these are the various means of knowledge. But Indian mind doesn't stop there in the framework of that epistemology. It transcends it also. That it is very much stated that whatever is not explained through these various epistemological frameworks, that doesn't mean the reality is not beyond that. You know, whatever is presented through these various means, it is fine. Maybe
that is also doubtful, because we are looking at reality through something, through perception, through inference, through verbal testimony and other things. Okay, so reality is structured accordingly. The means which we apply to know something also colors the knowledge of that object. So uh, there is a tendency to go beyond. We call it aparoksha anubhuti. Aparoksha anubhuti, pratyaksha, paroksha and aparoksha. So there is no mediation between the knower and the knowable of some epistemology or so. So these things will change. This even West has evolved a lot since Renaissance and other things, other phases. So whatever we see, and one important thing is that when we say scientific approach, that only means that whatever the West has developed, we are trying to adjust our realities, our understanding of the things. The use of word scripture for these texts, these are called knowledge texts, sir. So maybe that is not that much advisable, and we still need to stick to the word like shastra, or let us say yeah. So scripture, as you know, it comes from a tradition which gave more prestige to the written form, visible forms, and so scripture like that. So these things are, even in the West, these are evolving, and we have the clue in our tradition that it is possible to know even without these mediations, those elements which mediates between the knower and the knowable. So that is, thank you, sir. Just to add to what sir has said, one thing is there are multiple meanings that we can take out of one shlok. So a scientist will see science in it, a poet will probably see poetry in it, a mathematician might see infinity being described in it, and things like that. So I think that it shouldn't be just scientists who should start collaborating, but every people from every branch should get exposed to this shastras, so that everybody will start studying it, looking at it in a different way, and probably find out meanings which are not there in the modern science or the modern ways of thinking or the modern social sciences, but we find out something new and create something new as in which already has a foundation in our shastras. So I think one of the recommendations could be that we should be learning these shastras not just for Sanskrit, because even if these books are Sanskrit books, they are basically uh, if all science has been written in English, we don't say it is an English book, we say it is a book of physics, it is a book of biology, it's a book of poetry. Similarly, these shastras, our books, should not be called as Sanskrit texts, but they should be called as books of knowledge, as you said, sir. So, and it should be taught and read by people from all branches. It's very good recommendation. There are Chaturdash Vidya Sthanas, 14 knowledge disciplines. Language is common, Sanskrit, of course, but that doesn't mean that knowing only the language you are expert in that discipline also. You can speak very good English, but you are not expert in any particular discipline in which that book is written. That is important. So Chaturdash Vidya Sthanani, as you know. Kashmir was the center of all these 14 knowledge disciplines at a time. Agamas came from Kashmir. Yes. We have forgotten this Kashmir. Seed is there. Again, it's going to come back. Whole of Bharat. Agama practice. This is the Sharda Desh. From Kashmir only. Yes. This is the Sharda Desh, Kashmir, named after Rishi Kashyap. We have forgotten this is Kashmir, unfortunately. I want to make a point that the collaboration that our scientist friend suggested, it should be
between all the different disciplines, as madam pointed out. It should be between Sanskrit text and social sciences also. Because, for example, some of us come from social science field. We study the modern or what I can clearly say, contemporary economic practices. But these contemporary economic practices have relevance, huge relevance to the ancient texts that are there. We don't relate it. So if Sanskrit scholars sit with social scientists from different disciplines, we can create better resource material, and we can see whether continuity is there. Largely this continuity is there. So to establish that um, um, discourse or collaboration between Sanskrit scholars from different fields and the contemporary social scientists who have studied the what we call modern textbooks or modern theories can be done. So this is very important in my opinion. And I have a no, that is for Professor Rajneesh. Okay. I wanted to rather suggest something. I'd like to seek your validation on the same. When we look at the Shastras and when we look at the modern science, if I can discriminate between the two in a very simple term, it is said Shraddhavan Labhate Gyadam. So in order to, as you very rightly said, that there is no distinction between the knower and the knowledge and the process of knowing. I mean, they all converge at oneness, right? So going from that perspective, if I see something which appears in front of me, I first of all need to believe in it, practice it, in order to be one with it. Whereas the evidence-based approach of Western science starts with suspicion. So Shraddhavan Labhate Jnanam does not hold true over there. So do we agree on this basic difference in the approaches of the two? So if there is a basic difference in the approaches of the two, then should we indulge in the exercise of trying to arrive at the convergence? That is my first question that I'd like to ask. And I'd like to share a small experience that I had. I was speaking to a few friends of mine that if you can't do much, at least do one thing. Start fasting on every Ekadashi. You can't do much, that's okay. And you avoid all the outside foods, and we have a special code of conduct that we follow in Gujarat during what you should eat and what you should not eat during Ekadashi. So he said, what benefit I'll receive? I said, well, you'll receive some benefits on your physical front, that is evident. I won't talk about that, but your mind will be cleansed. And he said, there is no evidence to prove it. I said, you believe in it, you try it for 6 months, give it a shot. And if you believe, if you experience that you've been benefited, would you still like to search for evidence? So what do we place at a higher pedestal, evidence or experience? So I believe that the Indic tradition is more about experience-based learning. Just a small example to put it forward, we roam a lot in the villages. So I was in the small village, and the weather forecast said that it's going to rain heavily in 2 days. And that farmer's entire farm was loaded with crops, which were not taken inside. So I said, your farm will be totally washed out, what will you do? He said, it won't rain. I said, the weather department says it will rain. He said, the fruit of my neem tree has not ripened yet, and if it is not ripened, it cannot rain. Now, this is not a logic that holds true for all the spaces. He said about his own neem tree, and it actually happened. It drizzled a little bit, it stopped raining for 20 days. He finished all his work on the farm, and then when the fruit ripened, it rained. I asked him, what is the logic behind it? I am also a science student, did my MTech thermal engineering from IIT Madras, so I tend to think in that introspective manner. So I asked him, what's the reason? He said, there's no reason. I've been looking at this neem tree for 45 years, and this is what is happening. So I believe the fundamental difference between the Western approach and the Bharatiya approach is we try to be one with nature, we observe nature the way it is, and based on that we try to learn what happens and how happens. Probably it is not very much ingrained into us to get into the detail of why is this happening. That question of why, probably a bit, we use a term called NDT, non-destructive testing. So trying to analyze why this happens at times becomes a little bit destructive to the nature and the reality. So my fundamental question was that understanding a bit of Shastra and a bit of science,
should we indulge into this exercise? And what's our take on the difference of approaches that I suggested? So I may be wrong, please enlighten us. Thank you very much. Shastras actually, Shastras, Shasanat iti Shastraha. We just have to follow it. As you said, it is a belief. And I always say, people who say, only if I see, I'm going to believe it. Have we seen our own face with our own eyes? So either through, like selfie or some photograph, or at least people are not running me without seeing something. So we believe the face is here. And we believe some food pipe is some kind of belief. If I'm going to say, only if I see, I'm going to believe it. It is not possible at all. So even our own life, even our own self, which is formless, we have not seen it, but we believe that it is there. And when it leaves us, likewise, it's, as you rightly said, we just have to accept, because our forefathers have followed it and they've been benefited by it. And Madam also, she said, like what all, the elders, they did, we are following it, the traditional methods. So it has got its, we just have to follow it, sir. If you're going to check and do, fine. That is also, actually, the greatest strength of Sanatana Dharma is, we don't compel anyone. If you want to come to the, Shaivagama, during the Utsava, God goes out for Diksha. He says, Adikshitanam, Dhurtanam, Pakshinam, Mrigadarukam. It says, Sarvesham Samhriti Pradam. So it goes out, the Lord goes out. Lord goes out. From the Mulasthana, the Utsavaha, Savayityuchyate Srishtihi. So the God goes out to reach even Adikshita, Dhurta, Pakshi, Mriga. So I would say it's autopilot. Whatever you follow, you are into it. We cannot go out of it. So we should be cool and we should just follow. And at the time, I would always say the time would be the best answer, Kala. It would say the experience is the best teacher. So by experience, we can just follow it, sir. Just 2 or 3 things I want to share. One, even in the Western scientific explorations, we have something called hypothesis. This hypothesis, I believe that it includes some verifiable belief. So that also has a concept of belief. This is what I feel. If I'm not correct, please rectify. This is one point. Second point, Shraddhavan Labhate Jnanam. There also, for long before, a very great soul has defined Shraddha as faith. The word faith is used as a definition of Shraddha contextually. But if you go to the literal meaning of Shraddha, it is not faith, it is sincerity. Okay. For example, in Rigveda, Shraddham Ugreshu Chakrire. Yatha Deva Asureshu Shraddham Ugreshu Chakrire. In the battle of Deva and Asura, Devas did Shraddha to Asuras to win them. Here it becomes sincerity only. So Shraddhavan Labhate Jnanam means one who is sincere can get Jnanam. This is what I understand. But anyhow, Shraddha has become faith even in Sanskrit dictionary nowadays, and long back it was defined in that way, and it was taken by Neo-Vedantins also as faith. So it continues. This is one thing. Even though faith, I feel that faith has its own place, both in the Western and Eastern, what we can call as philosophies and all. The same way, sincerity also has its own place. I don't see any contradiction. One more thing, internal. Many of the philosophical discoveries of India, they are internal. Therefore, through equipments, we may not find all those things. For example, you may be aware of that scientist, a very famous scientist, Sam Harris. He says 2 statements he gives. One, no external proof is available for the consciousness. Nothing. There can be some, what to say, science, S-I-G-N-S, science, through which we can find somebody is alive and all.
But for existence of consciousness, there is no external proof can establish it, that I exist. This is one thing. Another thing he says, anything can be illusion in the world except my existence. This is what we say, he says. Why I am telling this? See, to understand this me or the facets of me, the consciousness, the equipments which we have in laboratory may not be adequate. So we need to miles to go before we sleep. That's okay. Just once. Actually, evidence and experience you talked about. Experience itself is the evidence. Sometimes, you know, चैतन्य जिसको हम कहते हैं ना, चैतन्य को जानने का और क्या साधन है चैतन्य के अतिरिक्त? तो साधन और साध्य एक हो जाते हैं उस लेवल पर जा करके, है ना? तो इसलिए कहते हैं कि वो एक्सपीरियंशियल जो चीज़ें हैं वो अपने आप में, आप किसी कहते हैं इसमें पोइटिक्स में, संस्कृत पोइटिक्स में एक सिद्धांत है रस सिद्धांत जिसको कहते हैं भरत मुनि का। तो कहते हैं कि इसका लोकेशन और इसका एग्जिस्टेंस का क्या एविडेंस है? कहते हैं कि जो सहृदय है, जो उसको एक्सपीरियंस करता है, वही उसका प्रमाण है। वैसे ही ब्रह्म का है, ब्रह्मानुभूति जिस योगी को होती है वही योगी उसका प्रमाण है। सबको नहीं होती इसका मतलब कि वो नहीं है, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि योगियों को होती है, सहृदय को उसका अनुभव होता है काव्य का, रस का, तो इसलिए वो प्रमाण है। इस दृष्टि से हम चर्चा करते हैं। धन्यवाद। Just to humbly add to the point of discussion between the two sciences, there are three ways to acquire knowledge. The first and the best is Shabda Praman, second is Anuman, and third one is Pratyaksha Praman. The present science, I am also a science student, so the present science deals with the Pratyaksha Praman, and that's why they wish to prove it and see it. Like for example, 2 hydrogen plus 1 oxygen is equal to H2O. Now this has been proven, so then only this will stand true. But this is the last way of learning. But the best one is the Shabda Praman. The analogy of Shabda Praman can be given. A child goes to her mother and asks, "Who is my father?" And then mother says, "He is your father." So for all of us, our mother has introduced us to our father. If the child asks to prove it, now in present science, the DNA and other things can be proven. But here the point is, Vedas are the mother, and when we put faith on mother, that is Vedas, then the process of metaphysical knowledge, of self-realization comes, which he nicely said it, that this is to be experienced, this is to be realized. And realizations will only come when we put faith, put it into practice, and with that integrity, realize it. So out of these three phases, the Shabda Praman stands the best. And to understand Vedas through the meaning of Shabda Praman, we need to surrender to a guru, and the guru will let us know to the Vedas. Now science does ask, as Sir rightly says, and we need to prove it. In my experience of last 30 years, 23, 24 years working with rural India, I have seen that this highly profound and very high knowledge of Vedas is been put into practice in such a simple day-to-day life. And most of it, it's put so simple that we will miss it. So unless and until we understand the practice and how it is linked to the Vedic lifestyle, like for example, doing Tulsi Puja, watering Tulsi every day. And it shows Yani Kani Japa Pani Brahma Hatya Vikani Cha Tani Tani Pranakshanti Pradakshina Pade Pade. So the highest put into simple thing. In the same way, all these Vedic principles are put in a so simple way, and the present situation why it leads to chaos is because most of the society is not able to answer the youngsters why it has to be done. For example, I too was like that.
my grandmother used to say, do this. I used to say her, I will not do unless and until you tell me, why should I do it? So it was when I came in connection with ISKCON, with the Vedic, with the Bhagavatam and Bhagavad Gita, then I started realizing how scientific everything in our day-to-day cultural lifestyle is. Thank you very much. With this, we come to the end of this session. I thank all our speaker. Excellent discourse on Shastric Foundation of Ecological Consciousness. Now we'll be going for tea break. As we are running out of time, we have to now reschedule few things. Instead of 30 minutes break of tea, we'll be going for 15 minutes only. Sorry for that. And next session, every speaker will get, instead of 18 minutes, 13 minutes they will get. And next session will have 15 minutes for our discussion, open discussion. Sorry for all this, but I think you understand and cooperate with us. One more thing, for all experts, we have tea arrangement here from this gate. And for all faculty members, we have tea arrangement from that gate. Thank you very much.
Namaste. Welcome to the second session of the Civil 20 Live Conference on Acharanam Indic Wisdom for Sustainable Lifestyle. The theme of the session is Lok Parampara, Health and Ecology. Before we begin with this session, let us go through the schedule for this session. First, our three speakers would be talking on their subject, and second would be the open discussion round. So, we are well aware that the rich classical and regional literature of India is the repository of ancient wisdom. In fact, folk traditions, customs, stories, and poems have played a pivotal role in imparting moral, social, and practical education to a vast majority of Indians. This session will discuss how folk wisdom has been the guiding factor for aligning lifestyle practices with ecology. For instance, folk wisdom indicates that one should not live in a village that has no temple. The Charyapada of the Shaivagam canon prescribes a specific lifestyle that enables the upliftment of individual and society. Therefore, this session will explore some of the temple practices with the principles behind them that have deep impact on physical, emotional, and mental health of the population while also protecting biodiversity. This session will also document the symbiotic relationship between ecology-based lifestyle practices and Ayurveda. This is especially important because Ayurveda points out that the balance of the inner environment can be maintained only by establishing harmony with the external environment, since human beings are made up of the same elements that make up nature. Furthermore, this session will highlight the importance of traditional water conservation techniques and their use in farming and irrigation. With the above background in mind, this session will address the following key questions. What are the interconnections between ecology, health, and lifestyle? How does folk wisdom inspire us to live in harmony with nature? And third, what is the role of traditional Indian sciences and knowledge systems in shaping our outlook and worldview, especially with regard to the environment? The key speakers for this session are Dr. Deepa Doraiswamy, Dr. Falgun Patel, and Shri Lakshman Singh ji. May I please invite Ritul Basu to introduce our speakers, and can we have our speakers on the stage, please? Thank you. Thank you so much. Thanks to all our expert speakers on the dais. Starting with the second session, our first speaker for the second session is Dr. Deepa Doraiswamy. Namaste, ma'am. Dr. Deepa Doraiswamy holds degrees in engineering and management from University of Pune and IIM Calcutta. Her desire to understand the agamas and make them more accessible for a modern audience led to an interdisciplinary PhD on temple management in the agamas at the Department of Sanskrit, University of Madras, that is now published as a book by the Indic Academy. She has taught an introductory course on Shaiva Siddhant at the Department of Shaiva Siddhant, University of Madras. She hopes to continue exploring these ancient systems that seems to be at the core of Sanatan Dharma in practice. Now I invite ma'am to please share her insights. Thank you. Om
सदाशिवसमारम्भां श्रीकण्ठाचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्देऽहं शिवं साम्बं दक्षिणामूर्तिमव्ययं यत्वन्दनेन मन्दो अपि विन्देद् गुरुसमानतां या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः உலகெல்லாம் உணர்ந்து ஓதற்கு அறியவன் நிலவுலாவிய நீர்மலிவேணியன் அலகில் ஜோதியன் அம்பலத்தாடுவான் மலர் சிலம்படி வாழ்த்தி வணங்குவாம் திருச்சிற்றம்பலம். Namastabhaye. Good afternoon, everybody. So, very excited to be here and so inspired by the scholars and our acharyas. And also the premise of this whole, gathering, it truly is very heartening to see the shraddha, as somebody said, that is immanent in, the whole exercise, because many of us, I'm sure, have attended various, programs of this sort, but what really is coming through within the introductory session as well as just the first session is the amount of, the intent, the intentionality and the truly the shraddha behind the whole thing. So I'm just going to quickly read out my paper so I don't go ahead of time, but I'm happy to take questions later. So what is Lok Parampara? Lok Parampara is the means by which the teachings of the Shastra have been kept alive in practice and propagated generation after generation. This knowledge is actually encoded in lifestyle. It's designed like a fractal system into the pattern of life, so the frailties of any single human being cannot destroy it. And the core of this knowledge derives from the temple. The temple is physically, culturally, socially at the heart of the community. It also has other aspects, political, economic, etc., which we won't go into today. So what is a temple? It is a place not just for congregation, but where the highest truth is harnessed, invoked, and invited to reside. It is a place with a living divine presence. It's a nuclear core. All the worship in the temple is intended to preserve and to keep this presence live and to continue the presence there, the sannidhya of the temple, so that all the worlds may benefit. And this is called Parartha Puja, which the Acharyas are entrusted to perform, which they have been doing for thousands of years. So we have the tradition alive with us today in spite of so many other challenges. So the texts that tell us how to go about doing this are the Shaivagamas, Shaktagamas, Sauragamas, etc. Today we're going to focus on the Shaivagamas. So, like Acharyaji said, they are similar to the Vedas, they're anadi, they're believed to be revelatory in nature, not of human origin, revealed by Lord Shiva, etc. Now, because it is difficult, so there's this Shiva Nishvasitam Veda, Vagrupascha Shivagama. The Vedas are the breath and Shaivagamas are the Vak. Now, why do we need another? Already breath is there, why we need Vak? Because only some people can understand the esoteric, teaching of the Veda. If you say Parabrahman, Upanishadic, only a few people can understand, but you give them a personal Godhead. So then they came up with, okay, visualize this Parabrahman as Parashiva, Paravasudeva, Parashakti, and so on. And that tradition is all over. So they are all Vaidika Sampradaya. Nothing is disjoint from the Veda. They are rooted in the Veda, but they are expressed in the folk tradition. Like we said, we don't have classic, folk, etc. It's all Lok Parampara. It's a tradition of the people. Okay, so how to do this? How do we go? How does the Pashu, the Atma, go from, leave the attachment of the world, which is the Pasha, the bonds, and reach the Pati? So the Agama give us 4 ways: Charya, Kriya, Yoga, and Jnana. The topic of your conference, Acharanam. Charya is to walk the path. So that is Charya, that's lifestyle. Kriya is a ritual, Yoga is internal ritual, and Jnana, of course, is realization. Okay. Now, all kinds of health, right? The topic is health. This can be physical, mental, emotional, social. Let's delve directly into how the temple affects this. So, a temple is always identified by the Murti, Sthala, and Tirtha. Okay, you say which temple? You don't just give the name of the Lord. Say this particular Sthala, you have Sthala Purana and so on, right? Sthala Mahatmya, a lot of texts like that. So therefore, the Sthala or the place is already encoded into the structure of the temple. The entire space is the space of the temple. The Agamas, so when the Raja said, okay, I want to make a new settlement, the temple was built at the center and the town came up around it, which is why the Agamas have civil planning,
urban design, town planning, where to keep what. Why should the agamas otherwise have? They should just have Shiva Puja, no? Because they followed it, because that was the text people used. So there is evidence that the Chola kingdom spread. The force of urbanization was the temple movement. So you'll see large cities, temple at the center, Madurai, Tiruchendur, whatever. Like, you take Sri Ranga, the city, temple, city. Otherwise, you can't have like, a big city and then, okay, now let us bulldoze some, which is what we do now, bulldoze everything in the center of the city and then build something there. This building will come up, that building will come up. They were very organic, right? So not just physically, but all the souls of the people who lived in that particular area was tied to the temple. The temple is for Parartha Puja, for universal benefit, but also especially when the Utsava Kriya was performed. Like Shivacharya was saying, when the Lord came out, he gave Sambhavi Diksha to everybody. And when the Utsava flag is hoisted, the tradition says every soul in that area is tied to the Dhwajapata, is hoisted on the flag. Now it is tied, and all the Utsava Kriya is transforming all those souls. So it's like, fast track. You're in the flight, it's all fast tracked. Which is why even today people believe that in the Utsava, if your village has Utsava, has just started, either you leave before the Utsava starts, or if you're there, you can leave only after the Utsava finishes, because your soul is tied there. When the flag is hoisted, your soul is tied. You can't leave, right? Veneration of trees, water bodies, animals. So temples beautifully teach us about biodivinity. In the ritual called Mrit Sangrahana, they collect the soil. They say Earth Mother. They actually make a mandala, draw the Mother Earth, and then beautiful puja happens, and they take little bit of soil from her garbha, and then the cut they have made, they fill it with milk and water, and then it's healing water. They have invoked all the sacred rivers in it, and they put all that. They put turmeric, because it's a cut, no, it has to heal. And then they close it all, and then they chant the Bhusukta. So today people are talking about the universal declaration of Mother Earth as a human being, as a person, giving person rights to nature. The world is talking about it today. We have actually been following it in practice. And from the Sindhu Saraswati civilization, we have had the Saptamatrika seal, the deities coming out of the tree, and we have had Pashupati seal, what is called the proto Shiva seal, where Shiva is sitting, all the animals are around him. Our very language is like that. There are vahanas, temple vahanas. So many flowers are used. So many dravyas are used in worship. All kinds. It's called Shannavati Dravya. 96 different kinds of offerings used in the Homa. Do we know what they signify? The temples preserved all that, right? And the Sthala Vriksha is actually, the Agama says Vriksha Puja, and for normal Vriksha, and also Vrikshas that have Shambhu Sanidhyam. They believe that trees are not only divine by themselves, they could hold the substrate. So if the Kumbhabhishekam has not happened for so many years, for whatever reason, they say the Lord will leave the Garbhagriha and go to the Shikhara, and or from there he can go to the Sthala Vriksha, or from there he can go to the Tirtha. So they were all vessels to carry divinity, to keep it for us. Next I come to Tirtha and Tataka. That was so important. Chidambaram temple was built because the Raja went and had a dip in that holy pond, and his skin disease was cured. And then they said, okay, now build a temple around it. So many benefits that people talk about in the tradition, and also the Tirtha is so important for the rituals of the temple as well. Okay, and we have Aranya Kshetras, we have Bilvaranya Kshetra, Darbharanya Kshetra, and so on. Kadamba Vanavasini, in Madurai, Ambal is called Kadamba Vanavasini because, she lives in the forest. Srinagar, the Sri Pura is actually, she's in the midst of that, Aranya. She is also in the Aranya of the, the mantras, which the Acharyas teach. So it's like really beautiful. It's esoteric, it's philosophical, it's poetic, all at once, right? The temple Nandavana, there were people who were settled in the Nandavana to take care. There were so many different species of fragrant flowers. And do you know, today we are researching about the impact of fragrance on mental health, on mental wellness. We have aromatherapy. People are charging thousands of rupees just to go and breathe oxygen. It's ozonated something. It's some jasmine is supposed to do something to you, and attar is supposed to do something. That's what we are doing every day, because we went and we had the connection with that. The dhupa is purifying the air.
right? So really, and you know, like some of these things are really amazing. In the water they use, the Padya, Achamana, Arghya water, so many ingredients are specified: ela, shira, etc. Ela is cardamom, and even in our cuisine we use cardamom. Every function, festival use cardamom. Cardamom stimulates happiness, it stimulates oxytocin. So like quick, you know, what mental health fix do we need? It was continuously we were taking care of everybody. It was one for all for one, and everything was integrated, right? And apart from that, there were so many other things, like, you know, they planned for social health in the way they organized the town, the productivity and soil health, because, you know, mantra purva, they, you know, dug the soil. The first bhukarshana was done by the acharya with mantra, and then the farmer. So everybody worked together. It was, this is your job, this is my job, I'm helping you, we're all helping each other. The symbiotic relationship. It wasn't that, you know, you are somebody and I don't access what you do. You know, people did it together. There was vastu puja, bhu pariksha, so much science, how to evaluate the soil, how to test if the soil can be used for building Leaning Tower of Pisa. That's our favorite example, versus our famous Tanjavur, you know, temple for 1,000 years. We have temples for like more than 1,500 years as well. How did they test? How did they test the soil, those engineers? It's all in the agamas. So then personal health and healing. Everybody depended on the temple for, you know, I want this archana for my this ritual, for I want to have a baby, I want to heal myself. So many other, you know, personal, requests. And healing happened. Knowledge propagation, cultural propagation, a feeling of happiness, a feeling of being connected. Every day you go to the temple, do the pradakshina, talk with people, connect with people, some music, dance, pravachana. It was a holistic lifestyle, and that is what we missed. During COVID, we all realized the truth of Vasudhaiva Kutumbakam. One person sneezes in China, entire world is shut for years together, right? So truly Vasudhaiva Kutumbakam. But it cannot be quick fix. Today I can't pop 500 vitamin pills and suddenly get immunity. Every day go to the temple. Every day build your immunity. Every day do small things consistently. So that is, you know, actual this thing. So our recommendations, I know my time is going to be up, but I'm just going to take a minute. Our recommendations are, like many of you said, number one, interdisciplinary study. Research into all these ingredients. Reinstate every temple, figure out what is the Sthala Vriksha, what is the Sthala Tirtha in Chennai. This is going to ring now. In Chennai, we had a drought, okay, or flood or whatever. It's either this or that, extreme. Yeah, I'll wait. Okay, thank you very much. Sorry, sir. Half a minute more. So in Chennai, right, these are flood of thing, and somebody did a research. They said, where are the temple tanks? There are 50 temples. 50 temples were supposed. Okay, I also have an alarm. Sorry. Okay, 50 temples have 50 temple tanks, but no, we have 1 or 2, 3, 4 temple tanks. Where are the rest? They're all, you know, buildings, shops, apartment complexes. So we need those, temple tanks. Temple Nandavanas have to be restored. Temple lands, please take them back. Figure out how to administer it. Too much dialogue has been going on. It's time for action now. Do something with those temple lands that will benefit the people and society. Bring up all those, flowers and vegetation and the vrikshas and, the sacred groves. Let it be beautiful sacred groves in the middle of urban. Let them be urban forests. We'll not mind. We'll be very happy. Don't use polluted ingredients today in the name of vibhuti and kumkumam and all kinds of, commercial thing is happening. Please restart the actual original way, because don't put like sticker kolam. I know I have a sticker bindi, but, use real turmeric. Don't use color. Music, dance, bring all the tradition. Let the temple again be the center of society. It always was. Now, somebody has told us that temple is just ritual. I'm very spiritual, but I'm not very religious, I don't go to temple and all, but, I'm very spiritual. I'm connecting to the energy. Please, it's much faster. Please go do 2 pradakshinas. You'll get much connected much faster to the energy. And 2 things I would request. Please give either your, intangible cultural heritage of the world or, memories of the world status to the Sthala Parivara. The people of the temple, please protect them. Give them a status where they cannot be. We are protecting buildings. Nothing wrong about it. So there is a monument of India, whatever. They are the monuments of our heritage. Because if we lose them,
if they go off to engineering and medicine, there are 1,000 people to do engineering and medicine. We don't have acharyas. We don't have people to replace them. Please protect them. And all the panchacharyas, the dancers, the musicians, where are they? Where are the people who do the, there are electric drums in temples. Where are the people? They're going and playing in weddings. Not like that is not important, but they dedicate their lives to this. They have different vadya for different deities, different ragas. How will we know? I read it in the text, but if I hear it, will I recognize this raga, that raga? Anyway, I don't know. But even if the expert comes and sees, they won't know. Okay, number 2, please do interdisciplinary research. This is a treasure trove. Engineers, doctors, lawyers, all of you please study the agamas. It has so much for everybody. And when you do, please give credit to the acharyas. Learn from the acharyas. Please don't be like Western scholars who publish books after books. They learn from the acharyas and then say, some native informer told me all this and then I am the big expert on all this. They have learned from the acharyas. Please give back to the parampara. That's all I have to say. Thank you so much for the opportunity. Vande Mataram, Jai Hind. Thank you so much, ma'am. Moving on to our next speaker for today's session, Dr. Falgun Patel ji. Dr. Falgun Patel is an MD in Ayurveda. He is the Deputy Director, Training and Research at Ayush Government of Gujarat. He is also an Panchakarma expert, and he's also the Honorary Consultant Ayurveda to Honorable Governor of Gujarat. So, sir, please. नमस्कार. सर्वम अन्य परित्यज्य शरीरम अनुपालयेत यन्नासे नियतम नासो यस्मिन तिष्ठति तिष्ठति. आयुर्वेद का आचार्य का ये मंत्र है, श्लोक है. सब कुछ छोड़ के शरीर की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि शरीर नहीं है तो कुछ भी नहीं रहेगा. यश भी नहीं रहेगा, कीर्ति भी नहीं रहेगी, परिवार भी नहीं रहेगा, धन वगैरह कुछ रहने वाला नहीं. तो इस बात को याद करते हुए जो आज का विषय है उस पर मेरा वक्तव्य देने वाला हूँ. एक्चुअली ये वक्तव्य डॉक्टर हितेश भाई जानी जी देने वाले थे. वो ये जो एक लक्ष्यप्रद प्रोजेक्ट है उसके चीफ कोऑर्डिनेटर है और एक्स प्रिंसिपल आयुर्वेद कॉलेज जामनगर के वो प्रिंसिपल थे. पर अचानक एक गॉटेक करके एक कार्यक्रम का एग्जीबिशन का बड़ा कार्यक्रम राजकोट में है, उसमें वो चीफ ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में थे, तो वहाँ उनको रुकना पड़ा, तो उनकी जगह में मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ. तो ये जो प्रोजेक्ट है लक्ष्यपद करके प्रोजेक्ट की बात है. जो आगे बात है कि भारतीय परंपरा लोक परंपरा है, उसके साथ हेल्थ को कैसे जोड़ा जाए, तो उसका एक प्रैक्टिकल एक काम हो रहा है अभी लखपत में, कच्छ में. तो उसके प्रैक्टिकल जो एस्पेक्ट है उसके आधार पे कैसे लोक परंपरा को हेल्थ को लेकर वहाँ जो चल रहा है उसके बारे में मैं आपको कुछ बताऊंगा. भारतीय स्वस्थ जीवन शैली जो लोक आयुष की पुनर्स्थापना हेतु की एक पहल है, उसके बारे में पूरा प्रोग्राम है. और ये कार्यक्रम चल रहा है कच्छ के सीमावर्ती प्रदेश में जो पाकिस्तान बॉर्डर के बिल्कुल पास में है. तो वहाँ पे ये पूरा पास में ही पाकिस्तान है और वहाँ का जो लखपत है, तो पहले वहाँ उस शहर का नाम राव लाखा करके एक व्यक्ति था जिन्होंने 13वीं शताब्दी के मध्य में सिंध पर यहाँ से शासन किया था. उसके नाम पर राव लाखा, उसके नाम पर ये लखपत तालुका का नाम है. तो वहाँ पे ये पूरा प्रोजेक्ट है. यहाँ से पूरे सब जगह पे वो ट्रेडिंग पोर्ट था वहाँ पे जहाँ से सब कुछ आगे और देशों में भेजा जाता था. उसके विषय में ये पूरा बॉर्डर का विस्तार है, वहाँ पे ये प्रोजेक्ट पूरा चल रहा है. बॉर्डर के बिल्कुल पास है, पास में पाकिस्तान है. वहाँ की टोटल पॉपुलेशन जो है ये सीमावर्ती बिल्कुल प्रदेश है. पर वहाँ क्या चल रहा है, तो नेत्र सुरक्षा एक मेन चीज है कि आयुर्वेद के अलग अलग विषय है, उसमें वहाँ की जो जनरेशन पब्लिक है उनको आंखों की तकलीफ सबसे ज्यादा है. सर्वे भद्राणि पश्यन्तु वेद का मंत्र है. तो आंख को के जो प्रॉब्लम है, खास करके स्कूली बच्चे, उनके लिए रिफ्रैक्टिव एरर काफी है. तो वहाँ पे 1000 बच्चों की जांच करके उनको, और ब्रॉड जो है 45 ईयर्स से ऊपर के, उनकी भी जांच करना 1000 जितने व्यक्तियों की, और उनके कैटरेक्ट के ऑपरेशन करना, ऐसा एक लक्ष्य रखा गया है इस प्रोजेक्ट में.
और एक गांव ऐसा बनाना है जहाँ पे काफ़ी सभी को आँख की अभी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि पास में ही समंदर है, उसकी वजह से उसके एटमॉस्फेयर की वजह से आँख पे उसकी इफेक्ट होती है। तो वहाँ एक गांव को पूरा आँख उसकी स्वस्थ हो सभी लोगों की, ऐसा नेत्र दीपक ग्राम बनाने का एक लक्ष्य इसमें रखा गया है। और साथ में उससे गांव की जो महिलाएं हैं, तो ट्रेडिशनल हम लोग जो काजल बनाते थे, सुरमा बनाते थे, उनको बनाने का एक उनको सिखाना और उससे उत्पादन करना और उसके द्वारा पैसे कमाना, ऐसा भी इस प्रोजेक्ट में एक आयाम है उसका। जो आयुर्वेद में कहा है कि जीवंती करके एक वनस्पति है जो आंखों के लिए सबसे अच्छी है, डोड़ी बोलते हैं हम गुजरात में, और वो आंखों के लिए सबसे अच्छी, यदि उसका सेवन किया जाए तो आंख की तकलीफ नहीं होती है, तो वो वहाँ पे उगाना और ऐसे वृक्ष जो आंख के लिए अच्छा है, त्रिफला वगैरह है, वहाँ प्रोडक्शन करना और उसका प्रयोग करना। तो ऐसा पूरा ये प्रोजेक्ट है। साथ में किशोरी सुरक्षा, नेत्र सुरक्षा के साथ किशोरियों को जो तकलीफ होती, कली से कुसुम तक, यानी हाई स्कूल की जो लड़कियां है उसमें खास करके हीमोग्लोबिन कम है काफ़ी, वहाँ पे हम प्रोजेक्ट के अंतर्गत चेक किया गया तो मोस्ट ऑफ सभी लड़कियों का हीमोग्लोबिन 7.5 से 8.5 के बीच है, काफ़ी कमजोरी है, उसके कारण वीकनेस रहती है, काफ़ी प्रॉब्लम होते हैं। तो उसको आयुर्वेद से, और आयुर्वेद की जो महिला वैद्य है वो वहाँ रेगुलर जाते हैं, वो चेक करते हैं और उसके द्वारा उनकी हेल्थ को मेंटेन करना, जो आयुर्वेद के डाइट है, रागी है वगैरह, उनको खिलाना वगैरह, जिससे हीमोग्लोबिन बढ़ सके, ऐसे जो प्रयोग है तो वो देना, आंवला है वगैरह का प्रयोग करना, तो ऐसे उनका हीमोग्लोबिन बढ़े और किशोरी की जो समस्याएं होती है उसे दूर हो, ऐसा वहाँ पे ये काम होने वाला है। ऐसे शिशु सुरक्षा, जो बच्चे हैं बालो ही बलम राष्ट्रस्य, जो बच्चे वही स्वस्थ होंगे तो ही आगे राष्ट्र स्वस्थ होगा, इस विषय के साथ बच्चों का परीक्षण करना। और उसमें आयुर्वेद का एक सुवर्ण प्राशन करके प्रकल्प है। आप लोग जानते होंगे कि जब बच्चा जन्म लेता है तो जात कर्म संस्कार होता है, उसको हम गढ़थूथी बोलते हैं कि गढ़थूथी देते, हम कुछ उसको मध वगैरह चटाते हैं। पर पहले परंपरा में क्या था कि सोने का साथ आयुर्वेद की ब्राह्मी वगैरह औषध को घिस के उसको चटाया जाता था मधु के साथ, जिसको आयुर्वेद में सुवर्ण प्राशन नाम दिया गया है। तो उससे के कारण जन्म से ही बच्चे की इम्यूनिटी इतनी रहती थी कि वो आजीवन छोटे बड़े ऐसे इन्फेक्शन से बच जाता था। तो ये सुवर्ण प्राशन वहाँ के बच्चों में कराना, 10 साल से छोटे जो भी बच्चे, तो ऐसा प्रोजेक्ट वहाँ पे हमने आयोजित किया। 1000 बच्चों का नियमित सुवर्ण प्राशन हो, लखपत तालुका के ऐसे 10 गांव में ये प्रोजेक्ट चल रहा है। टोटल 1000 बच्चों का ये नियमित उसका सुवर्ण प्राशन दिया जाएगा। साथ में कुपोषण की भी वहाँ जो तकलीफ है उसमें आयुर्वेद के हिसाब से, ट्रेडिशनल जो डाइट है उसके हिसाब से उनका कुपोषण दूर किया जाए, ऐसा भी एक प्रयोग वहाँ चल रहा है। सगर्भा सुरक्षा, गर्भ संस्कार की भी बात है कि गर्भ जब माता के शरीर में तब से ही उसको संस्कार दिया जाए, तभी से उसको अच्छी आहार विहार का सेवन करवाया जाए, मानसिक भाव अच्छे हो। तो उसके लिए भी हमारा गर्भ संस्कार आयुर्वेद के जो एक्सपर्ट है वो वहाँ जाकर वो सगर्भा महिलाओं का काउंसलिंग करते हैं, उनको आहार का पूरा प्लान देते हैं, क्या उनको ध्यान रखना है, विहार वगैरह वो बताते हैं। तो ऐसा पूरा 1000 सगर्भा महिलाओं का परीक्षण इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत किया जाने वाला है। और 100 जो गर्भिणी है, गर्भधान की गर्भिणी महिलाएं हैं, उन पे पूरा आयुर्वेद के प्रोजेक्ट के हिसाब से 1 साल तक उनको गर्भ संस्कार का कार्यक्रम दिया जाएगा और उसके डेटा का कलेक्शन किया जाएगा। ऐसे ही दंत सुरक्षा है, दंत दाढ़्यकरम परम सेव्यम, कि दांतों की सुरक्षा के लिए इतने डेंटिस्ट हो चुके हैं, पर आयुर्वेद में लिखा है आंखें त्रिफला दांते लूण, पेट न भरिए चारे खूण। गुजरात की कहावत है, आंख में त्रिफला, आंखों को अच्छा रखना है तो त्रिफला का सेवन करना है, दांत को अच्छा करना है तो लवण यानी नमक का प्रयोग करना है। तो यदि रात को कोई भी रात को नमक सिर्फ घिस के सो जाता है तो भी उसके दांत अच्छे रहते हैं। ये ट्रेडिशनल एक परंपरा है, पर भूल गए। तो वहाँ पे ऐसी चीज़ों को लेकर दंत की रक्षा करना कि हाँ वहाँ कोई डेंटिस्ट नहीं है, ऐसा इलाका है, तो परंपरा से जो अपनी चीज़ें सरल है, सुप्राप्य है, उससे उनका स्वास्थ्य ठीक रहे, तो ऐसा एक वहाँ पे ऐसी बातों को बताना। और साथ में आयुर्वेद का एक डेंटिस्ट्री का एक पूरा काम चलता था, जालंधर बंद से वो दांत निकालते थे, ऐसी परंपरा है। जालंधर बंद योग की एक बंद की प्रक्रिया है। तो हमारे जो दांत के ऐसे एक्सपर्ट आयुर्वेद के, वो सिर्फ सिर हिला के, यहाँ पे एनेस्थेसिया की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप ही वो भाग लोकल एनेस्थेसिया हो जाएगा और तुरंत दांत को खींच लेंगे, कोई भी इंजेक्शन दिए बगैर। तो ये आज भी ट्रेडिशनल से चल रहा है। तो हमारे ऐसे एक्सपर्ट वहाँ जाते और जिनको दांत निकालना है वहाँ सिर्फ जालंधर बंद प्रक्रिया से, कोई भी इंजेक्शन के बगैर वो निकाल देते। तो ऐसे अपनी जो ट्रेडिशन है उसको वहाँ पे फिर से जागृत करके उनको स्वस्थ रखना, ऐसा काम हो रहा है। दातुन की बात है, जो दातुन
करंज वगैरह, नींब है, बकुल है, आयुर्वेद में लिखे, उनका वहाँ प्रयोग कराना, उनसे उनके दांतों की रक्षा करना, ऐसा पूरा एक प्रोजेक्ट इसके साथ दंत रक्षा का भी है। साथ में गौवंश सुरक्षा, गाय को भी जुड़ा है। हम जानते हैं कि गौ विज्ञान गावो सर्व सुखप्रदम, ऐसा माना जाता है कि गाय में सभी सुख देने की शक्ति गाय में है। तो गौ विज्ञान, पंचगव्य, इन सब को जोड़कर उनका प्रचार प्रसार वहाँ करना। वहाँ गाय है, गाय की वो लोग जो रबारी परिवार वगैरह है वो गाय रखते हैं, तो उसमें से ही उनका स्वास्थ्य ठीक हो, गाय का दूध, गाय का घी, और उसके आधार पर पूरा गौमूत्र अर्क बना के उसका भी उत्पादन करना और उसको बेचना, जिससे उनको आर्थिक लाभ भी हो। तो ऐसा पूरा इस प्रोजेक्ट में एक ये प्रकल्प भी रहेगा गौवंश सुरक्षा का। तो ऐसा काम अभी वहाँ चल रहा है। ऐसे ही जल सुरक्षा की बात है, जल की काफी अंतरिक्ष जल की आयुर्वेद में बात आती है कि जो सीधा आकाश से जो जल आता है उसको संग्रहित किया जाए तो वो सबसे अच्छा इम्यूनिटी के लिए, वो सबसे शरीर को ठीक रखने के लिए जरूरी है, और पानी की जरूरत नहीं। तो ऐसे अंतरिक्ष जल का इकट्ठा करके उसी का प्रयोग किया जाए, तो ऐसा भी आयोजन वहां पे किया गया है। ऐसे ही वन उपवन सुरक्षा, वहाँ पे आयुर्वेद के औषधों का प्रचार प्रसार करना, उसको वहाँ पे संवर्धित करना, पारंपरिक वनस्पति को वहाँ ज़्यादा मात्रा में उगाना और उसका फिर बेचना, ऐसा एक प्रयोग वहाँ पे इसके आधार पर भी है। ऐसे ही पुरातन जो भव्य इतिहास है, सांस्कृतिक परंपरा है, उसका अभ्यास करना, पारंपरिक कला कौशल्य का संवर्धन करना, लोक कलाकार वहाँ जो है उसका सम्मान करना, हेरिटेज टूर हो वो ऐसे कच्छ के विस्तार में, लखपत के विस्तार में, ऐसा आयोजन करना, यानी सबको जोड़ देना। प्रजातंतु महाव्यवच्छेद सी ऐसा मंत्र है, यानी जो परंपरा से जो हमारे पास जो है उसको न छोड़ा जाए, उसको संभाला जाए, ये उद्देश्य से वहाँ की ट्रेडिशन को, वहाँ की परंपराओं को जीवंत करना और वहाँ पे हेरिटेज भी डेवलप करना, ये भी इसके अंतर्गत कार्य आयोजित किया गया है। तो लक्ष्य पथ, ये ध्येय एवं उद्देश्य, उसका भारतीय जीवन शैली को वैज्ञानिकता और प्रासंगिकता के आधार पर स्थापित करना, ये उसका मेन लक्ष्य है। आरोग्य भारती सीमा जन कल्याण समिति के द्वारा, और 5 साल तक ये पूरी योजना चलने वाली है। अभी 2 साल जितने हो चुके हैं, काफी काम वहाँ आगे बढ़ा है, और विजयादशमी 2025 तक ये पूरा प्रोजेक्ट चलेगा। यानी प्रैक्टिकल जो लोक परंपरा है उसको और हेल्थ को जोड़ के ये प्रैक्टिकल काम 2025 तक पूरा होगा, उसका डेटा भी फिर प्रसिद्ध किया जाएगा। आगे ये भी आयोजन, उसमें लक्ष्यांक रखे गए कि कोई भी गांव हो संपूर्ण एनीमिया मुक्त हो। काफी एनीमिया के पेशेंट है, पांडु के पेशेंट है, तो ऐसा एक गांव, जो 10 गांव पसंद किए उसमें से एक गांव को एनीमिया मुक्त करना, एक गांव को ऐसा पसंद करना जो डायबिटीज फ्री हो पूरा, कि कोई भी डायबिटिक पेशेंट उसमें ना हो, एक गांव को हार्ट डिसीज फ्री करना, कोई भी हार्ट के पेशेंट ना हो, एक गांव को माल न्यूट्रिशन से मुक्त करना, कोई भी कुपोषित न हो, टैबेको फ्री गांव एक करना, एक जीरो प्लास्टिक करना, कोई भी प्लास्टिक की चीज वहां ना हो, एक गौ माता युक्त करना, यानी पूरी परंपरा गाय के आधार पर होनी चाहिए, गाय के आधारित पूरी होगी। ऐसा एक गांव में हर घर में तुलसी होना, हर घर में तुलसी होगी और उसका प्रयोग होगा, और एक गांव ऐसा होगा जिसमें योग का प्रयोग होगा, हर घर में सूर्य नमस्कार होंगे, योग होंगे। तो ऐसे 10 गांव भी आगे जाकर पसंद करके और हर एक गांव को ऐसा बनाना, ये भी उसका एक लक्ष्य है। लखपत में ये पूरा काम चल रहा है, और ये अलग अलग जो उसका उद्घाटन हुआ उसमें जो डॉक्टर अशोक वासने जी उसके मेन जनरल मैनेजर थे, वो आए थे। ये सब अलग अलग आरोग्य मित्र, ऐसे वहाँ गांव के उस गांव के 25 बच्चों को, लड़कों को इकट्ठा करके उनको हम ट्रेनिंग देते हैं आरोग्य मित्र की, जिनके द्वारा उनको ये सब सिखाया जाता है कि नेत्र की रक्षा कैसे करनी, दांत की रक्षा कैसे करनी। तो वो जाकर फिर अपने गांव का हेल्थ बनाए रखे। कोई बाहर से डॉक्टर की जरूरत नहीं है, सर्जन की जरूरत नहीं है, डेंटिस्ट की जरूरत नहीं, वो गांव ही अपने आप में एक स्वस्थ गांव बने। तो ऐसा बड़े विजन के साथ अभी हर गांव में ऐसे 25 बच्चों को पसंद करके वो ट्रेनिंग दी जाती है, उनको आरोग्य मित्र की ट्रेनिंग बोलते हैं। किशोरियों को भी ऐसे लेकर 25 किशोरियों को लेकर उनको ट्रेनिंग देते हैं, जो महिलाओं का ध्यान रखेगी, शिशु का ध्यान रखेगी, और उनको ये बातें हम सिखाएंगे। तो ये भी अभी ट्रेनिंग 2-3 हो चुकी है, आगे हम 5 साल में पूरा कंप्लीट करेंगे सभी गाँवों में। तो ये वहाँ के जो मालधारी है उनको ट्रेनिंग देना वगैरह, तो ये पूरा प्रोजेक्ट ऐसे चल रहा है। उनके साथ, बच्चों के साथ बैठ के चर्चा करना, उनको सिखाना। हमारे वैद्य वहाँ जाते हैं, ये सुवर्ण प्राशन हमारे डॉक्टर हितेश भाई जानी है, वो बच्चों को कर रहे हैं, जो सुवर्ण प्राशन की बात हुई। तो ऐसे मैंने जालंधर बंद की बात की, वो जालंधर बंद इस तरीके से कोई भी इंस्ट्रूमेंट के बगैर, एनेस्थेसिया के बगैर दांत निकालते हैं 2 मिनट।
कामधेनु कथा यानी गाय के आधार पे कथा कहकर उनको स्वस्थ गाय की बात बताना। ऐसे ही ये ट्रेडिशनल हीलर है जो 20 वनस्पति से पूरे वहाँ पे महिलाओं को स्वस्थ करती, मुफ्त चिकित्सा करते। तो ऐसे महिलाओं को प्रमोट करना, इनकी चिकित्सा को जीवंत रखना, ट्रेडिशन को, तो ये भी हम कर रहे हैं वहाँ पे। तो पूरा ये प्रोग्राम साइंटिफिक भी चल रहा है, अलग अलग संस्थाओं के साथ जोड़ के उसका रिसर्च भी कर रहे हैं। गाय, ग्राम और गौरी है भारत की जीवन दोरी, तो वुमेन एम्पावरमेंट थ्रू गौ विज्ञान, ऐसा पूरा एक लक्ष्य उसका रखा गया है। तो ऐसे पूरा ये प्रोजेक्ट वहाँ चल रहा है और 2025 तक ये काम होने वाला है। तो जो आगे बात हुई कि पूरे जो परंपरा है उसको जीवंत प्रैक्टिकल कैसे करा जाए, तो ये पूरा एक प्रयोग हमारा चल रहा है। तो धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब हमारे अगले वक्ता की ओर हम पढ़ते हैं। श्री लक्ष्मण सिंह जी, नमस्ते। राजस्थान जयपुर जिले के लापोड़िया गांव के निवासी हैं एवं वर्षों से जल संरक्षण और शिक्षा के लिए कार्य कर रहे हैं। उन्हें सामाजिक कार्य के लिए पद्मश्री से सम्मानित करने की भी घोषणा की गई है। पर्यावरण के लिए छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है सर, और आप वहाँ बैठ के भी अपना उद्बोधन दे सकते हैं जी। जैसा आपको सर, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे यहाँ पे। मंच पर विराजे हुए सभी महानुभावों को नमस्ते। मेरे भाई, मेरे बहनें, सबको नमस्ते। लोक परंपरा, प्रकृति, जीवनचर्या, धारणीय आचरणम, क्या गजब के विषय। मैं इन्हीं पे काम करता हूँ। वर्षों पहले लापोड़िया का गांव का पानी खत्म हो गया था, हमने तालाब ठीक करने की बात की। मैं अनुपम मिश्रा जी मेरे गुरु हैं, उनके साथ पूरा हिंदुस्तान घूमा, एक दो जगह विदेश भी गया। जब वो आज भी खरे तालाब लिखी गई थी पुस्तक, तब हम जैसलमेर, चेरापूंजी सभी जगह गए हुए थे और उस वक्त वो लिख रहे थे कि क्या किताब में आना चाहिए था। मैंने एक बात कही थी उनको, अब उस वक्त तालाब की बात करना जरा बहुत कठिन था, आज तालाब की बात करना सरल हो गया है। पानी की बात करना कोई सुनने लग गए हैं, पहले पानी की बात नहीं सुनते थे, तालाब तो बिल्कुल नहीं सुनते थे, ऐसे मानते थे कि ये तो बहुत बैकवर्ड आदमी है जो तालाब की बात करता है। टंकी बनाओ, नल चलें, नलों से पानी लाओ, नदियों से पानी लाओ, वो उस वक्त वो बात थी जो किताब जब वो लिख रहे थे। तो मैंने उनको कहा कि इनको कौन सुनेगा, कि एक समय आएगा। ये अनुपम मिश्रा जी ने कहा, और उनकी पत्नी जो हमारी गुरु माँ हैं,
हम अनुपम जी को गुरु मानते हैं। उन्होंने कहा एक समय आएगा इस किताब को हर आदमी पढ़ेगा, और वो आज पढ़ा जाता है। यहाँ भी बात कही गई थी, आज भी खरे हैं तालाब, अनुपम मिश्र जी। हम जब जैसलमेर भी थे और चरापूंजी में भी गए थे, लेकिन वहां भी घास जो है 6 फीट होता है और हाथी होते हैं और तालाब बड़े बड़े भरे हुए हैं। लेकिन बाड़मेर जैसलमेर में 150 mm बारिश होती है, वहां भी सेवण घास 6 फीट ही होता है और वहां ऊंट घूमते हैं, हाथी से थोड़ा ही छोटा है वो। वहां हाथी हर पल हर घंटे पानी पीता है और वहां ऊंट 7 दिन में पानी पीता है। प्रकृति का कमाल है। आदमी लिखा है ना, प्रकृति क्या गजब है। इन सबको जोड़ करके, मैं उनकी कहानी नहीं कह रहा, खूब घूमे हैं, पूरा ये दिमाग प्रभु ने ऐसा बनाया है कि आप जितनी उम्र के हैं और 6-7 साल से याद तक रहता है तो वो तो बातें बहुत हो जाएगी। पर मैं ये कहता हूं कि हमें इन सब चीज़ों को देख करके हमारा जो स्थानीय एरिया है उसको कैसे डेवलप करें, वो हमने किया। वहां पर एक चौका सिस्टम डेवलप किया कि बरसात हर जगह आती है, सड़क पे बरसात गिरती है, छतों पे गिरती है, गलियों में गिरती है और सब जगह बरसात गिरती है। उसको कैसे रोका जाए? गोचर में चौका सिस्टम, तो छतों का पानी टांकों में, टाका बन जाता है ना, छत का पानी इकट्ठा होता है जो 6 महीने तक चलता है। उसके बाद गलियों का पानी जो गांव में बरसता है उसका तालाब बना दिया, इस रास्ते से पानी निकलता है और आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर जाने के बाद तालाब बन गया। तो गांव का जो पानी है जिसमें मल मूत्र होता है वो जमीन के लिए काम आया। खेतों में जो पानी इकट्ठा होता है वहाँ एक शब्द नाडा मानी छोटे तालाब, और खेतों में छोटे तालाब पहले भी थे, हमने भी बनाए। और सार्वजनिक तालाब, अन्न सागर, देव सागर, फूल सागर जैसे तालाब बने। अन्न सागर से सिंचाई करें, देव सागर, फूल सागर से पानी रखें, ताकि उसमें ग्राउंड वाटर गांव का बना रहें। कभी हम सरकार से पानी नहीं मांगे, हम सरकार को दे सकते हैं। हम लेने वाले ना बने, हम देने वाले बने। ऐसा हमारा आचरण रहा, धारणाएं रही। हम सब अकेले नहीं, मिलके किया ये काम। तो कभी काम हमने किया तो सब लोग मिलके किया। ये चालू है प्रेजेंटेशन? अच्छा हो रहा है, ठीक है। अब थोड़ा मुझे इशारा कर दो। हम पर्यावरण का काम करते हुए इनकम भी तो बढ़ानी है। हम बर्बाद होकर के पर्यावरण का काम कैसे करें? तो आपका ये गुजरात है, हम इसको प्रणाम करते हैं, क्योंकि यहाँ से हम 80 सांड खरीदे थे 25 बरस 23 बरस पहले, और एक एक गांव को देव सम्मान मान करके वहाँ रखे गए थे। और आज 100 गांव में गजब की गायें हैं, गिर नस्ल, और दूध इकट्ठा होकर के और शहरों की ओर जाता है। शुद्ध दूध वहाँ लोग पीते हैं। ये हमारा धर्म है, जिसको कहते हैं ना कि धारणीय धर्म है हमारा, कि हम उनको शुद्ध भोजन दें। किसी भी तरह हम गलत चीजें किसी को ना खिलाएं। मेरा बेटा यहाँ प्रताप सिंह बैठे हुए हैं, वो ऐसा काम करते हैं। शुद्ध भोजन सरों को और या किसी को भी दें, वो शुद्ध भोजन दें। और गायों की रक्षा के लिए जो दूध डेयरी वाले लेते हैं फैट पे नहीं, वो गाय के ऊपर दूध लें, गाय का दूध होना चाहिए। और जो डेयरी वाले दूध लेते हैं उससे महंगा लें, ताकि गायें बची रहें। उसका घी बनाएं, शुद्ध घी गाय का, शुद्ध गाय का दूध वो जयपुर में जाता है। और हम ही नहीं, हर गांव में लोग लेके जाते हैं और लोग माला माल है। वहाँ पर खेतों में जो पानी है उससे इतना ग्राउंड वाटर ऊपर आ गया है कि बारिश के दिनों में हर कुएं में आप हाथ से पानी पी सकते हैं। दूसरा, वहाँ ऐसी खेती होती है जो क्लाइमेट को देखते हुए, यानी कि वातावरण को देखते हुए, बरसात को देखते हुए ऐसे खेती की जाती है। जैसे खरीफ में मूंग,
और उसके बाद चना और सरसों और भी जो फसलें होती है सब होती है वहाँ पर। मूंगफली भी होती है, आपके ज्वार, बाजरा, फसलें, खेती सब होती है, बहुत बढ़िया। पर ज़्यादा पानी पिलाने की ज़रूरत नहीं है। गेहूँ को भी 3-4 पानी पिलाना पड़ता है क्योंकि ग्राउंड वाटर ऊपर है और वातावरण में नमी है। क्योंकि हर जगह तालाब, हर जगह नाडी, चौका सिस्टम, तो वातावरण में नमी है। जब वातावरण में नमी नहीं हो तो पानी ज़्यादा फसलों को, पौधों को दिया जाता है। तो बहुत अच्छी जगह बनी है वो। और वो एक गांव नहीं, अनेक गांव बने हैं, बहुत सारे गांव बने हैं कि वो पानी बचाएं, लोग बचाएं और गायों को बचाएं, गोचर बचाएं। तो हमारी ज़िंदगी जो है वो पशु पक्षियों के साथ बीते। अब सवाल उठ जाता है कि ये हमारा सारा काम जो है पशु, दूध, खेती, ये हमारे अर्थ की व्यवस्था है, उससे धन मिलता है। लेकिन वहाँ जो जीव रहते हैं, गांव की परिधि, घर वाले नहीं, ज़मीन की परिधि, जैसे एक गांव में 6000 बीघा ज़मीन है, तो उस गांव वालों की जिम्मेदारी है कि उस परिधि, गांव की जो परिधि है, सीमाएं हैं, उसमें जो भी जीव है वो हमारे हैं और हम उनके हैं। तो उनको ना मारा जाए, ना सताया जाए और उनके लिए आवास की व्यवस्था, सुरक्षा की व्यवस्था और प्यार की व्यवस्था होनी चाहिए। हम सभी जीवों को प्यार से देखें। हम गांव के पास एक वन बनाया कि गांव में जो पक्षी घूमते हैं वो पक्षी वहाँ बैठ सकें, घोंसले बना सकें और उसमें पालतू नहीं जाएं। जैसे मनुष्य, गाय, बकरी, भैंस नहीं जाएं, वो रिजर्व है। ऐसा ही गोचर में एक रिजर्व है बनाए जो देवबनी नाम से जाना जाते हैं। और ऐसे ही खेतों में भी बनाया गया कि खेतों में भी पक्षी रहें और उसमें पालतू नहीं जाएं। हम किसी भी प्रकार का शिकार नहीं हो, सब जीवों को प्यार से रखें। तो वहाँ मोर बहुत होने लगे हैं क्योंकि मोर नीचे बैठ के अंडे देते हैं। हमने उनके लिए कहीं जगह नहीं छोड़ी। हो गया? इसमें कौन सा दबेगा? एक मिनट बता दो तो हम दबाते रहेंगे कि वहाँ घंटी बजने वाली है। अच्छा ठीक है, आया नहीं ना भाई? आ गया है, उधर आएगा, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे पशु पक्षी अंडे दे रहे हैं, कुछ काम हो रहा है, उसको पढ़ भी सकते हैं। हम बड़ा काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ पेड़ लग रहे हैं, पत्ते गिर रहे हैं, मिट्टी बन रही है, गाय चर रही है, गोबर हो रहा है, मिट्टी बन रही है। हम भी खा रहे हैं, पी रहे हैं, जवान से बुढ़े हो रहे हैं और धरती में मिलते जा रहे हैं। इसमें आखिर धरती से कोई बड़ा नहीं, नभ से कोई ऊंचा नहीं। ना हम कोई महान काम कर रहे हैं, ना कुछ, बस धरती में ही तो काम कर रहे हैं, वो धरती में ही जाना है, कोई बड़ा काम नहीं। गोचर, ये हमारे इलाके की गायें हैं। आपके पास तो इससे भी अच्छी है, लेकिन हमने भी ऐसी बना ली है। क्या हो गया सर? हाँ ठीक है। पहले हमारे गोचर ऐसे थे, अब हमने ठीक कर लिए हैं। वहाँ पहले कब्जे हो रहे थे, पानी से बह रहे थे, खनन हो रहा था, अब ठीक है। ये लोग तब गोचर नहीं थे, तालाब टूटे हुए थे, तब लोग पलायन करते थे। अहमदाबाद भी आपके आते थे, बहुत सारे मकान हमारे लोगों ने बनाए हैं। ये गोचर ठीक कर रहे हैं, ये चौका सिस्टम है, इसमें 9 इंच पानी आता है और फिर दूसरे, तीसरे, चौथे में और फिर छोटे तालाबों में जाते हैं और घास पेड़ बहुत गजब के आते हैं। इसमें गायें चरती है, गायें चर रही है और पानी भी भरा हुआ है। यही चौका सिस्टम है। वो जब बन रहा था, ये बन चुका है। ये ऐसा एक स्ट्रक्चर बनते हैं, ये एक स्ट्रक्चर को दिया है कि एक पीछे स्ट्रक्चर है, वो पानी इसमें आएगा, ये भरेगा, फिर आगे जाएगा, फिर आगे जाएगा, फिर छोटे तालाब, फिर बड़े तालाब, फिर नदी। ये 3 मॉडल हैं। ऊबड़ खाबड़ में बन सकता है और प्लेन में एक तरफ पानी जाए, नीचे पानी जाए, सारी व्यवस्थाएं, पर सब में 9 इंच पानी रहेगा। 9 इंच से ज़्यादा पानी होगा तो घास गल जाएगा, गोचर खराब होंगे। लेकिन 9 इंच में गोचर गजब के हरे भरे हो जाएंगे, पेड़ पौधे और घास अच्छा आएगा। दूध वहाँ खूब होता है, बकरियां भी खूब हैं वहाँ, हर प्रकार के 30 प्रकार के घास हर मौसम में होता है।
ये चीज़ें हैं कुछ, वो से रैंप बने हैं कि हमने कहा कि सब पक्षी बचें तो वो खाएं क्या, भोजन पानी सबको हर जगह मिलेगा। तो ये रैंप में पानी चला जाएगा बारिश का, और रैंप में कोई भी रात को जीव हैं वो पानी पी के निकल सकते हैं। गायों के लिए, वन्य जीवों के लिए, सब के लिए पानी, भोजन, आवास सब के लिए है। ये अन्न सागर है, देव सागर है और फूल सागर है। अन्न सागर में सिंचाई होती है इस पानी से, देव सागर फूल सागर भरे रहते हैं, वो ग्राउंड वाटर बढ़ाते हैं, उसमें कोई पानी नहीं निकालता। वो कुओं में जो पानी ऊपर है वो देव सागर और फूल सागर की वजह से है। वहाँ खेती जो होती है वो अन्न सागर से अच्छी होती है। ये गोचर में नाड़ियाँ हैं, 3 धाम नाड़ी, एक साथ 3 नाड़ियाँ हैं। जंगल होल है, ग्वाल बाल यहाँ बैठते हैं, पशु चराते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं और यहीं पढ़ते हैं। ये एक तालाब से दूसरी तालाब को पानी जाए, एक गांव से दूसरे गांव को पानी जाए। क्या घंटी बज गई होगी? हम बहुत जल्दी काम कर रहे हैं। ये रैंप है, एक बड़ा रैंप है, एक छोटा रैंप है। ये कृषि का तालाब के अंदर बना हुआ है। तालाब सूख जाता है तो ये भरा रहता है, इससे सिंचाई। जनसत्ता में ऐसा आया था कि सरकारी टैंकरों का मोहताज नहीं है लापोड़िया, वहाँ पानी बहुत है और हम लोग पानी पीते हैं। और कोई अकाल में किसी प्रकार का चारा अनाज बाहर से नहीं लेते हैं, हम वहाँ दे सकते हैं। ये सब खेत हैं और ऐसी खेती की जाती है जहाँ पे कोई आवाज़ नहीं और कुछ नहीं, पेस्टिसाइड नहीं छिड़कना, और खेती अच्छे से करें और हम प्रकृति के साथ जिएं। ये सब हर खेत का तालाब है। तो मैंने अभी बोला ना, हर खेत का तालाब, हर खेत का पानी कहाँ इकट्ठा हो और उससे सिंचाई हो सकती है, हम लोग करते हैं। ये एक नाला है हमारे, जो सारा पानी इसी में जाता है। ऊपर भी पानी रुका हुआ है गोचर में, तालाबों में, और नदी में पानी जाता है। तो छोटे छोटे एनीकट है जो ओवरफ्लो होकर के आगे जाता है। ये एक लापोड़िया मॉडल है, बहुत फेमस हुआ है, जिसमें ये चौका सिस्टम है। अन्न सागर है, देव सागर है, फूल सागर है। वो झोंपड़ियाँ सी दिखती है वो गाँव है। ये 2 कैनाल्स है और ये नदी है। ऐसे कुएं ऊपर तक भर जाते हैं। हाँ, ऐसी खेती होती है जिसमें तिल है और इसमें चना है, मूंग है, जो कोई सिंचाई करने की जरूरत नहीं, इसलिए ग्राउंड वाटर ऊपर रहता है। ये ऊपर से सैटेलाइट से लिया हुआ है कि हमारी नदी पूरी भरी है, हर खेत में कितने पानी है, क्या है, कितने पेड़ हैं, वो सब दिखता है। हमारा पर्यावरण, हम पर्यावरण के साथ काम करते हैं। खेती भी उसी ढंग से करो, चुआ करो भी, किसी जीव को भी मत मारो, यही सब लिखा है। ये सब वहाँ के चित्र हैं। हम सभी पक्षियों के साथ रहेंगे, जिएंगे, इनके साथ रहेंगे। ये वन जो मैंने अभी बताया कि वन है, ये वन गांव के पास है, गोचर में है, खेतों के पास है, जो वहाँ के वन्य जीव रह सकते हैं बिगर परेशानी। कुछ बोल रहे हैं कोई? अच्छा ठीक है। हाँ, वहाँ पे जो अच्छे काम करते हैं उनको अवार्ड भी दिया जाता है। ये अवार्ड दिया जा रहा है और उसमें बहुत सारे वहाँ के राजनेता वगैरह, ये राजेंद्र सिंह राठौड़ हैं बीजेपी के, और जब कांग्रेस के भरत सिंह जी थे पंचायती राज मंत्री, वो भी इसमें इस यात्रा में आते हैं, घूमते हैं, इस यात्रा को समझते हैं और आगे जाके कुछ सोचते हैं। एक बड़े कानूनों का उल्लू, वहाँ पे बहुत सारे पक्षी हैं, तो अखबारों में भी आया था। ये तालाब पूजन करने जा रहे हैं। एक धरती जतन यात्रा चलती है, वो हर गांव में इन तालाबों का, गोचर का, वन्य जीवों का, गाय का, सबका पूजन होता है, उस पर चर्चाएं होती है। धरती जतन यात्रा, संकल्प लिए जाते हैं। इस गांव में हम जब यात्रा आएगी अगले साल तो ये काम करके हम रखेंगे। ये सब पेड़ पूजन होता है, ये गोचर में बैठकें होती है और वो चर्चाएं होती है, गोचर के साथ हमारा कैसा व्यवहार हो। वो श्रमदान है। हम 5 दिन में तालाब तैयार कर देते हैं, कोई पेमेंट देने की जरूरत नहीं थी। फूल सागर बनाया था, उसमें बच्चे बूढ़े सब लोग हैं, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, चाहे कितना ही बड़ा अफसर हो वो भी मिट्टी उठाएं। दूसरे गांव के लोग आकर के देखते हैं, फिर काम करते हैं। कुछ विदेशी लोग आते हैं, वो भी आके देखते हैं और हम ये कहते हैं आपके यहाँ जाके करना। ये यात्रा है जो सारे गांव में यात्रा जाती है हर साल, और ये इसको 36 साल हो गए चलते हैं। और ये हर यात्रा में संकल्प लिए जाते हैं
कि हम अब की बार चूहों को घर बनाएंगे, चूहों को नहीं मारेंगे, जीवों को नहीं मारेंगे, ये सब लिखा जाता है और ये सब फॉलो होता है गांव में। ये विजन विशन है, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे संस्था का। राज्य सरकार में बंजर भूमि में कुछ सदस्य बना लेते हैं, जैसे अभी कुछ पुरस्कार देते हैं, पकड़ के वो दे देते हैं, भाई काम करते हैं जब मिलता ही है। संस्था के काम का पहचान देने वाले प्रमुख पुरस्कार मिलते रहते हैं, काम करते हैं जब। राजस्थान के लगभग कितने गांव में काम करते हैं, 300 और 3000 कुछ गांव में, लेकिन ये जो काम है ये 100 गांव में करीबन है जो लोग मिल के काम करते हैं और अपने इलाका को तैयार करते हैं। धन्यवाद साहब, आपने देखा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसी के साथ द्वितीय सत्र का समापन यहीं पे होता है। अब हम बढ़ते हैं ओपन डिस्कशन की ओर, जहां सभी एक्सपर्ट्स डिस्कशन के माध्यम से और तत्व बाहर निकाल के लाएंगे। तो इसके साथ में मैं वॉलंटियर्स से आग्रह करूंगी कि एक्सपर्ट्स तक माइक उपलब्ध कराएं। Many thanks, such a wonderful session. आप तीनों का काम सुन के बहुत मन भर आया। सर आपने अभी जो कविता में ही जो कहा कि क्या क्या चल रहा है, पत्ते पड़ रहे हैं, उनसे ही पौधे निकल रहे हैं और हम भी बूढ़े होते जा रहे हैं, हम सब तो धरती में ही मिलना है। इतना सुंदर ये तो काव्य है, मुझे तो लगता है कि ये सूक्त है। बहुत बढ़िया, धन्यवाद सर। हमको हकीकत में जाना चाहिए, हकीकत यही है। And okay, may I make one more statement? एक आपने वो बात की थी कि क्लासिकल और लोक परंपरा इसमें कोई फ़र्क नहीं है। रांची ढेरे सर का एक कमेंट है, ही हैज सेड कि वेद जो है वो तो पुराने समय के लोकगीत है। This is a question to Dr. Jani. Really great presentation, as are all the other speakers. World Health Organization, in its very recent publication, it says that, I'm not saying it verbatim, but the gist of the information is, Ayurvedic medicine has been known for 5,000 plus years. We all agree that it comes from the Vedic principles, has very profound knowledge base and so forth. However, what happened, beginning of the 19th century, investors started investing in chemical-based medicine. That led to Ayurvedic medicine remain behind. So behind, although the term medicine to our planet started from the Ayurvedic medicine, now it is considered to be an alternative medicine, or other names they give it to Ayurvedic medicine. Whereas the Western medicine, which we call it as allopathic medicine, is the main main medical modality. So just to give you the statistics, less than 1% of the global population, less than 1%, use Ayurvedic medicine, despite the fact that that was the first ever medical modality. So my question to you, sir,
what is it that you and all of us can do to really bring this tremendous wisdom, unparalleled benefits of Ayurvedic medicine to India and to the world? हेलो, जामनगर में WHO का भी एक सेंटर बना है, अभी उद्घाटन माननीय मोदी साहब ने किया था, ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, यानी WHO का पूरा ट्रेडिशनल मेडिसिन का रिसर्च सेंटर जामनगर में हमारी गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी उसके वहाँ अभी उसको बन चुका है, उसका काम आगे बढ़ा है थोड़ा। तो पूरे पारंपरिक चिकित्सा सब कुछ है, ट्रेडिशनल मेडिसिन है, पर उसको आज के समय में साइंटिफिक डेटा के साथ, एविडेंस के साथ रजू करना, ये भी एक गोल है, तो वो अभी चल रहा है। ऐसे ही आयुर्वेद में आयुष मिनिस्ट्री है, उसके द्वारा भी रिसर्च काउंसिल हमारी होती है, CCRS है, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदा एंड सिद्धा, तो वो रिसर्च करती है। योग के लिए भी हमारी रिसर्च काउंसिल है, तो वो भी योग और नेचुरोपैथी में भी काम होता है। तो ऐसा नहीं है कि आज रिसर्च नहीं हो रहा है, कुछ काम नहीं हो रहा है, एविडेंस बेस्ड सब हो रहा है। बात यह है कि 1% लोग यूज कर रहे हैं वर्ल्ड के आयुर्वेद को, पर वो ट्रेडिशनल जो उनकी परंपरा है वो देखेंगे तो काफ़ी % वो यूज़ कर रहे हैं। वो एलोपैथी सिस्टम का आज भी काफ़ी लोग घर में आयुर्वेद का यूज़ करते ही है। हम हल्दी का यूज़ घर में करते ही, हम काफ़ी चीज़ें, जैसे ही कोविड आया तो कोविड का पूरा जो गुजरात सरकार का कोऑर्डिनेशन का काम था मुझे सौंपा गया था, तो हमने प्रचार किया गोल्डन मिल्क का, आयुष मिनिस्ट्री ने से आया था, तो आज काफ़ी घरों में शाम को गोल्डन हल्दी वाला दूध पीना शुरू हो गया, हॉट वाटर। तो मुझे ये बताते हुए आनंद होता है कि गर्म पानी, तो आयुर्वेद में लिखा है कि ठंडे पानी नहीं पीना है, फ्रिज का पानी नहीं पीना है, गर्म पानी के गुण काफ़ी है, तो वो डाइजेशन भी बड़ा अच्छा करता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है, तो उसका प्रचार चला कोविड के समय में। तो मुझे पता है कि IAS जितने ऑफिसर्स थे वहाँ पे, जो हमारी सेक्रेटरीट थी, उसमें सब लोग गर्म पानी की बोतल ही लेके आते थे। वो लोग कोविड के समय में आज भी हर्बल टी पीते। हम लोग नीचे ये टी का प्रचलन चला है, कोविड के बाद उनके कैबिन में हर्बल टी के पैकेट ही मिलते हैं प्राय। तो ये सब आ रहा है। कोविड के बाद, कोविड के समय में भी आयुष ने, आयुर्वेद ने अपने आप को प्रूव किया और लोगों ने आयुर्वेद पे विश्वास रखा। 1200 बेड हॉस्पिटल यहाँ अहमदाबाद के पास है, वहाँ पे कोविड का सबसे बड़ा काम चला, कोविड के लिए 1200 बेड हॉस्पिटल बनी। उसका जो रिसर्च वहाँ साथ में, पहले पेशेंट जो आते थे कोविड में, वो काफ़ी जैसे ही आते थे 5-7 दिन में काफ़ी का डेथ हो जाता था, ICU में जाना चले जाते थे और डेथ रेशियो काफ़ी था। तो उनको डाइट में क्या देते थे, तो एलोपैथी के सब मेडिसिन तो चलती थी, साथ में डाइट में पंजाबी डाइट होता था। सुबह में उनको दही के साथ नाश्ता दिया जाता था, हैवी पंजाबी डाइट होगा, शाम को भी फिर दूध देंगे और भी कोल्ड ड्रिंक्स देंगे, सब ये सब चलता था। तो हमारी मीटिंग हुई हेल्थ डिपार्टमेंट से और हमने कहा कि ये तो पूरा गलत है, इससे ये बढ़ रहा है, आप हमें आपकी जो भी मेडिसिन देनी है वो दो एलोपैथी, साथ में आयुर्वेद का कुछ हमारा डाइट प्लान सिर्फ लो। उन्होंने कहा आयुर्वेद की मेडिसिन नहीं चलेगी, WHO का प्रोहिबिशन है, कोई भी और मेडिसिन नहीं, यही मेडिसिन चले। तो ठीक है, मेडिसिन मत दो, हमारा डाइट प्लान आप उसके साथ जोड़ दो। तो हमने उसमें सिर्फ मूंग की दाल देना शुरू कर दिया, मूंग देना शुरू किया, सुबह में हर्बल टी देना शुरू किया, रात को सोने के समय हल्दी वाला दूध देना शुरू किया और हमारा काढ़ा दिया। तो उसका पूरा डेटाबेस 36,000 पेशेंट का मेरे पास है। तो उसमें से सिर्फ 121 पेशेंट ही डेथ में गए। उसमें वो भी क्यों गए कि उनको किसी को हार्ट डिसीज था, किसी को किडनी की तकलीफ। उस समय का रेशियो ऐसा था कि जो हॉस्पिटल में जाते थे 50% से भी ज्यादा वो डेथ हो जाते थे, उतना रेशियो था। उसमें से सिर्फ इतने कम जिन्होंने आयुर्वेद अपनाया, जिन्होंने साथ में डाइट अपनाया, वो स्वस्थ होने लगे। फिर बाद में हमने मेडिसिन देना भी शुरू किया। तो ऐसा नहीं है, पर उसको आज के समय में अप्लाई करना हो रहा है, काफ़ी चिंता हो रही है पूरे वर्ल्ड लेवल पे। माननीय मोदी साहब भी प्रयत्न कर रहे हैं आयुष को, और ये मिलेट ईयर के रूप में आप जो मनाया जा रहा है। मिलेट क्या है, वो आयुर्वेद में लिखा है। आयुर्वेद में लिखा है कोई भी रोग होने की 2 कारण है। आज रोग कम खाने से बीमार नहीं हो रहे, ज्यादा खाने से बीमार हो रहे। तो होता क्या, मिलेट यानी हल्का है, पचने में, डाइजेशन में इजी है। तो प्रॉब्लम क्या है, भारी खाने का प्रॉब्लम है। दही खाते हैं, लस्सी लेते हैं, हम ड्राई फ्रूट खाते हैं, ये इसके वजह से बीमारी है। उसको हल्का फुल्का खाना है। तो मिलेट ईयर अभी मना रहे हैं, तो मिलेट से अच्छा हो रहा है, अपनी जो मिलेट्स है वो यूज हो रहे हैं। तो ऐसा अभी चल रहा है पूरे वर्ल्ड लेवल पे, वो तो मनाया जा रहा है मिलेट ईयर। और लोग अपने वो मिलेट का कॉन्सेप्ट आयुर्वेद का ही है, पूरा आयुर्वेद में लिखा है कि क्या खाना है, कौन से धान्य के कौन से गुण है। जौ को, जौ डायबिटीज की सबसे अच्छी औषधि आयुर्वेद बताए। यवस्तु प्रमेय में यव का प्रयोग करना है, यव यानी जौ, बार्ली जो है उसका खाना है तो डायबिटीज नहीं होगा, ऐसा आयुर्वेद में लिखा है। तो ये पूरे महेश धात्री निशा बताए,
आंवला और हल्दी, ये 2 औषध लोगे तो डायबिटीज कंट्रोल में आ जाएगा, आयुर्वेद में लिखा है, तो यूज नहीं करते, अभी वो हो रहा है। तो ऐसा पूरा है, और आगे भी काफी थोड़े समय में आपको दिखेगा कि आयुर्वेद को पूरा विश्व अपनाएगा। आयुर्वेद के आधार पर हर्बल खेती को भी प्रमोट हो रहा है, उसका भी एक पूरा योजना बनी हुई है। ये सब चल रहा है, पूरा सरकार में भी चल रहा है और भारत सरकार में से पूरा ये काम चल रहा है। Shall I add to it, sir? I am also a very pakka follower of Ayurveda, and then followed by homeopathy, and at last allopathy. So whenever I go and discuss with my Ayurvedic doctor, he clarified my fundamentals. He first said, Ayurveda is to do with the lifestyle. That's first thing. So the upset of lifestyle, you have to then follow the allopathy, and the lifestyle which we are presently following is based on the Western lifestyle. That's first, he says. And second is, Ayurveda does not recommend medicines after you go ill. Ayurveda is to increase the gap between first illness and the second illness. So the approach to Ayurveda is lifestyle based, and then the second is to remain healthy rather than not to get treated with Ayurveda. Please correct me if I am wrong. हेलो, आयुर्वेद का महर्षियों ने श्लोक बताया है, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य रोग प्रशमनम च। यानी कोई भी पेशेंट, कॉन्सेप्ट आयुर्वेद का ये रहेगा, जो हेल्दी है उसको हेल्दी रखना, ये पहला मेन पर्पस है, उसका मेन गोल है। फिर यदि कोई बीमार होता है तो उसकी चिकित्सा की जाएगी। होता क्या है कि आज भी हेल्थ का बजट जो है, मैं आयुष मिनिस्ट्री में गुजरात में हूँ, तो मुझे पता है कि 3% बजट आयुर्वेद, योग, यूनानी, होम्योपैथी के लिए, और 97% बजट एलोपैथी सिस्टम के लिए आज भी। तो ये भी कारण है कि प्रिवेंशन पे ध्यान ही नहीं देते। बजट कितना भी दो तो भी रोग कम नहीं हो रहे, एक के जाने के बाद दूसरा रोग, कैंसर के कितने ना पेशेंट आज देखने को मिलते हैं, तो वो कम होने वाला ही नहीं है। हमारा आज बजट 50% आप हेल्थ के रोग की जगह पे स्वास्थ्य के लिए दे दो, योग के लिए दे दो, अच्छा खान पान के लिए दे दो, आयुर्वेद के जो औषध है उसको फ्री में वितरण करने के लिए दो, तो अपने आप ही समाज हेल्दी हो जाएगा। पर ये कॉन्सेप्ट नहीं है, ये कारण है मेन। तो ये हेल्दी, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण, यही आयुर्वेद का पर्पस है। और जो पेशेंट हमारे पास आते हैं तो हम यही कहते हैं कि आपकी पहली चिकित्सा क्या है, ये भी आयुर्वेद ने बताया कि निदान परिवर्जन, यानी जिस कारण से पेशेंट को रोग होते हैं वो खान पान को छोड़ना, ये पहली चिकित्सा है। अभी वो बताएंगे तो पेशेंट चले जाते हैं, पर वास्तव में वो नहीं बताएंगे तो क्या होगा, वो पूरी जिंदगी डायबिटीज की दवाई खाता जाएगा, पूरी जिंदगी ब्लड प्रेशर की दवाई खाएगा, पूरी जिंदगी वो और बीमारियों के हाइपोथायरॉयडिज्म की दवाई खाएगा, थायराइड की दवाई खाएगा। तो ये तो कॉन्सेप्ट कहाँ हुआ, उसको ठीक तो होता ही नहीं है। पूरी जिंदगी कमाई चलती है एलोपैथी दवाई की, पूरी जिंदगी वो इंसुलिन लेता रहता है। तो पूरा सिस्टम एक पूरा ऐसा है कि उसमें आप समझ सकते हो कि पूरा डाइवर्ट हो चुका है। Sir, I just like to add a sorry. सही बात यही कारण है पूरा। Totally. I just like to add a small angle of the temples to this. Actually, you said, what can people do? I think people can start believing and start trusting what they know already, and start following. Doesn't take like rocket science. I don't need a scientific paper published by Harvard or whatever to know that, turmeric is good for me. And when you go to the temple, you see, like during COVID, again, everybody saw that Sheetala Devi, Mahamari, if you see what is offered, it's all turmeric, it's all neem. And then we said, that is what is actually antibiotic, that is what is curing, and people were consuming golden latte. Why is it offered to Mahamari? Because she cures diseases. What is a beautiful connection between that? And in Vaidyanatha Swami temple, we go and offer pepper and rock salt, in order to cure diseases. And you would know pepper and rock salt, and I have done it so many times during COVID, like just put 5 grains of peppercorns or rock salt and keep the juice in your throat, and you're not going to be affected by, or it's going to be prevented. So beautifully our temples illustrate, which is why they were part of the lifestyle. The tulsi jal that we have, the tulsi decoction that we have at home, that we can see at the temple. The Panchagavya research, people laugh today if you say consume Panchagavya. Temples, they say they place so much importance on consuming a little bit of Panchagavya as Shuddhi. It is such a beautiful science. There is so much gut research happening today. I'm sure y'all are aware that the cutting edge gut research says that gut is the mini brain, number one. Everything is related to gut, which is why Ayurveda, initially all cleansing happens.
first you cleanse the gut and then you this thing. And Panchagavya actually is one of the powerful gut reset, because now the Western scholars are researching why it is so, because the cow has 4 stomachs, and then the composition of the bacteria and the role of good bacteria in the gut. And then if you have, it's called fecal transplantation therapy, which is implanting the fecal matter of a biodiverse organism rich, that feces of a cow, which is what we said, you don't have to like do transplantation therapy, you just consume a little bit of Panchagavya, it's going to go and do so much good to your thing. So I think it's all there, we just have to trust ourselves more, have more self-confidence, and just keep following. All those excellent comments. Just a follow up. I have a few thoughts. Having been in medical research for 30 plus years, I can tell you why the Western medicine is used everywhere. It's a chemical based medicine. Okay, nobody wants to take chemicals inside the body, but we still do that. It's again based on evidence. It has taken close to a century for Western medicine to get to a level where they are now. What is that? They know the mechanism of action. They know the exact dose to be given based on the body weight. They know when to stop and when to start. There are lots of toxic side effects. All of us know that. And Western world, I should say the entire planet is waiting for these wonderful herbal medicines to be as effective, herbal medicines to have proper dosing, herbal medicines to back up with proper mechanism of action. That is not there. So I hope meetings such as this will make those points as a priority, so that the next century would be all about Ayurvedic medicine. सही बात है कि उन्होंने जो बताया कि प्रॉपर डोज, उसका पैकिंग भी ठीक होना चाहिए, तो ये भी चल रहा है अभी आयुष में, ऐसा नहीं है कि वो भी नहीं। होता क्या था कि आयुर्वेद के भी एक्सपर्ट उतने पहले नहीं थे, आयुर्वेद को भी अच्छी तरीके से पढ़ने वाले और जानने वाले लोग बीच के समय में कम हो गए, जिन्होंने परंपरा आयुर्वेद में डोज लिखा ही है, हमारे पास कोई भी औषधि हो कितनी मात्रा में देना उसका डोज निश्चित हमारे ऋषियों ने लिखा है कि ये 3 ग्राम में ही देना है, ये 125 mg ही देना है, ये 500 mg ही देना है, हर एक का डोज निश्चित है। बच्चों को कितना देना है, बूढ़ों को कितना देना है, कितनी मात्रा, वो सब लिखा हुआ है, पर उसको प्रॉपर फॉलो करने वाले अच्छे एक्सपर्ट होंगे तो अभी काफ़ी लोग MD कर रहे हैं, PhD कर रहे हैं आयुर्वेद में, और अच्छी शिक्षण व्यवस्था से वो बाहर आ रहे हैं, तो वो उनका सबका एक सिमिलर डोज होता है। पैकिंग के लिए भी हमारी एक पूरी ब्रांच होती है फार्मास्यूटिकल की, तो वो अच्छे पैकिंग, अभी जो भी नई कंपनियां हैं वो भी उसका हर्बल पैकिंग आप अच्छी टैबलेट फॉर्म में आ रहा है, काढ़े के भी पाउच आ रहे हैं अभी कि पानी में मिक्स करके आप ले सकते हो, तो ऐसा मोडालिटी भी अभी आज के समय के अनुरूप आयुर्वेद को लाने की कर रहे, पर मूल सिद्धांत बना रहे और साथ में आज के समय के अनुरूप की मांग पूरी की जाए, ये प्रयत्न भी हो रहा है अभी। Thank you very much to the dignitaries for the enriching talk and the discussion. I request all to please take seat along with the other dignitaries. Ladies and gentlemen, what a wonderful and fruitful day it was. We witnessed 2 power-packed sessions under G20 banner where 12 experts spoke on Indic wisdom. The discussions with speakers on and off the dais have given us new perspectives and has energized us with positivity. It has left us reflecting on ways to incorporate Indic wisdom in our lifestyle. I thank all dignitaries, guests, faculty and staff members for your presence and contribution. We will meet tomorrow at 8:45 a.m. to be a part of the second day of this national conference. Thank you very much. In the end, I also request our dignitaries to please join for a group photo at the entrance of the main building. Volunteers, please guide.